So morning viewers and welcome to the day 2 of Team Om Shakti Trophy 2021. The first match of the day will be played between, of Pool B in fact, played between KFC Kodikal versus NM Jeppo. A big match is now coming up and because of that I request to the both teams, skippers, captains to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಚಿಪಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the keepers of both the teams, NM cricketers as well as the KFC Kodikal, to report here immediately for the toss upstairs. I request the captains of NM Mangalore and KFC Kodikal to please report to the stage immediately for toss. KFC Kodikal ಹಾಗೂ NM ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು.
Welcome to UCG for the first match here played between KFC and NM Cricketers. It's going to be the crack of a match here at UCG Euro Cricket Grounds. The match will be of 6 over the side. 2 bowlers can bowl 2 overs each, and the rest of the bowlers can bowl 1 over each. As far as the playing conditions are concerned, for the first 2 overs only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle, not more than 5 fielders on the onside throughout the 6 overs, not more than 2 fielders behind the popping crease throughout the 6 overs. These are the playing conditions for this tournament organized by Team Om Shakti. "13 matches were played on Bondel grounds, and this being the 14th match of the tournament, to be precise. Friends Murshade have already made it to the finals of this tournament organized by Team Om Shakti. KFC cricketers winning the toss, opting to field first out there, waiting for the 2 umpires to make them move towards the middle. And shortly, the 2 openers of NM cricketers are going to follow suit. The winners of this pool are going to clash against Friends Murshade in the finals. That will be the ultimate match of the tournament. Still we are waiting for both umpires to make their way towards the middle. Roland Pinto and Suraj. Suraj, the former cricketer of Vijayalakshmi cricket for Vijayalakshmi, played for Vijayalakshmi cricketers. And one of the specialist wicket keepers. He was one of the specialist wicket keepers for Vijayalakshmi cricketers. And Roland Pinto, tons of experience as far as umpiring is concerned. What umpire he has been, 37 years of experience. He has started his umpire career at the age of 16 to be precise, 16 and a half. In 1984, way back in 1984, and since then he has never looked back. Cricket has been part of his life, and man of 3 Ds, determination, dedication and discipline. A teetotaler, hardly has any vices, and his behavior on and off the field has been impeccable. "37 years of umpiring is not a joke. He is in his early 50s. Tremendous determination as far as umpiring is concerned. Roland Pinto. Most of the cricketers were even born out here. Were out here playing this match. Weren't even born when he officiated the first match way back in 1984. So all is set for the first delivery of the day to be bowled. Shakthi is the bowler, and the 2 openers out there in the middle, Atif and Asif. Two openers, Asif and Jalal. Asif is at the striker's end and Jalal is at the non-striker's end. All is set for the very first delivery to be bowled, and both umpires are out there in the middle. And
You can see Suraj knocking the stumps at the far end in position before walking towards his position at square leg. And all is said. The very first ball to be bowled from the pavilion end. KFC cricketers as well as NM cricketers are the strong favourites. One of the favourites to win this trophy. Om Shakti Trophy 2021. Six over side match. Both umpires out there. Umpire Roland, after having a word with his colleague, making his way behind the stumps at the non-striker's end. All is set. Very first ball. Delivers. Try to play it, running it down to the termine region, was compulsorily beaten, and the wicketkeeper behind the stumps was able to collect that ball easily. Shakir from the pavilion end to bowl to Asif. Right arm over the wicket. Shakir bowls. Goes for the reverse sweep. Beautifully side. Oh, that treats the fielder out there at a short backward point and diving to his left. It wasn't so easy. And that was very good running between the wickets. Beautiful running with the wickets. And look at Asif. He was running, charging towards the striker's head with his ground-hitting strides. Superb running between the wickets. This is how you have to run when it comes to shorter version of the match. So reverse sweeping, it just passed the fielder out there at backward point region on the edge of 20-yard circle. He died, threw himself to his left hand side, but wasn't able to get to that ball. Outstretching both his hands. It's not so easy to dive on this ground where it is really rough. It's not an easy ground for anyone to dive. Dives it beautifully down to the long off region. 4 runs. Beautiful shot. Once the ball had gone just over the head of the fielder at mid-off, 4 runs were written on it. The score moves on to 6 for the loss of no wicket. Superb shot, picking the line and length to perfection and presenting the face of the bat towards the batsman when it was struck straight down the ground. Towards the bowler, beg your pardon. Again going for a drive, lucky. That was a beautiful delivery. And he has been cleaned up. He has been cleaned up. Six for the loss of 1 wicket. Beautifully bowled. And what a great comeback it was by Shakir. After he was hit for a 4, managed to bowl that delivery. The batsman picking the wrong line and paying the penalty. The first wicket down. Asif is back in the pavilion. 6 for the loss of 1 wicket. We got the breakthrough. KFC cricketers, NM cricketers, they are one of the favourites to win this trophy organised by Om Shakti. Mansoor is the new batsman making his way towards the wicket. And that delivery. And now Shakir with his tail up. For the first 2 overs, only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle. Then the very next delivery on the off stump. That was played down to the short coverage and the batsman cross was single. Good running between the wickets. The moment the ball was played, it was travelling at a very good pace. But the fielder had short extra coverage and had to move around to his right. Move around to his left hand side. He had to go round the ball to pick it with his right hand. And the batsman had ample time to cross over. Beautifully played, even though he was playing almost with his feet down the leg side. It's not so easy to play that inside out shot. The very first ball he had faced, again the left-hander out there, sweeping the ball and missing it. End of the over. First over has been bowled. 7 runs on the board for the loss of 1 wicket. NM cricketers who were asked to bat first are 7 for the loss of 1 wicket. 5 overs to go. Seven for the loss of 1 wicket. Second over to be bowled.
Chetan. Who's the bowler? The Mansoor, the right-hander. And Jalal, the left-hander. I don't know why Jalal is walking towards the pavilion. He's running, jogging towards the pavilion. Maybe... Batter, he changes. So Jalal is the one. He was running towards the pavilion. It was for change of bat, maybe. Yeah, it is for change of bat. It has been confirmed. So Mansoor leaning over his bat, settling into his stance, waits for Chetan from the Bharatagani end. Right arm over the wicket, delivers. Drives it straight on the ground, down to the bound. There's a fielder out there. Good piece of work. Good piece of interception by the fielder from mid-off region. It ran across to his right-hand side. Managed to stop that ball on the edge of the 20-yard circle. Exactly behind the umpire. At the non-striker's end. Moving across quickly to his right-hand side. Dropping his hand by his feet. Managed to field that ball quite comfortably. Restricting the batsman for a single. 8 for the loss of 1 wicket. The left-hander on strike. Jalal leaning over his bat. Settling into his stance. Waits for Chetan. Chetan bowling round the wicket, changing the guard, trying to angle the ball into the left-hander. Right arm over the wicket, down the wicket, down the leg side, far down the leg side. This is not good bowling. Far down the leg side. Wide signal by umpire, and he has to reload that delivery. 9 for the loss of 1 wicket. The very first match of the C pool. The winners of this pool are going to clash against Friends Murshid in the finals. That will be the ultimate match. The finals. Lofted shot just to the right down to the deep wide spin of region. They go for one, they come for the second. But ball, you could see that ball, it was in the air for quite some time. But the fielder at it, long off region, had to run across to his right and slightly forward diagonally. Wasn't able to get there and managed to field it off the bounce. 11 for the loss of 1 wicket. Jalal leaning to his bat, settling into his stance, waits for Chetan. Chetan round the wicket, delivers. Goes for the reverse sweep. There's a fielder setting over a single, chance of run out. The ball had hit the stumps. It would have been really curtains there for Jalal. He was running towards the danger end. That was the strike, non-striker's end. Mansoor was running towards the striker's end. I personally feel that Shakthi should have thrown the ball at the striker's end. 12 for the loss of 1 wicket. Chetan now bowling over the wicket to the right-hander. Mansoor. Mansoor bowls. Chetan bowls. Razat going for a drive. And a third umpire. It has been given to third umpire. You can see umpire making a rectangle box in the air. Gesturing to the third umpire to make the decision. That was a stumping. For a moment I thought that Mansoor was trying to play that ball. He lost his balance, and now the third umpire has to see, beg a pardon, whether he had dragged his back foot out of the crease, and this is what the third umpire is looking for, or whether he was able to drag his foot back behind the popping crease, and he's out. As far as third umpire is concerned, he's out. So lost his balance. He tried to play that ball which was outside the off stumper of the front foot. He dragged his back foot out of the crease but wasn't able to drag it back behind the popping crease before the wicketkeeper had disturbed the furniture, beg a pardon. 12 for the loss of 1 wicket. 2 wickets, beg a pardon. 12 for the loss of 2 wickets. Superb display of wicket keeping there by Hakim, the skipper of the side. It wasn't so easy. Waited for Mansoor to just lift his back foot. Once he lifted his back foot, immediately you could say that was really good presence of mind by the wicketkeeper to break the stumps. 12 for the loss of 2 wickets.
Atif, the new batsman. 12 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Just playing the second over. 6 over side match. Atif leaning over his bat, settling into his stance. Right arm over the wicket, going for the reverse sweep, and that was played effectively to go for one down to the deep third man region. And good piece of work by the field. It's not so easy. He had to run back. He had to run back and manage to field that ball once the ball had covered 3/4 away towards the deep third man boundary. Superb piece of fielding display by one of the fielders out there, fielding behind square on the offside for that reverse sweep by Atif. 13 for the loss of 2 wickets. Right arm round the wicket, delivers. From the mud at the gunning end, round the wicket he goes to the left-hander, trying to swing it to down the leg side. She goes, swinging his bat blindly. It goes down the leg side. End of the over. 13 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. 4 more overs to be bowled, and we have to wait and see what sort of target they're going to set to their opponents. A score of 40 plus is must. And them cricketers, as you know, they have a very good bowling lineup, formidable bowling lineup. So a score of 40 plus is always defendable if you have a very good bowling lineup, and if the bowlers are going to bowl to their field, backed up of very good fielding. That is more important. When it comes to shorter version of the match, you should have very good fielders out there, especially in the inner circle. All the fielders have to be on their toes. They can't afford to be back on their heels. 13 for the loss of 2 wickets. Third over to be bowled. Shakthi bowling his second over. 2 bowlers can bowl 2 overs, so Shakthi is bowling his second over. Atif is the batsman. Shakthi, who got the breakthrough for his side, reverse sweeping it to a delivery which was outside the leg stump. It's not so easy to reverse sweep the ball. The batsman had made up his mind to play the reverse sweep before the ball was delivered, and if it was somewhere around the outside the off stump, he would have had that room to play that ball to free his arms, but it's not so easy to play the reverse sweep when it is down the leg side or in line with the stumps. Batsman always gets cramped for room. 14 for the loss of 2 wickets. Third over is going on. Shakthi the ball, bowling round the wicket, trying to angle the ball into the left-hander. Right arm round the wicket, delivers, draws it, doesn't get hold of it properly. Ball ending up behind square on the offside. There's a fielder out there at a backward point or short third man region or gully region. And he now moves back quickly when the right hand is on strike. He moves down to deep square leg region. The field restrictions have been lifted here at UCG. And now you can have 5 fielders outside the 20-yard circle if they want to. Right arm over the wicket, delivers. Sweeps it behind square on the onside. Wicket keeper just past the wicket keeper, and the fielder behind the wicket keeper had to move across to his left, beg your pardon. And they managed to cross over for a single. The left hand on the strike. When the left hand is bowling, you can see the right-armed bowler. He bowls round the wicket to get that angle to right. They beautifully bowled. For a moment, it looked like it was a very good delivery outside the off stump, but towards a negative line. Wide signal by umpire. It was a negative line. 17 for the loss of 2 wickets. The batsman trying to swing his bat without moving his feet. He has to shuffle across, try to get very close to the ball and work it on the onside or offside, but it's not so easy to connect. Beautifully played. That was a reverse sweep. Effectively played down to the point boundary. The fielder from right in front of square runs it. The chance around on misunderstanding between the 2 fielders. Misunderstanding between the batsmen, resulting into a run out. Going for the second run. There was misunderstanding out there, and that's the reason why the 3rd wicket is down in the form of run out. 18 for the loss of 3 wickets. Total misunderstanding between the batsmen. Good piece of work by the fielder. He had to run across to his right towards the point region. Managed to field that ball and was so quick to release the ball. And both the batsmen out there were in 2 minds whether to go for the single or whether to go for the second run or not. But in the end, both the batsmen were stranded in the middle of the pitch.
18 for the loss of 3 wickets. Hardik is the batsman, making his way towards the middle. Third over. KFC cricketers are clashing against NM cricketers in this first encounter of the day. Shakthi the bowler. Good piece of fielding, resulting into a run out. Right arm out the wicket. Shakthi taking his own time, taking his own batsman. Look at the batsman, taking his own time, having a look around the field, surveying the field on the one side before settling into his stance. Beautifully bowled, getting right behind the line of the ball and pushing it. Lot of bottom end into that shot. That was a delivery bowled in line with the stumps, but batsman was able to take it out. Superb piece of bowling, but in the end the batsman was able to cross over for a single. He managed to get his bat and played it with that vertical bat of it. And that's the reason why. Lofted shot. The fielder trying to get under. It's not so easy. He was running almost across, diagonally forward to his right hand side. Wasn't able to get to that ball. He had to run back again to field that ball. It wasn't so easy. The ball easily eluding him. No, it wasn't an easy catch. He had to run almost 15 or 20 yards to his right hand side, but managed to, wasn't able to get. Ball was always dipping on him, and after the ball lands, it just sails over him, and he had to just turn back and just try to retrieve the ball. It wasn't so easy, and the batsmen were able to cross over for a couple of runs. 21 for the loss of 3 wickets. 3 overs have been bowled. 21 runs on the board for the loss of 3 wickets. Superb effort there by the fielder, but unfortunately it wasn't so easy for him. Running about 15 to 20 yards to his right, diagonally forward, and the ball just falling short of him. And once the ball had fallen short of him, it just went past him, and he had to just turn around and run back towards the boundary to field that ball, but managed to retrieve that ball not before the batsmen were able to cross over for a couple of runs. 21 for the loss of 3 wickets. 4th over was going on. The new bowler, Shahil, is the new bowler. Is bowling to Sadiq. The 4th over. The very first ball of the 4th over to be bowled. It's not so easy. Even a score of 40 is defendable when it comes to NM cricketers. They have a very good side when it comes to shorter version of the match. KFC cricketers are also the team known for shorter version of the matches. Their ability, when it comes to their ability, as far as the shorter version of the matches are concerned, they are really one of the few teams out there who have that ability to win this shorter version of the matches. 22 for the loss of 3 wickets. Atif the batsman. Sahil the bowler. Right arm out the wicket, delivers. Right arm out the wicket, delivers. Goes for it. No, it doesn't get hold of it. Ball just might have taken the bottom outside edge of the bat through the legs of the wicket keeper. There was a fielder behind the wicket keeper, and the batsman deciding it is a single. The fielder, Shakthi, was right behind the wicket keeper. So ball was played. Might have just hit the outside edge or inside edge of the bat, bottom edge of the bat. So we are not able to get the clear view of it. Again, lofted shot. It's a mistake. We have to wait and say, no, the catch has been taken. Catch has been taken. Superb piece of work there by fielder from long on region. It run across to his left and managed to take that catch and made it look easy. For a moment, when the ball had left the bat, I thought 6 runs were written on it. But I get the feeling that it was hit against the wind, and he might have got the elevation, but unfortunately wasn't able to get the distance, and just because of that he's heading towards the pavilion. 22 for the loss of 4 wickets in the 4th over. .22 for the loss of 4 wickets. What a match we are having here at UCG Ura Cricket Grounds. The tournament has been shifted from Bondel BFC, Bondel Cricket Grounds, to UCG Urva Cricket Grounds.
22 for the loss of 4 wickets. Sadik the batsman, right arm over the wicket. Sahil bowls. Sadik opens the face of the bat, dabs it beautifully. They go for one, then come back the second, good running between the wickets, superb running. It was only possible because of Sadik who pressed for the second run. Just dabbing it down to the cover point range, and the fielder from the deep cover had to run forward diagonally to his left. And before that, Sadik was able to turn in for the second run and made it quite comfortably. 24 for the loss of 4 wickets. Going for a drive to deliver outside the off zone, ricocheting off. Chance of run out at the non-strikers, and good piece of work by the fielder out there. Good presence of mind, throwing it at the non-strikers end. The non-striker was stealing the ground at the non-strikers end, managed to get back in time. 24 for the loss of 4 wickets. 24 for the loss of 4 wickets. NM cricketers, 6 overs match. This being the 4th over. Right arm over the wicket. From the Madatakani end. Bowls to Sadik. Sadik draws it through that vacant mid-on region down to that long-on region for a single. 1 run across. That was played up pitchly. If the ball was played in the air, it would have gone straight down to the fielder. If there was a fielder out there at mid-on, it would have gone straight down the throat of the fielder at short mid-on. Luckily, there was no fielder out there. It was played straight down to the long-on region for a single. 24 for the loss of 4 wickets. 4 overs have been bowled. And I request Gopi to take over the commentary. So I request Gopi to take over the commentary for the next 6 overs. Next 4 overs. धन्यवाद लीना सर। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर। चेतन और लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर उन्होंने गेंद को फेंकी थी, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। मैच इस वक्त एक जबरदस्त मैच कहना पड़ेगा, एलएम मैंगलोर और केएफसी कोडिकल के बीच में चलता हुआ, और चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला कवर पॉइंट की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। सादिक और समीर क्रीज पर इस वक्त मौजूद। 6 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे, और एनएम क्रिकेटर्स इस वक्त एक बेहतर प्रगति करता हुआ। 5वां ओवर शुरू हो चुका है, एक सही गेंद फेंकी जा चुकी है, और समीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। एक हाई वोल्टेज मैच कहना पड़ेगा यहां पर शुरू हो चुका है एनएम मैंगलोर और केएफसी कोडिकल के बीच में। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चेतन की गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन आसानी के साथ बनते हुए इस वक्त एनएम मैंगलोर के लिए, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो चेतन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए समीर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, और इससे पहले कि लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। अगला मैच यंग फ्रेंड्स गांधीनगर और फास्टेक वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के कप्तानों से और सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करो, ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए
ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು दाहिने हाथों पर विकेट अगेन इस बार खूबसूरत स्ट्रोक सादिक द्वारा वाइड स्लॉग ऑफ की दिशा में एक रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और गेंद जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद वाइड स्लॉग ऑफ पर फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. अभिमता चैनल द्वारा इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं यूट्यूब पर. एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट और यहाँ पर अगली गेंद लेकर इस वक्त चेतन तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर गेंद थी. परफेक्ट इन कटर ऑफ कटर गेंद और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके सादिक बेहतर गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके. 5 ओवर की समाप्ति 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स. एंड नाउ स्टिल अ लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. तो सुबह का वक्त टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021-2021 का आज का ये पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ बी पूल का. और पहले मैच में मंगलूर के दो घटानुघटी टीमें इस वक्त भिड़ रही है. एनएम मंगलूर और केएफसी कोडिकल. केएफसी कोडिकल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था, तो इसकी वजह से इस वक्त एनएम मंगलूर पहले बल्लेबाजी करता हुआ और छठा ओवर लेकर इस वक्त तैयार. हकीम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए स्ट्राइक लेते हुए समीर यानी अब्बू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. सुबह के 11 बज चुके हैं. इस वक्त सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है. दाहिने हाथों पर द विकेट हकीम की गेंद इस बार समीर के लिए उछालना चाहा लॉन्ग द कार्पेट. बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी और गेंद को इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 33 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का छठा ओवर यहां पर प्रगति पर. 6th ओवर इन प्रोग्रेस द लास्ट ओवर इन देयर इनिंग्स. और हकीम इस बार सादिक का सामना करने के लिए तैयार. हकीम की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है. गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 34 अंतिम ओवर के 2 बेहतर गेंदे इस वक्त हकीम फेंक चुके हैं और सिर्फ 2 रन पहले 2 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं. समीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते भी चिप किया है. दिस could be the clinic just we are waiting. In fact it taken inside the fence. जिस तरीके से गेंद को उछाला था उससे पहले अंदाजा लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्ले दैट वन अगेंस्ट द विंड. हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को उछाला और गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई आखिरी मौके पर लंगोन सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा लपक ली गई. और इसी के साथ समीर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. 34 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. 3 गेंदे अब उनकी पारी में और फेंके जाने बाकी. जस्ट 3 balls remaining in their innings. The next match, Young Friends Amemar will takes over Fast Warriors, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Amir coming as a number 6 batsman, number 7 batsman in fact for NM Bangalore. He now comes out to the middle. He is at the non-striker, and meantime the striker is Sadiq. और 3 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी. सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद एक डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन इस वक्त मुझे डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग. 5 खिलाड़ी इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात. दाहिने हाथ ओवर द विकेट सादिक के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद वाइड की मांग जरूर की, लेकिन कुछ ज्यादा असर अंपायर की ओर नहीं गिरा क्योंकि गेंद लेग स्टंप से कुछ ज्यादा हद तक बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. 34 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. और हकीम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सादिक के लिए ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट फ्लैट ओवर्शन. इट्स गॉन ऑल द वे. इट्स अ बिग. He just caught that one right from the middle of the bat and swings it that one in a style over deep mid wicket fence for 6 runs. And the ball went over the fence in a flat version.
That is an absolutely perfect shot. बिल्कुल गेंद जमीन के सहारे आई थी along the carpet, लेकिन गेंद को जिस तरह से पिक किया था right from the spot, निस्संदेह काबिल तारीफ। और इस गेंद को खूबसूरती के साथ पुल कर दिया, इस वक्त स्विंग कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए सादिक ने, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर, और एक बेहतरीन पारी यहां पर प्रगति पर सादिक के 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हैं। ही इज बैटिंग ऑन 16 इंक्लूडिंग 1/6 एंड नाउ इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। और सादिक इस वक्त गेंदबाजी माफ कीजिए बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए, और हकीम पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार सादिक के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अगेन जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, इस बार चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर गेंदबाजी, और इसी के साथ द इनिंग्स इज नाउ अप फॉर NM Mangalore. They finished with 40 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs. And they set a victory target of 41 now for KFC Kodikal, and 41 runs KFC Kodikal have to score in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 41 they have to score just under 6 runs per over, just under 7 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 6.85 runs per hour they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. So 41 the target, 6.85 the required run rate for them. With the help of 10 wickets they have to score for victory, and let's see can they reach the target or not. And their inning starts now with just short while. उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, और देखना यह है कि KFC कोडिकल के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा अस्त्र यहां पर अपनाते हैं बल्लेबाजी में। और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे सीनियर श्रीमान लीनस के साथ अंग्रेजी में, जब KFC कोडिकल की पारी की शुरुआत होगी यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. Thank you, Gopi. 40 for the loss of 5 wickets was the total score by NM cricketers after they were asked to bat first. 41 is the target. It's not an easy target to chase against a formidable bowling attack of NM cricketers. NM cricketers, they have a formidable bowling line of. So, we have to wait and see which team is going to
emerge victorious in this particular encounter. 41 in 36 deliveries, 36 possible deliveries excluding wides and no balls. The two openers out there for KFC cricketers, Tajuddin and Chetan. Tajuddin is the batsman at the striker's end. Mujib the bowler from the pavilion end. This being the very first match of the day. NM cricketers clashing against KFC cricketers. Both the teams have equal chance of winning this match. KFC cricketers are known for their performance, good performances when it comes to shorter version of the match. Even NM cricketers, they have a very good team, formidable team. They have won many shorter version of the matches as far as NM cricketers are concerned. 41 is the target. That's the magic figure. NM cricketers are looking for. Muji running away from us. Pass umpire. Both to a delivery outside the off stump. Lunging forward. You can see the batsman lunging forward towards the outside the off stump to try to play that ball. Wasn't able to do so. And back the ball goes into the hands of the wicket keeper. Beautifully bowled. Negative line. This is what you have to do when it comes to shorter version of the match. There is the dot ball that counts the most. And from the fielding side point of view, 41 is the target. That's the magic figure they're looking for. Mujir running away from us. Yes, to bowl to Tajuddin. Wide of the crease, delivers, doesn't get hold of it properly. Ball ending up almost towards on the onside of the pitch, halfway down towards the onside of the pitch. The ball, you can see the wicketkeeper had to run forward to pick that ball. The batsman had ample time to cross over. 1 run on the board. Fast track, So 1 for the loss of no wicket. The next match will be between the young friends Gandhinagar and the fast track warriors. I request both the teams to be here at the pavilion upstairs. This is the first call. So 1 for the loss of no wicket. Butchi is the bowler, running away from us. Passes umpire, wide of crease, delivers, goes for the reverse sweeper. Lucky for him, was down the leg side. He was beaten. It was down the leg side by signal by umpire. Altering its stance, that's the reason why the wide wasn't given. Trying to play the reverse sweep before the ball was bowled. It just altered its stance. You can't alter the stance out there. When the ball is going down the leg side, immediately the umpire is going to say it is not a fair delivery. Immediately umpire is going to say it is a fair delivery. Oh, this out, run out. Back into the pavilion he goes. Directed, resulting to a run out. First wicket down in the form of run out. 2 for the loss of 1 wicket. This is not a good start. Therefore, KFC cricketer chasing a target of 41 runs for victory. The new batsman in is Shakthi. He's the one, the mainstay of the batting lineup. He's the one who has won many matches for them. And they need him until the last ball is bowled out there, until the last run is scored, to be precise. 2 for the loss of 1 wicket. 41 is the target. Most of the batsmen you see when they play those reverse sweep, they alter the stance before the ball is bowled. And if the ball is outside the off stump, he can just free his arms and just try to play that ball easily. But if it is in line with the stumps, it's not so easy for any batsman to play the reverse sweep. It doesn't give any room for the batsman to play reverse sweep or to free the arms. Oh, round his legs is gone. Round his legs. This is what NM cricket bowlers are known for. Round his legs is gone. Shoveling across, exposing his middle and leg stump, going for a sweep shot, moving inside the line of the ball, and he was comprehensively beaten. That was heading towards the stumps, and the batsman has to slowly walk back towards the pavilion. He's totally dejected out there. 2 for the loss of 2 wickets, and what a start it has been for NM cricketers.
Superb piece of fielding. Superb piece of bowling, beg your pardon, by Mujir. End of the over. 1 over has been bowled. 2 for the loss of 2 wickets. And now, the KFC cricketers, they need a partnership. They have to revive the situation for the side, resurrect the innings, and need a partnership of at least 15 to 20 runs from here on. And they should make sure that they have to make sure that they don't lose any wickets from here on, at least for until 15 or 20 runs have been scored. Otherwise, one thing for sure, NM cricketers are going to run away with this match. They have got a very good bowling attack. Now Atif, look at Atif, even he's a very good bowler. He plays for young friends, Urwa. And now, for this match, he's playing for NM cricketers. NM cricketers have got one of the best teams as far as underarm cricket is concerned when it comes to shorter version of the match, not longer version of the match, shorter version of the matches under 10 overs aside. They have got a very good team. 2 for the loss of 2 wickets. Atif the bowler. Sakir the batsman. He's the one can be thorn in the flesh of NM cricketers. So right arm over the wicket. Running towards us. Passes umpire Suraj. Bowls. Swifts the ball from outside the off stump down to the deeper mid-on region for a single. The fielder from long on had to run across to his right, and before he could throw the ball at a non-striker's end, the batsman had ample time to cross over. 3 for the loss of 2 wickets. 41 is the target. Good start there for NM. They had scored. They were restricted to 40 runs by KFC cricketers. NM cricketers managed to get 2 wickets in the very first over. Across the line, trying to swing his bat, was comprehensively beaten. It's not so easy to play across the line. He has only half the face of the bat at his disposal. When he plays across the line, when the ball is outside the line of the stumps, it is easy for you to go for the shot across the line, but you have to make sure the ball comes in contact with the bat. At least it should come in contact with the lower part of the bat. Across the line, again tried to play the reverse sweep to a delivery which was outside the off stump. It was in his zone to play that reverse sweep. When the ball is bowled outside the off stump, you can't reverse sweep the ball. Right arm over the wicket, delivers. Goes for across the line, try to play across the line. He was beaten. Again, I don't understand what the batsman is doing. You can just push the ball right into that vacant area, short cover region. Instead of that, he just tried to play a cross-batted shot to a delivery which was outside the off-stand. Bowler is bowling at a very good pace, and ball just skidding through. It's not so easy for the batsman to make contact unless and until you pick the line and length of the ball to perfection. Far outside the off-stump. That was far outside the off-stump. A wide signal by umpire in line with the return crease. The right arm over the wicket. 4 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Drives it down to the long on range, and there's a fielder out there who fields it off the bounce, and the batsman crosses over for a single. 5 for the loss of 2 wickets. Nine for the loss of 2 wickets. Umpire, can you hear us? Umpires, can you hear us? Can you hear us? Can you hear us?
Umpires. So 9 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. Third over to be bowled. .41 is the target. Mujib bowling his second over. 9 for the loss of 2 wickets. Mujir to bowl to Sajid. Sajid is the batsman, leaning over his bat, settling into his stand. Mujib wide of the crease, delivers to a delivery which was outside the off stump. Plays it down behind square on the offside. Ball catching the toe of the bat and running down to the field at a deep third man region for a single. The score moves on to 10 for the loss of 2 wickets. Ten for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket, running away from us. Mujib the bowler. Running away from us, wide of the crease, delivers. Drives it down to the deepest coverage. And the fielder from play covers that to run around to his right hand side. They go for one. They come with a second chance of run out. Chance of run out. An umpire has just gestured to the third umpire to give the decision. Making a rectangle box in the air and gesturing to the third umpire to make the decision. Ten for the loss of 2 wickets. So 2 overs have been bowled, 10 runs on the board for the loss of 2 wickets. 31 runs required for victory for KFC cricketers. But now waiting for the third decision, which has been given out. So third umpire has given the batsman out, running towards the non-striker's end, wasn't able to ground his bat. The bat was in the air, and that's the reason why most of the batsmen we have seen did run without dragging them. Once they run 3/4 of the way towards the end, they should just drag the bat ahead of them. That would really enable them to get to reach as quickly as possible. 11 for the loss of 3 wickets. For the loss of 3 wickets. .41 is the target. It's not so easy. The batsmen have to be very careful when they run for those risky singles. When it comes to shorter version of the match, they have to do so. They can't afford to just wait to treat the ball like out on the minute. They have to look for each and every. They have to look for runs virtually of each and every delivery. 12 for the loss of 3 wickets. 41 is the target. You have to run and then you have to slide the bat ahead of you once you cover 3/4 of the pitch. 3/4 of the length of the pitch to be precise. Right arm over the wicket, delivers. Beautifully played. Pushing it down to the short cover fielder. There's a fielder at short extra coverage and he had to move around quickly to his
Left hand side, managed to go around the ball to pick it with his right hand, and the batsmen were able to cross over. Sensible batting. Both the batsmen are trying to accumulate runs in singles rather than go for big hits. They have to score virtual of each and every delivery from here on. At least a boundary and help them to get very close to the target of 41 runs. Odd boundary can really help them to get close to the target of 41 runs. 13 for the loss of 3 wickets. Mujib the bowler. Shakthi the batsman. He's the one they are looking forward to as far as Annam cricketers are concerned. Drives it down to the long on region. Beautifully struck. Closing the face of the bat slightly, playing it with a vertical bat and just driving it down to the long on region for a single. Another run across. The score moves on to 14 for the loss of 3 wickets. Chasing a target of 41 runs for victory from here on is not so easy against again a drive that doesn't get hold of it properly. Ball ricocheting off his legs, ballooning up in the air to a delivery which was bowled going down the leg side. There was an appeal for leg before, negated by the umpire. Board 15 runs on the board for the loss of 3 wickets. They're scoring at the rate of 5 runs per over, but it's not so easy for them from here on. One of the batsmen have to play out of the skin if they have to win this match. And over to Gopi for further description of the match. I'll take you through to the end of this match. धन्यवाद सतीश, धन्यवाद लीना से। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त 15 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर, और जहां तक सवाल है चौथे ओवर का, तो चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और 26 रन बनाने, 26 to get now from remaining 3 overs, and now it's going to be equal battle is now continuing here. 18 balls remaining and 26 more runs now they have to score for victory. And the bowler they brought into the attack from that side end. Rilwan, the bowler, will be operating a fresh over from that side, and Hakim is now going to face. And the first ball of the 4th over is now coming up. और जहां तक सवाल है इस वक्त हकीम का, तो हकीम सामना करने के लिए तैयार। रिलवान फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। एक्स्ट्रा कवर, गली, शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद। और रिलवान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। आज का पहला मैच यहां पर खेला जाता है। अगला मैच यंग फ्रेंड्स गांधीनगर और फास्टेक वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा, और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, हकीम ने गेंद को छोड़ दिया, गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और रन्स इस बीच मिलेंगे 1। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो हर गेंद पर 1 से भी ज़्यादा रन्स बनाना ज़रूरी इस वक्त KFC कोडिकल को। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रिलवान शाकिर के लिए तैनात राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, गेंद को छोड़ दिया, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। निस्संदेह कम से कम 1 करारा स्ट्रोक चौके या छक्के में अगर लगते हैं इस वक्त, तो निस्संदेह यहाँ पर KFC कोडिकल इस मैच में लगभग वापस आ सकता है। 23 रन अभी भी चाहिए विजय के लिए। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिलवान गेंदबाजी करते हुए शाकिर के लिए। रिवर्स शॉट, बोल्ड आउट, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद बल्ले पर नहीं आए, लॉन्ग द कार्पेट गेंद आई थी, गलत लाइन पर खेल गए, और गेंद बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई मिडल ऑफ स्टंप पर, और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। KFC कोडिकल इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आती हुई। They are looking in trouble now. 23 more runs now they have to score for victory, and now just 16 balls remaining in their innings.
So Haris, the number 6 batsman, is now comes out to the middle for KFC Kodikal, and at this situation, they badly required a partnership at this situation, and Hakim is at the non-striker end, and Aris is now going to face the next bowler, next delivery of रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को आरिस ने पुल करना चाहा, गेंद गई इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। सो इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी। रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि स्वयं अपने आप से नाखुश हकीम अपने असंतुष्टि का उन्होंने इजहार किया अपना हाथ बल्ले को मारने के बाद, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त तैयार। रिलवान ये गेंद स्टीयर करना चाहा, आखिरी मौके पर गेंद को देखा कि ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है, अपने स्ट्रोक्स को रोकते हुए हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 20 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए आरिस के लिए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया है, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट पर आतिफ गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 4 overs had been bowled. So let's straight away coming back to the equation. 20 runs to score from remaining 2 overs, and now the asking run rate has gone up to exactly 10 runs per over. So 20 required in remaining 2 overs, exactly 10 the required run rate for them. और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज आतिफ उनका दूसरा ओवर, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, तो निस्संदेह एक बेहतरीन मैच मंगलुरु के 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त खेला जाता हुआ, एनएम मंगलुरु और केएफसी कोडिकल के बीच में। और इस बीच आरिस जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है इस वक्त, सुबह के 11:30 यहाँ पर बज चुके हैं और सूरज लगभग आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ। गेंदबाज आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज एरिस इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद पैरों पर टकराई प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर एरिस का गिर चुका है। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन गेंद लाइन पर टिप्पा का मिडिल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर आती हुई, और आखिरकार थोड़ी सी सफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहते हैं, गेंद उनके फ्रंट लेग पर टकराई, और आखिरकार अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 21 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका है। 21 for 5, KFC कोडिकल आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती। धन्यवादಗಳು। आतिफ ये गेंद चिप गया बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ। 10 गेंदें बाकी हैं और रन चाहिए 20। 20 रिक्वायर्ड इन 10 बॉल्स।
What a match is now going on here. आतिफ की गेंद ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन मिलेगा। मंसूर गेंद को फील्ड करते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 9 गेंदें बाकी हैं, 19 रन चाहिए। चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त केएफसी कोडिकल को इस मैच में वापिस आने के लिए। और आतिफ एक कसी हुई लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया, हकीम ने स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट in the over number 5 in progress. So 18 to get now from 8 deliveries. The target seems to be a much stiffer now for KFC Kodigal. They badly require at least 1 or 2 big strokes at the stage to get back into this, get back into the match. On the face of a boundary and sixes. और आतिफ ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड। 24 for the loss of 5 wickets. 17 to get now. 8 balls remaining. Still the match is not yet over. Still KFC Kodigal are now fighting back. Lofted this time down to wide is long off, but straight to fielder and one more wicket fallen. इस बार गेंद को उछाला था लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और प्लेसमेंट भी गलत था और वाइड इज लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। छठा विकेट गिर चुका है 24 रनों के योग पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड नाउ 7 balls left in their innings and 17 runs more. Now they have to score for victory. मंसूर का आगमन यहां पर होता हुआ और मंसूर इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, जबकि हकीम सामना करने के लिए तैयार। शाकिर माफ कीजिए आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ड्राइव किया, इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइक रन पर विकेट कीपर सादिक करते हुए। गेंदबाज के हाथों से गेंद छूटने के बाद सीधे पहुंची शॉर्ट कवर पर, जहां पर सादिक विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपक पड़े और रन न चुराना चाहता दोनों बल्लेबाजों ने। और इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज मंसूर स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सादिक ने गेंद को फील्ड करने के बाद तेजी के साथ गिल्ली बिल यहां पर उड़ा दिए। 24 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड नाउ 17 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर। तो बेहतर ओवर आतिफ का साबित हुआ जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। एक विकेट गिरा रनआउट के रूप में और अब अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए विजय के लिए। फास्ट ट्रैक वॉरियर्स ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ। So back to this game, quite difficult task but not impossible. And the bowler brought into the attack is Tanveer, starting a fresh over. And Hakim is now going to face अभिमता चैनल के जरिए इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो कि देश विदेशों में इस वक्त की जा रही है और हजारों दर्शक देश विदेशों में इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट देखते हुए। 17 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही केएफसी कोडिकल को इस मैच में विजय दिला सकते हैं। पहली गेंद उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, अपील नकार दिया इस वक्त अंपायर ने और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 17 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी।
17 to get from 5 balls. और मंसूर ये गेंद हकीम के लिए लेग स्टंप पर आते हुए गेंद उछालना चाहा, चूंकि सही गेंद घोषित। दो लगातार डॉट गेंदे इस वक्त फेंक चुके हैं, 4 गेंदे बाकी और 17 रन चाहिए विजय के लिए। 17 रन से स्कोर फ्रॉम 4 डिलीवरीज नाउ। छक्के और चौकों की सख्त दरकार इस वक्त केएफसी कोडिकल को। यह गेंद उछालना चाहा, चूंकि 3 डॉट बॉल्स इन ए रो and now the last chance in front of KFC Kodigall. 3 sixes, almost 3 sixes required in the remaining last 3 deliveries. 3 गेंदे और 3 छक्कों की दरकार इस वक्त KFC Kodigall को। Gone for a big one, misses, and now 17 to get from 2 balls. Absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wide. 17 रन चाहिए 2 गेंदों पर और इस बीच तनवीर गेंदबाजी करते हुए। 5 dot balls and now 5th dot ball, he getting a single, in fact 25 now, and now last ball remaining and 16 to get। 16 रन चाहिए अंतिम गेंदों पर, असंभव सा लक्ष्य इस वक्त। बाएं हाथ राउंड द विकेट, स्वीप किया मिड विकेट पर, दैट्स इट। 15 runs, comprehensive victory for NM Bangalore defeating KFC Kodigall, and with that victory they are through to the next round of this competition. Next match, Young Friends Gandhinagar will take over Fast Tech Warriors, and that match starts within a short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अगले मैच में, जब अगला मैच शुरू होगा फास्ट टेक वॉरियर्स और यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के बीच में। धन्यवाद, थैंक यू। So I request Sadiq of NM Cricketers come over here and collect the Man of the Match award for his brilliant batting. 16 runs he had scored in his innings of NM Cricketers. So Sadiq of NM Cricketers to come over here and he will be presented with the Man of the Match award by none other than my co-commentator Gopi. Sadiq of NM Cricketers is receiving the Man of the Match award from my co-commentator Gopi. Thank you. Thank you, Gopi.
Matinaga.
ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್. The second match of the day will be between Fast Track Warriors and Young Friends Gandhinagar. I request both the teams to be in readiness. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತು ಬತ್ತ ಸೀದ ಪನಂದಿನ ಪೋಯಿ The second match of the day will be played between Young Friends Gandhinagar and Fast Track Warriors hailing from Bajpayee. So waiting, we request both the team players to be in readiness. An umpire making the way towards the middle. The two umpires to officiate this match are Suresh and Roland Pinto. And you can see Young Friends Gandhinagar cricketers out there right in front of the pavilion in a hurdle.
beg your pardon, fast track warriors. Both the teams out there right in front of the pavilion in a huddle. Fast track warriors as well as young friends Gandhinagara. Fast track warriors hailing from Bajpayee and young friends hailing from Gandhinagara. And two umpires out there in the middle are Suresh and Roland Pinto. So young friends Gandhinagar winning the toss and opting to field first. You can see the players of young friends Gandhinagar out there on the ground. And shortly we are going to see the two openers following suit. The all is set for the very first ball to be bowled. The two openers out there in the middle are Ijaz and Imran. Ijaz at the striker's end to face the first delivery from Mobir. Mobir, as far as the playing conditions are concerned, for the first 2 overs, only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle. Throughout the 6 overs, not more than 5 fielders on the onside, not more than 2 fielders behind the popping crease on the onside. These are the playing conditions as far as this tournament is concerned. There is trying to reverse sweep, all trying to sweep that ball which is outside the off stump, which was outside the off stump to be precise. And you have the ball ending up behind square on the onside. It was off the bat. And you could see the batsman almost lunging, putting his front foot down the pitch, bending low down, sweeping the ball. Ball might have caught the part of the bat and ending up behind square on the onside to the left of the
wicketkeeper were to run across, move across quickly. One for the loss of no wicket. Mubir is the one to bowl to Imran. Ijaz is at the non-striker's end. You can see the fielders out there. 5 fielders. They need to have at least right arm of the wicket. Delivers going for a sweep shot. They go for one. Good running between the wickets. Ballooning up in the air of the leg. That was a leg by. Going for a sweep shot with delivery, which was delivered at a very good pace. And the ball just hitting maybe the hand. I get the feeling that the ball hitting the hand of the batsman. He's wringing his hand, right hand. He's at the non-striker's hand now. Right arm of the wicket. Rami running away from us. Bose drives it down to the cover point region, right in front of square on the offside. The fielder for short covers, almost very close to the short extra cover region, on the 20-yard circle, had to run across to his left, and the batsman had ample time to cross over. 3 for the loss of no wicket. Imran on strike. Imran on strike. Mubir the bowler. Right arm over the wicket. Goes for the reverse sweep. Oh, good. That was a magnificent looking catch. One of the best catches so far in this tournament. Diving forward. Took that catch inches off the ground. He was fielding there at backward point region. Just inside the 20-yard circle. Threw himself forward and took the catch with both the hands. It's not so easy to dive on this ground. Even international cricketers may take 100 times over to dive on this ground. It is not suitable for diving. This ground is not suitable for diving. Hats off to the fielder who dived forward. Name of the fielder fields? Suleiman was the fielder. Superb piece of fielding. Superb exhibition of catching. 3 for the loss of 1 wicket. Going for the reverse sweep, and look at the fielder at backward point region. Throwing himself. Even now you can see he might have bruised his forearm, the back of his forearm, right forearm. It's not so easy. You're always prone to injuries when you die on this ground. 3 for the loss of 1 wicket. 1 wicket down, and number 3 batsman making his way towards the far end, taking his guard from umpire Suresh, marking his guard, and now settles into his stance. Maybe Ashraf. Ashraf is the new batsman. Mubir the bowler, right arm over the wicket, delivers, drives it, whips it off his toes, straight the fielder, a short wideish mid-on region. The fielder had shot mid-on, who was exactly behind the non-striker out there. Even he had moved across to his right hand side, but it was fielder at short mid-on. The ball was travelling very quickly and straight to the fielder and short wideish mid-on region. Going for a sweep shot. Almost he was trying to play that lap sweep. Was comprehensively beaten. 3 for the loss of 1 wicket. Three for the loss of 1 wicket. After the end of first over, 5 more overs to be bowled. This being the second match of the day. The winners of this bowl are going to clash against Prince Murshid, who have already made it to the finals. 3 for the loss of 1 wicket. Ijaz is the batsman, settling into his stance, waits, having a look around the field before settling into his stance, leaning over his bat. You can see the bat grounded outside the off stump. Ijaz to face Razik is the bowler. Is it Razik?
3 for the loss of 1 wicket. Razik is the bowler. Three for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket to deliver. Still, they're trying to see each and every fielder out there. Is in the right spot. Right arm over the wicket delivers. Drives it upishly, but safe wide to the fielder, down to the boundary. That should be 4 runs. We have it. A good piece of work by the fielder for short coverage. And run back, managed to pull the ball back into the playing area, flicking the ball back, and that was a great effort, combined effort by two fielders out there. The fielder from short covers had to run. Here was the fielder from deep short extra cover. Both of them were in pursuit. One of the fielder at short extra cover managed to pull the ball back, flick the ball back, and the fielder from short cover completing the fielding. 5 for the loss of 1 wicket. Superb piece of work, superb piece of combined effort there by the fielders. Drives it upishly straight down the field. Fielder out there at long on region. The second wicket down. 5 for the loss of 2 wickets. Lofted shot, got the elevation. Unfortunately, wasn't able to get the distance to clear that long on boundary. So he jars back into the pavilion. Five for the loss of 2 wickets. Fast track Warriors hailing from Bajpayee. They asked to bat first. Young friends Gandhinagara had won the toss. They opted to field first. 5 for the loss of 2 wickets. It's not a good start there for fast track Warriors. Only 5 runs on the board. Second over is going on. 2 wickets down. And it looks like young friends Gandhinagara an upper hand here at UCG Ura Cricket Ground in the second match. Still early days here at UCG as far as this match is concerned. Five for the loss of 2 wickets. Second match of the day. The new batsman in is Rizwan. He's at the far end. They're crossed over. Ashraf, the batsman, having a look at the field, taking his own time to settle into stance, marking his guard, taking guard from umpire, asking for the leg guard as well as the middle stump guard before just again is having a look around the field before settling into his stance. Ashraf is the batsman. Right arm over the wicket. That ball has been reverse swept down to the short third man region. Almost there's a fielder out there behind the right shoulder of the wicketkeeper, diagonally outwards. He had to move across to his right, and the batsman had ample time to cross over. 6 for the loss of 2 wickets. Six for the loss of 2 wickets. Second over is going on. 6 over side match played here at UCG Ura Cricket Grounds. A match. Lofted shot down to the boundary. One bounce into the fan she goes. Down to the deep mid wicket. Superb shot. Picking the line and length to perfection and executing it to nicety. Beautifully played. There was no fielder out there. This being the second over, the field restrictions are on. Only 2 fielders are out to field outside the 20-yard circle, and that really gave the batsman the leverage to go for that big hit. 10 for the loss of 2 wickets. Superb shot there by the batsman. Rizwan. Second match of the day. The first match was won by NM cricketers. They won it quite convincingly against KFC cricketers. KFC cricketers failing to chase the score of 41 runs. And now the second match is on. Drives it straight to the fielder at short wideish mid-on region. There's no fielder at short mid-on, bit finer. If the batsman drives the ball just past a non-striker, he can fetch a single. Right arm over the wicket, delivers. Drives it upishly but safe, chips it over the fielder that covers one bounce. Into the fence she goes. Down to the deep cover boundary. Beautifully struck. End of the second over. 14 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. Superb shot, chipping it over the cover fielder. Once the ball had played, was chipped over the cover fielder, there was no protection, no cushion whatsoever in the deep. And we can't blame the fielding side as far as this particular over was concerned because of the field restrictions. They can have
they can have only 2 fielders outside the 20-yard circle for the first 2 overs. Now, the skipper of the fielding side has the liberty of spreading of the field. He can have 5 fielders outside the 20-yard circle. 14 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. They're scoring at the rate of 7 runs per hour. 24 possible deliveries, excluding wides and no balls at their disposal. We have to wait and see what sort of score they're going to set to their opponents. 8 wickets in hand, 14 runs on the board, 24 deliveries to go. A score of 45 plus is always on the cards. Praneeth, the bowler. The third bowler has been introduced, Praneeth, and he'll be bowling to Ashraf. Rizwan is at the non-striker's end. Ashraf taking his own time to settle into his stance, settling now into his stance, leaning over his bat, under his cap, having a look especially at the field before leaning over his bat. Right arm over the wicket. Oh, beautifully played. Just waits for the ball to come onto his bat. Last minute, opening the face of the bat and plays it behind square on the offside. Down there at backward point region. The fielder from short third man on the edge of 20-yard circle had to move around to his right, and the batsman had full time to cross over. 15 for the loss of 2 wickets. Ashraf just waiting for the ball and just opening the face of the bat. And the toe of the bat was pointing towards the direction the ball was played down to the backward point region. 15 for the loss of 2 wickets. Third over is going on here. Fast track warriors, they lost the toss. Swings it. It should be 6. It should be 6. The moment the ball left the bat, 6 runs were written on it, right in front of square, between deep mid wicket and deep square leg region for a maximum. Superb picking the line and into perfection. It's not so easy. Superb shot. Across the line, managed to pick the line and length of the ball, shuffling across, moving inside the line of the ball, and just helping the ball over the boundary line, right in front of square for a maximum. And again trying to play the reverse sweep. There was no need for the batsman to go for that risky shot. It was going down. Luckily, it was going down the leg side. If it was in line with the stumps, it would have been really not so easy for the batsman to negotiate that ball. When you go for the reverse sweep, it is a highly unorthodox shot in the game of cricket. Again, goes for the reverse sweep. Good piece of work. The throw wasn't good enough. It was at the non-striker's end. It was a loose throw. An umpire asking for the third umpire the on-field umpire asking for the third umpire to make the decision as far as this run out is concerned. Making a rectangle box in the air and gesturing to the third umpire to make the decision. Always when there is the DRS is always the on-field umpires want to be on the safe side. (22) for the loss of 2 wickets. From here it looked like it was not out. From here it looked like he was not out, simply because the bowler wasn't able to collect the ball and just break the stumps in time. The batsman was wasn't running hard. The moment he realized that ball was thrown at the non-striker's end, he just tried to pick up the pace. Fortunately for the batsman, he was able to ground his bat despite the fact he was running with a bat in his hand. That's the problem. Always after you cover 3/4 of the length of the pitch, you have to drag the bat ahead of you. That will really enable you to make the ground as quick as possible. You don't have to run 22 yards out there. Just you can run 20 yards and cover the ground. If you have that bat split ahead of you. 23 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. Oh, just trying to whip it off his legs. That says that he was going down the offside. Umpire. Superb piece of work there by the fielder, charging and swooping down onto the ball. But the batsman out there was very quick to get back to his crease. 23 for the loss of 2 wickets. 3 overs have been bowled. And we are exactly at the halfway mark as far as the innings of fast track warriors
healing from Bajpayee are concerned. Over to Gopi to take it through to the end of this innings of Fast Track Warriors. धन्यवाद लिनस सो 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स फॉर फास्टेक वॉरियर्स और एक बेहतर शुरुआत यहां पर वो कर चुका है और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम निर्धारित 6 ओवर में 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा उनके बल्लेबाजों को और अब तक के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 40 का आंकड़ा पार कर सकता है अगर एक बेहतर साझेदारी यहां पर बनती है फास्टेक वॉरियर्स के लिए और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मुबीर अपना दूसरा ओवर और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अशरफ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार तो मुबीर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए पहली गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला गेंद पहुंची गली की दिशा में 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है स्टंप्स पर निशाना टकराया जरूर लेकिन बल्लेबाज इससे पहले क्रीज पर अपना बल्ला रख चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट बल्लेबाज इस वक्त रिजवान सामना करने के लिए तैयार रहा और जहां तक रिजवान का सवाल है अब तक एक छक्का और एक चौका वो झड़ चुके हैं और निस्संदेह यहां पर एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन न देते हुए सामना करने के लिए तैयार मुबीर की गेंदों का ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचे इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर और इस बार आखिरी मौके पर मैं समझता हूं वो क्रीज पर पहुंच चुके हैं इससे पहले कि थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेटों को चटकाया जाता तो यहां पर नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन आखिरी मौके पर बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे इससे पहले कि विकेटों को बिखेरे जाते गेंद को रिसीव करने के बाद और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस फाइन प्रोग्रेसिंग या फॉर फास्टेक वॉरियर्स और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार मुबीर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त से सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो किया था लेकिन उनका निशाना चूका और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में और आखिरकार रन जैसे ही गेंद को उन्होंने फील्ड किया घूमकर थ्रो किया नॉन स्ट्राइक रन पर ये जानते हुए कि नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज क्रीज से आगे निकल चुके थे लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और इससे पहले कि गेंद को बैकअप किया जाता लंगॉन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर गेंदबाज मुबीर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिजवान के लिए ये गेंद उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड गेंद जाती हुई लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि थ्रो पहुंच रहा है नॉन स्ट्राइक रन पर और इसी के साथ 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 27 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस गेंदबाज एक बार फिर से तैयार मुबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धीमी गेंद को ड्राइव किया रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला हो सकता है जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर नाउ
So it's gone. He fell just short out of the crease when the wickets were flicked by wicket keeper after receiving the throw. और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन पूरा करने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठे रिजवान। एक बेहतर पारी उन्होंने खेली और कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 17 रन, 2 चौके और एक छक्के की मदद से, और एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए is out for 17 and now Fast Track Warriors are 27 for 3. शफीक का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। माफ कीजिए, अयाज नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करते हुए मुबीर की गेंदों का। मुबीर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और जहां तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का, तो 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस वक्त। मिड विकेट, मिड ऑफ पॉइंट और शॉर्ट फाइन लेग, और गेंदबाज इस वक्त तैयार है। ये गेंद स्वीप किया हल्के से गेंद को जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 28 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और 4th ओवर हैज बीन केम टू एन एंड। Exactly 7 runs per over. The present run rate is now going on here for Fast Track Warriors. Progressing around nicely, and good over in young friends Gandhinagar's point of view came to an end. Just 5 runs came from this over from Mubir, and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. Abhimathatv channel द्वारा YouTube पर इस वक्त इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं अपने मोबाइल सेट पर, और देश विदेशों में ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त होता हुआ, और हजारों दर्शक इस सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए। और जहां तक का सवाल है इसी श्रृंखला का, तो टीम ओम शक्ति 2021, टीम ओम शक्ति ट्रॉफी इनफैक्ट 2021 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई इस सुंदर से उर्वा क्रिकेट मैदान पर, और यहां पर संघर्ष जारी है फास्ट ट्रैक वॉरियर्स और यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के बीच। नौशाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, अयाज यहां पर सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, दोपहर का वक्त 12:30 यहां पर बच चुके हैं। धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ती नजर आते हुए, और गर्मी का एहसास ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक जो कि इस मैदान पर मौजूद है वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहां पर करते हुए। और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार टिप किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ऐसा करना पड़ी, just check the shot at the last moment, just scoop that one, but the ball straight away into the hands of Whitish long off fielder, and finally he made no mistake. 28 for 4 at the start of the 5th over in fact for Fast Track Warriors, and 11 balls in overall calculation remaining in their innings. So 28 for 4 now in the over number 5 in progress, और गेंदबाज बल्लेबाज माफ कीजिए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए शफीक का आगमन यहां पर होता हुआ, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अशरफ, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौशाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नीचे रहते हुए सीधे पहुंची शॉट, टर्नमैन पर निशाना टकरा चुका है, और इस बीच एक बार फिर से यहां पर इशारा जारी है थर्ड अंपायर का। थर्ड अंपायर के लिए इस वक्त कॉल
दिया गया है और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार निकलता है थर्ड अंपायर द्वारा। So not out, says the third umpire, and everything perfect for the right-handed batsman. He is survived. Single run added to the total, and with that single run, the scoreboard moving up to 29 for the loss of 4 wicket. 29 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और इस निर्धार में बाल बाल बचते हुए बल्लेबाज गेंदबाज नौशाद एक बार फिर से तैयार। शफीक इस वक्त सामना करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए नौशाद और अपने अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आज का दूसरा मैच टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। नौशाद एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की और गेंद बढ़ते हुए और गेंद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट played that one with a twisted bat and get that one perfect into the gap for a boundary. पॉइंट और गली के बीच में जो अंतर था उस अंतर से तिरछे बल्ले के सहारे रिवर्स शॉट के जरिए इस स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और टाइमिंग एक्सक्विजिट और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज शफीक बेहतरीन स्ट्रोक का और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ फास्ट ट्रैक वॉरियर्स। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिना ओवर द विकेट फुल टॉस। गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए। शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 34 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड गुड प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर फास्ट ट्रैक वॉरियर्स। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। धीमी गेंद उछालना चाहा, स्टंप आउट का मौका गवाते हैं विकेट कीपर। थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय अवकाश 1 रन प्राप्त करने का। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द 5th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। बॉलर बैट्समैन शफीक इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। नौशाद गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन कहना पड़ेगा, डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद। यहां पर 2 फील्डर ऑफ साइड पर ठीक सीमा रेखा के पास मिड ऑफ 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। नौशाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए
एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए गेंदबाज नौशाद, और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, लेकिन काफी बाहर, और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर द्वारा। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 2 कंसेक्यूटिव वाइड्स बोल्ड बाय द बॉलर इन दिस ओवर। और जहां तक सवाल है रनों का, तो 37 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। So last ball remaining in this over, और यहां पर तीसरे अंपायर के लिए कॉल इस वक्त दी गई है, और देखते हैं क्या होता है। तो he's gone this time। और जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बैकफुट वो उठा चुके थे, लिफ्ट कर चुके थे क्रीज से, तो इस वजह से थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया है। और बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग इस गेंद पर विकेट कीपर ने दिखाई है। और अब 5वां विकेट गिर चुका है 37 रनों के ऊपर। शफीक की पारी समाप्त। और जहां तक शफीक का सवाल है, 5 रन बनाने के बाद वो यहां पर पेविलियन वापस लौटते हुए। आरिफ का आगमन यहां पर होता हुआ, 7 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। तो अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार। नौशाद, ये गेंद धीमी गेंद थी, ऑफ कटर गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 5 ओवर की समाप्ति, 38 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 5 ओवर्स हैव बीन बोल्ड इन देयर इनिंग्स। लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, अंतिम ओवर बाकी। और देखना यह कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के बल्लेबाज अपने बचे हुए 5 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। प्रणीत गेंदबाजी पर यहां पर उतरते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। आरिफ इस वक्त सामना करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ फास्ट ट्रैक वॉरियर्स की पारी में। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, डीप मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। लॉन्ग ऑन मौजूद, थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेटर, डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात।
और अब एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है। और बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त इस बार बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर रुक चुका है 38 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, चिप किया मिड विकेट पर, सीधे फील्डर के हाथों में। ऐसा कहना पड़ेगा, प्ले दैट वन वेरी वेल बट कांट फाइंड द गैप। और गेंद सीधे पहुंचे डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, और इस कैच को बेहतर तरीके से यहां पर लपक लिया गया। और इसी के साथ आरिफ की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। छठा विकेट गिर चुका है 38 रनों के योग पर। इट्स 38 for 6 for first Rick Warriors with just 5 balls to go in their innings. तो नाइस का आगमन यहां पर होता हुआ, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अशरफ। तो जहां तक सवाल है अगली गेंद का, और ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना लग चुका है, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। Without facing any delivery, Nice is now back into the pavilion and a 7th wicket loss for Fast Break Warriors. रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके, और जहां तक सवाल है पैरों पर गेंद टकराने के बाद पहुंची शॉट फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर, जहां पर विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लप किया और विकेटों पर उन्होंने शाइन किया, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 7 गिर चुका। 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। अरशद का आगमन होता हुआ एज ए नंबर 9 बैट्समैन, इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर वो कदम बढ़ाते हुए। और गेंदबाज प्रणीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। अरशद सामना करने के लिए तैयार। 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में, और प्रणीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, निशाना दागा था लेकिन निशाना चूका, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 3 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए गेंदबाज, और एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ इस वक्त सामना करते हुए। यह गेंद चार्जिंग डाउन द विकेट, गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 40 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स विद जस्ट 2 balls नाउ रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। 2 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में। प्रणीत बल्लेबाज इस गेंद पर तैयार नहीं थे, तो इसकी वजह से इस गेंद को डेड घोषित किया गया है, और एक बार फिर से गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। यह गेंद बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर जरूर निकल रही थी। गेंद का पीछा करना चाहा, ड्राइव करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, रन बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला। और अंतिम गेंद अब फास्ट ब्रेक वॉरियर्स के पारी का लेकर तैयार गेंदबाज प्रणीत। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने के बाद अब अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी पीछे, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मैं समझता हूं नहीं बच पाएंगे वो। 8वां विकेट पारी की अंतिम गेंद पर गिर चुका। सो द इनिंग्स इज अप
And the fast track Warriors finished well with 41 for the loss of 8 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of exactly 42 for Young Friends Gandhinagar. And as far as the required run rate is concerned, at the situation for Young Friends Gandhinagar, exactly 7 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. 42 रनों का लक्ष्य, 42 the target in 6 overs. और राउंड की पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे सीनियर लिनस के साथ जब यंग फ्रेंड्स गांधीनगर की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you, Gopi. 41 for the loss of 8 wickets in allotted 6 overs, thereby fast track Warriors Bajpe. Now Gandhinagar, Young Friends Gandhinagar have to score 41 runs for victory in 36 possible deliveries excluding wides and no balls. It all depends upon how the batsmen are going to fare in the first 2 overs when weight restrictions are on. Whereas the bowling side, the bowlers have to really bowl wicket to wicket, make the ball talk in the language the batsman is not able to understand. This is what should be the criteria as far as the bowlers are concerned. Whereas the batsmen are concerned, they need to score of virtually each and every delivery from here on. 36 deliveries, 41 runs means 5 runs more than number of deliveries at their disposal. Forty-one, 42 runs required for victory. Beg your pardon. They scored 41 runs. Fast track Warriors. After they lost the toss, they were asked to bat first. Now Young Friends Gandhinagar have to chase down 42 runs for victory. 6 runs more than the number of deliveries at their disposal. The all is set for the innings of Young Friends Gandhinagar to commence. We are waiting for the 2 openers out there to follow suit. And now we can see the 2 openers making the way towards the middle. Jersey number 77 and jersey number 01. They are making the way towards the middle. They have to score 42 runs for victory. 10 wickets in hand. 6 overs at their disposal. And we have to wait and see which team is going to make it to the second round. It's all matter of time from here on. In 6 overs, we'll come to know the winner of this encounter. 42 is the target. 2 umpires officiating this match. Roland Pinto is moving towards the square-like position. As Suresh is officiating from the near end. There's the pavilion end. Standing there behind the stumps at the non-strikers end. All is set for the first delivery of the innings of Young Friends Gandhinagar to commence. Second match of the day. The next match will be played between Young Prince Urwa and NM Creators. I request both the teams to report at the pavilion upstairs to just sign our official chart, provide us the list of playing 11 as well as the 12th man before the toss. Back to present. Right arm over, far outside the off stump. Wide signal umpire. This is not the way to bowl.
defending a total of 41 runs for victory. This is not the way to bowl. This is crime to bowl at his juncture, and he has to reload this delivery. 1 for the loss of no wicket. Two for the loss of no wicket. Wide. Hello. So 1 run across, 6 for the loss of no wicket. 42 is the target. That was a boundary, beg your pardon. I was really distracted by a phone call. That was a boundary. 6 for the loss of no wicket. Riaz to bowl to Sadiq. Sadiq under his cap. Right arm over the wicket. Riaz bowls. Wide of the crease. Delivers. Goes for a drive to a delivery outside the offside ball. Taking the bottom edge of the bat. Two end of the bat. Going down to the field at short third man region. Behind the wicket keeper's right shoulder. Wide signal by umpire. Wasn't able to. For a moment I looked like the ball might have caught the toe of the bat. It was a wide delivery. Lunging forward towards the offside. That was a delivery almost on the 7th or 8th stump. Outside the off stump. 8 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Riaz. To Suleiman. Riaz bowls wide of the crease. Beautifully played. Getting right behind the line of the ball. Watchfully forward. Waiting for the ball to come onto his bat. With the rule of physics. Closing the face of the bat. And playing it down to the vacant short mid wicket region. On the edge of the 20-yard circle. The fielder from mid-on had to move across to his right. And the batsman had ample time to cross over. 9 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Delivers. Bear plays it down to the cover fielder and they set off for a single. Just pushing it down to the fielder, stealing a single under the nose of the fielder at short cover region. 10 for the loss of no wicket. Riaz once again to bowl to Sadiq. Sadiq under his blue cap and Suleiman, beg your pardon, Suleiman under his blue cap and Sadiq under his red cap. Oh, beautifully played. Just dabbing down right in front of square on the offside. The fielder from cover point or edge of the circle had to just charge in, and batsman had ample time to just steal the single under the nose of the fielder. 11 for the loss of no wicket. Sensible batting, chasing a score of 42 runs for victory. Young friends Gajinagara accumulating runs in the form of singles rather than going for those risky shots. Right arm out the wicket, delivers. Lofted shot. Oh, there is no cover fielder. Yes, run back. There's no fielder out there in the deep. Before he could just field the ball, underarm it, and the ball. You can see that ball arriving towards the non-strikers end at a snail pace. And the batsman had ample time to cross over for a couple of runs. 13 for the loss of no wicket. 1 over has been bowled. Very expensive over by Riaz. 13 runs have been scored, chasing a score of 41 runs. It's really a blessing in disguise for the batting side, scoring 13 runs of the very first over. 42 runs, that's the magic figure they were looking forward to. We'll wait and see which team are going to emerge victorious in this particular encounter. The first match was won by NM cricketers quite convincingly. Waiting KFC cricketers, Kodikal. NM cricketers batting first set scored 40 runs. KFC cricketers failed to chase down 41 runs for victory and 36 possible deliveries. Now young friends Gandhinagara are chasing a score of 42 runs, 1 run extra than the run KFC Kodikal had to chase. The 1 run more to be precise
Then KFC Quadical had to chase. 13 for the loss of no wicket. Second over. The field restrictions are still on. Only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle. Not more than 5 fielders onside. Throughout the 6 overs. Not more than 2 fielders behind the popping crease on the onside. Throughout the 6 overs. As far as leg before decision is concerned, anything pitching outside the leg stump, hitting the batsman in line the stumps cannot be given out as far as the leg before rules are concerned. That's it. Oh my goodness, that was a valiant attempt by the fielder. A short extra coverage and he dived to his left hand side, managed to stop that ball. That was a great effort and great commitment by the fielder at short extra coverage and superb piece of fielding. Great display of fielding there by the fielder. Imran was the fielder. Up his sleeve, reaching for that ball. No, take it the way he just went for that catch. What a commitment there by the fielder, diving, outstretching both his hands, got his hands to it. Unfortunately, the ball popping out of his hands once the hand, both his hands hit the ground. Unfortunately, superb effort there by the fielder. At mid-off region, he had to run to his left-hand side. When he realized that the ball was dipping onto him, he dived full length forward, outstretching both his hands, trying to take that catch, managed to get his hands underneath the ball, but unfortunately, the ball popped out of his hands, wasn't able to latch on it, swings it down to the boundary, that ball racing down to the boundary, and it is flowing down to the boundary, and the ball crossing over the boundary line for 4 runs. Beautiful looking shot, picking the line and length to perfection, and executing to nicety. 20 for the loss of no wicket. The way they have been batting, it looks like they are going to finish this match in double quick time. 20 for the loss of no wicket. What a start they have been having. Dream start there, but rollicking start. Pushing the ball to a delivery which was onto his legs. Pushing it, slightly opening the face of the bat and playing it down to a short extra coverage and 4 no runs. Right arm over the wicket. 20 for the loss of no wicket. Sadiq is the batsman. Ayaz in the ball, top again. Maybe he went for that sweep shot, slow sweep. Lucky for him, ball just landing between the 2 fielders out there. The fielder from square leg had run back. The fielder from deep mid wicket came charging in, diagonally forward to his right hand side, and ball just landing safely between the 2. And the batsmen were able to cross over for a couple of runs. 22 for the loss of no wicket. What a start. What a rollicking start it has been by young friends Gajinagar here against the opponents, the fast track warriors, Bachpe. 22 for the loss of no wicket. 2 overs have been bowled. They're scoring at the rate of 11 runs per over. One thing was sure, if they're going to score at the same rate, they are going to finish this match in triple quick time. Superb piece of this batting display by these 2 openers, Suleiman and Sadiq. Bulk of the runs have been scored there by Sadiq. Bulk of the runs, 22 runs. Out of the 22 runs, 15 runs have been scored there by Sadiq. So 22 for the loss of no wicket. What a start it has been there for young friends Gandhinagara. Who would have thought at the start of the innings they are going to be 22 for the loss of no wicket at the end of 2 overs. At the outside of the innings. No one would have thought. And this is due to not such good bowling there by fast track warriors. Rusty bowling really helped them, these 2 batsmen to get the score of 22 runs in first 2 overs. Now the field restrictions have been lifted. Now the skipper of the fielding side adds the liberty. It's really a sigh of relief there for the skipper of the fielding side. He can just put 5 fielders outside the 20-yard circle. 22 for the loss of no wicket. Shail. Shail is the bowler. Suleiman is the batsman. Across the line, trying to play across the line is not so easy. Lucky for him, ball missing the outside
Almost the ball was just outside the off stump. He was very lucky on that occasion. Trying to play that cross pattern shot. He should have pushed it. And still, there was no fielder out there at short coverage, short extra coverage. And he could have played it with soft hands and set off for the single rather than he tried to play that cross pattern shot. Down the next side. This is not good bowling. This is not good bowling. And look at the non-striker out there. Just running for that. He was 3/4 away towards the striker's end. And he's run out. 22 for the loss of 1 wicket. Sadiq back into the pavilion. There was no response whatsoever by the striker. Striker was busy looking back over his shoulder where the ball had gone. Ball had gone behind square on the onside. This is what happens whenever the ball is played behind square or behind the stumps. It should be the call of a non-striker. You have to trust your partner. You should have faith in your partner rather than look back over his shoulder where the ball had gone and then decide to go for the run. And Suleiman, he was looking back over his shoulder where the ball had gone. .22 for the loss of 1 wicket. So 22 for the loss of 1 wicket. Two overs have been bowled. And Sadiq is the batsman back into the pavilion. .22 for the loss of 1 wicket. .23 for the loss of 2 wickets. .42 is the target.
23 for the loss of 2 wickets. 42 is the target. 19 runs required for victory from here on. 8 wickets in 9. The match still in favor of young friends Gandhinagara. Chasing a score of 42 runs for victory. It was Sadiq who had scored bulk of the runs. You had scored 15 runs before he was run out, unfortunately. Sahil running away from his pass umpire. Bose opening the face of the bat and plays the square of the wicket on the offside for 1 run. At backward point, the fielder from short third man behind the wicket keeper's right shoulder had to run across, forward to his right, and the batsman had ample time to cross over. 24 for the loss of 2 wickets. 24 for the loss of 2 wickets. And this ball outside the off stump, batsman trying to swing his bat blindly. Wicketkeeper behind the stumps complaining to the batters. He had to collect it, and now Sahil. Right arm over the wicket from the pavilion end. To bowl to Safan. Sweeps it, reverse sweeping it, in line with the perfect case on the offside. The fielder from behind square, on the offside, on the edge of 20-yard circle, had to run across to his right, and the batsman had ample time to cross over. 3 overs have been bowled, 25 runs on the board for the loss of 2 wickets. 42 runs required for victory, and they require 17 runs for victory from here on. And over to Gopi for further description of the match. Take it through to the end of this second match. धन्यवाद लीलास। तो 3 ओवर के समाप्ति 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर के समाप्ति 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है 17 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी है 18 बॉल्स रिमाइनिंग 17 टू गेट। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। अयाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 17 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। बराबर का संघर्ष जारी है। 2 ओवर में 22 रन जोड़ चुके थे पहले 2 पावर प्ले ओवर्स में, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर में बेहतर गेंदबाजी गेंदबाज ने की शाहिल ने। और उसकी बदौलत इस मैच में फास्टेक वॉरियर्स कुछ हद तक वापस आ चुका है। रिवर्स शॉट इस वक्त गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जाती है 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर 16 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में और 15 रन और चाहिए विजय के लिए। 15 to get from 16 deliveries. What a match is now going on here. The second match of the day 2 of Team Om Shakti Trophy 2021. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था ना, तो बढ़ता विकेट गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई। और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फीड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। It's 28 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Equal battle is now continuing here. ये गेंद इस बार गेंद को चिप कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए। एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स बनाना जरूरी बन चुका है इस वक्त यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के बल्लेबाजों को। और हर गेंद पर रन रोकना इस वक्त जरूरी बन चुका है। फर्स्ट एक वॉरियर्स के गेंदबाजों को यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा। और यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के बल्लेबाजों का जहां तक सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, हर गेंद पर इस वक्त रन्स बनाना उनके लिए ज़रूरी बन चुका है। और अब रन्स चाहिए
13, जबकि गेंदे बाकी हैं 13। ये गेंद ऑफ स्टंप पर बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। बल्लेबाज ने अपना बैकफुट लिफ्ट किया था आखिरी मौके पर, स्ट्रोक्स खेलने में चूके थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 29 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। अब मैं समझता हूं फास्ट ट्रैक वॉरियर्स इस मैच में काफी हद तक वापस आ चुका है। अब गेंदे बाकी है 12, जबकि रन्स चाहिए 13। तो 12 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए और बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। शाहिल इस वक्त अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार और ओवर की पहली गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें तो ओवर द विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप जब बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और आखिरकार रन इस 1 रन के साथ बढ़ चुका है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। अब 12 गेंदें बाकी है और 12 रन चाहिए विजय के लिए। 12 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स। शाहिल दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग कटर गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी इस वक्त, गेंद को इस वक्त ऑफ साइड पर खेलना चाहा विकेट से हटते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 11 गेंदें बाकी हैं, 12 रन चाहिए विजय के लिए और गेंद और बल्ले के बीच में ऐसा कहना पड़ेगा कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। शाहिल दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 10 गेंदें बाकी हैं, 11 रन चाहिए। 11 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। शाहिल एक बार फिर से फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के कप्तान फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शाहिल स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए नौशद और शाहिल की अगली गेंद नौशद के लिए। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, बेहतरीन तरीके की स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर द्वारा, सफल होते हुए गेंद को साइड पर मोड़ना चाहता और गेंद उनके पैरों के बीच से होकर सीधे निकली विकेट कीपर इजाज के हाथों में और इजाज ने बेहतरीन तरीके से इस विकेट को उन्होंने चटका दिया और स्टंप आउट के रूप में ये विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट नंबर 4। अब ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स गांधीनगर। पहले 2 ओवर में वो 22 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के गेंदबाजों ने अब अपना शिकंजा इस मैच में कस लिया है। 11 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी और निस्संदेह जहां तक सवाल है यंग फ्रेंड्स गांधीनगर का तो उन्हें जरूरत है एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त। इमरान नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 9 गेंदें बाकी है, 11 रन चाहिए विजय के लिए। अभिमता चैनल के जरिए यूट्यूब पर इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण इस वक्त किया जा रहा है, बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट। और जहां तक सवाल है इस मैच का तो ये मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है।
और गेंदबाज साहिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। Eleven of 9 balls. They have to score for victory. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ना चाहा था और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 10 टू गेट नाउ फ्रॉम 9 balls. स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। शाहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, लेग कटर गेंद थी और आखिरी मौके पर फॉलो थ्रू में शाहिल जब तक गेंद पर पहुंचे अपने बाईं और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। तो 1 रन इस वक्त मिलेगा। 33 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 9 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 8। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 8 रन चाहिए 7 गेंदों पर और अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। हर गेंद में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, बैकवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 35, 7 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। अंतिम ओवर बाकी, 7 रन चाहिए विजय के लिए और यहां पर देखना यह है कि ये अंतिम ओवर, मैच निर्धारित ओवर कौन गेंदबाजी करता है। अगला मैच, the next match, one more big match is now coming up. NM Mangalore will takes over Young Friends Urva in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. और पहली गेंद, इस बार गेंद को खेलना था, वाइड का इशारा और यहां पर 2 रन जुड़ चुके हैं यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के खाते में। अब एजाज ने गेंद फेंकी थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा और जहां तक सवाल है रनों का, 2 रनों के साथ अब इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर फॉर देम। 6 बॉल में 7 रन बनाने थे, अब बनाने 6 गेंदों में 5 रन। और इजाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी। अब 5 गेंदें 5 रन चाहिए, 5 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। तो अब देखना यह है कि गेंदबाज इजाज अपने अगली गेंद पर क्या करते हैं। फिलहाल डॉट गेंदें फेंक चुके हैं, एक डॉट गेंद इस ओवर में फेंक चुके हैं ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड। एंड नाउ 4 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। 3 एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं इजाज। स्वयं अपने आप से असंतुष्ट, नाखुश इस वक्त दिखाई देते हुए मैदान पर बैठे हुए हैं और टीम के अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए यहां पर
तो यहाँ पर विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका था और आखिरकार 38 रनों पर पांचवा विकेट गिर चुका। अब नए बल्लेबाज एरिस इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 5 गेंदों में चाहिए 4 रन विजय के लिए। डॉट गेंदों की सख्त दरकार गेंदबाज एजाज को, जबकि रनों की सख्त दरकार इस वक्त यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के बल्लेबाजों को। और एजाज फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, ये गेंद हल्के से हाथ से गेंद को खेला, शॉट थर्ड मैन पर और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। गेंद को अजीब और गरीब ढंग से खेलना चाहा था, लेकिन आखिरी मौके पर एक हाथ से जो कोशिश की थी स्ट्रोक को खेलने की, खेल नहीं पाए ठीक तरह से, टॉपेज पर गेंद टकराई और शॉट थर्ड मैन पर गेंद को लपक लिया गया। छठा विकेट गिर चुका है। 38 for 6 now, 4 balls remaining and 4 runs now they have to score for victory. What a match is now going on here. So if the match ended in a tie, winners will be decided by the comparison of the wickets. तो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 8 विकेटें फास्टेक वॉरियर्स ने खोए थे, जबकि अब तक यंग फ्रेंड्स गांधीनगर ने खोए विकेट 6। तो 4 गेंदों पर 3 रन अगर यंग फ्रेंड्स गांधीनगर बना लेता है बिना किसी विकेट खोए तो भी इस मैच में वो विजय कहलाएगा। लेकिन जहां तक सवाल है फास्टेक वॉरियर्स के गेंदबाजों का, तो उन्हें इस वक्त इन 4 रनों को बनाने से रोकना है गांधीनगर के बल्लेबाजों को। देखते हैं क्या होता है। 4 रन 4 गेंदें, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। एजाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव किया, चिप किया इनटू द गैप, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड की जाए। 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। खूबसूरत स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला था और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 40, 2 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 3। एजाज, यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर, निशाना चूक चुका है और इस 1 रन के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड। जस्ट अ सिंगल रन, यंग फ्रेंड्स गांधीनगर स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 2 balls। 2 गेंदें और सिर्फ 1 रन इस वक्त बनाने हैं यंग फ्रेंड्स गांधीनगर को। और अगली गेंद के लिए तैयार, यह गेंद चिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और इसी के साथ यंग फ्रेंड्स गांधीनगर रजिस्टर्ड अ थ्रिलिंग विक्ट्री बाय 4 विकेट्स अगेंस्ट फास्टेक वॉरियर्स with just 1 ball to spare in their innings, and with that victory they are through to the next round of this competition. So fantastic match ended, and now one more big match is now coming up, high voltage match. NM Mangalore will take over Young Friends Urva, and that match starts within just short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break. And we'll be back right after the short break with my friend Mr. Linus in English, when the next match will going to begin within just short while. Thank you. Dhanyavad. The next match will be played between Young Friends Urva
Young Friends Gandhinagar winning the match against Fast Track Warriors Bechpe. So Young Friends Urva are going to play against NM Cricketers. NM Cricketers won the first match of the day against KFC Kodikal. Now they're going to clash against Young Friends Urva. Man of the match, शादी का था मम्मी टाउल टॉस लाएंगे टॉस I request the captains of both the teams, sir, to mention the name of their 12th man. So I request both the captains to mention the name of their 12th man. That should be done before the toss. The match will be of 6 over the side. The first match was of 4. Momento. I request the captain of both the teams, Young Friends Urva as well as NM Cricketers, to report here at the pavilion for the toss. Sadiq is the man of the match of Sadiq of Young Friends Gandhinagar. He's the man of the match. So I request Sadiq of Gandhinagar to approach towards the pavilion upstairs to collect the man of the match award. So Sadiq receiving the man of the match by, beg your pardon, Sadiq receiving man of the match from umpire Suraj. Thank you Suraj, as well as Sadiq of Young Friends Gandhinagar for his batting display. He has been judged man of the match. So NM Cricketers are playing the second match. They won the first match against KFC Kodikal and they are going to clash against Young Friends Urva. It's going to be clash of the titans here at UCG Ura Cricket Grounds.
Young Friends Urva and NM Cricketers. The third match of the day. So NM Cricketers are fielding their same side that had won the first match. Both the teams have Young Friends winning the toss and opting to field first. So Young Friends Urva won the toss and we'll let you know what they have decided to. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ Start. Galinha gravou. So Young Friends winning the toss and opting to field first here in the third match of the day against NM Cricketers. This is going to be a cracker of a match, no doubt about it. And we request the players of Young Friends to take on the field as soon as possible. We are running out of time. We have to finish all the matches before the darkness fall. We have to finish all the matches, I repeat, before the darkness falls. That's the reason why I request all the players to cooperate with the organizers, every team to cooperate with the organizers so that we can finish all the matches in time. The two umpires officiating this match are Suraj and Suresh. They are making their way towards the middle and shortly the two openers are going to follow suit. ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತ 6-over side match. So Young Friends winning the toss immediately without a second thought. They decide to field first. Always when it comes to shorter version of the match under 10 overs, the team winning the toss opts to field first rather than bat first. When it comes to longer version of the matches, they just want to defend the total rather than chase down the total. There are few teams who have the ability to chase down big totals. When it comes to longer version of the match, and most of the teams, we can say 95% of the teams, as when it comes to shorter version of the match, they opt to field first rather than bat first. They like to chase down the total rather than defend the total. The all is set for the third match to commence. Zubir the bowler, and waiting for the two openers.
of NM cricketers to make their way towards the middle. Still they are waiting for the two openers of NM cricketers. The player now they are making their way towards the middle. The two openers, one wearing the jersey number 07, another one jersey number 11. They are making their way towards the middle. We have to wait and see who is going to take the strike of the very first ball. Zubair, the bowler. He has the ability to cut the ball either ways. He bowls at a very good pace, a decent pace. How effective he's going to be, you have to wait and see. It's a matter of time from here on. Zubair is the one who has been the principal bowler for young friends. Urva. Two teams bearing the same name are been competing in this tournament. Young friends Urva as well as young friends Gajinagara. So two teams bearing the same name are competing in this tournament. Young friends Urva, one of the top teams when it comes to shorter version of the match. Even they were the winners of the 44th year of the trophy. Waiting Vishal cricketers on this very ground, on this very pitch. So all is set for the very first ball to be bowled. The third match of the day. Young friends against NM cricketers. Clash of the Titans. Here at UCT Ura Cricket Grounds. Right arm of the wicket. Delivers. Does it powerfully over the head. All the fielder on side. Down to the deep wide ground region. And ball crossing over the boundary line. 4 runs. Magnificent start. Taking the ball to nicety. Look at the way he tried to loft that ball. Taking the advantage of that field restriction. Once the ball had gone over the head of the fielder. At short wideish ground region. 4 runs were written on it. 4 for the loss of no wicket. Beautifully struck. Picking the line and length to perfection. Getting underneath it. Up and over. And managed to hit it. One bounce into the fence. Down they had deep wideish ground region. Zubair is a bowler. Right arm out the wicket. For first 2 overs, he have only 2 fielders outside the 20-yard circle. That's the reason why. Drives it beautifully straight to the fielder at short extra cover. Who has been moved for the second delivery down there at short extra cover region. Santosh the fielder. And the ball was struck straight to the fielder for no runs. 4 for the loss of no wicket. Right arm out the wicket delivers. Drives it off the shot. We have to wait and see if the fielder out there. And the catch has been taken by the fielder. One of the 2 fielders out there in the deep. At long off region. Getting underneath it. Got the elevation. Unfortunately, he wasn't able to get the distance. First wicket down. 4 for the loss of 1 wicket. Asif is about a batsman back into the pavilion. Mansur. So Mansoor is the new batsman. Wearing the 77 number jersey. Is at the non-strikers end. They are crossed over. So he has to settle there at the non-strikers end. 4 for the loss of 1 wicket. Zubair to the left-hander. Bowling round the wicket. Trying to angle the ball. If he's going to angle the ball in flight onto the left-hander.
And off the pitch, if it's able to shape it away, pitching on the middle and leg stump, it's going to be a very effective delivery. It's not so easy, bowling round the wicket, shaping the ball away from the right-hander after angling the ball in flight. Off the pitch, you have to shape it away slightly. And if the batsman is going to miss it, it may knock the off stumps. It's a very, very effective delivery when it comes to any form of cricket. Right arm round the wicket, delivers. A beautifully bowled, angled it into the right hander, trying to play across the line. Look at the way he was trying to play, playing all over it and paying the penalty. Second wicket down, not disturbing the scoreboard operator. 4 for the loss of 2 wickets. Superb bowling, angling the ball in, and the batsman trying to play across the line, picking the wrong line and paying the penalty. 4 for the loss of 2 wickets. NM cricketers are in trouble after they lost the toss, asked to bat first against their rivals, young friends Urva. Four for the loss of 2 wickets. The new batsman making the way, wearing the 03 number jersey. We'll let you know the name of the batsman. Amir. Amir is the batsman. 4 for the loss of 2 wickets. What a start. Therefore, young friends Urva. Four for the loss of 2 wickets. 2 wickets in that over. One now. Asif lofted the ball right down that long off range and was caught there. And he's on hat-trick, right above the wicket, outside the off stump. Oh, that was sloppy fielding. Unfortunately, they want to come with a second. And look at the fielder behind the wicket keeper. He had to dive forward to field that ball, outstretching his hand. Instead of fielding that ball, he managed to palm the ball further down towards the deep third man region. And the fielder there behind the wicket keeper's right shoulder had to run back to his right hand side to field that ball, and that really helped the batsman to get a couple of runs. 6 for the loss of 2 wickets. Attack to wicket on the onside to a delivery staying down the leg side. That was the one. Zubair is the bowler. End of the over. 1 over has been bowled. 6 runs on the board for the loss of 2 wickets. 5 overs left. They have 1 over to go before the field distances are lifted. 6 for the loss of 2 wickets. The players of young friends are in a huddle. Just now, we have to wait and see who they are going to entrust the ball with. The bowler from the far end. Who's going to be the bowler? Wearing the 08 number jersey. Now we have to wait and see who the bowler is. Still, there's a discussion going on. I request the captain, my young friends, just not to waste time between the overs. So we want to finish all these matches before the darkness fall. Kiran the bowler. Zubair was able to get 2 wickets of the very first over he had bowled. And now Kiran the bowler to bowl to Mansoor. The left-hander bowling over the wicket to the right-hander Mansoor. 6 for the loss of 2 wickets. Left arm over the wicket. Kiran. Usually plays for Mangaldevi cricketers. He's the one representing young friends for this particular tournament. Right arm, left arm over the wicket. Bowls to Mansoor. 6 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Swings straight down the throw. Oh my goodness gracious me. He was very lucky. There was no power behind that shot. The fielder at long off region. Long on region, beg your pardon.
managed to just field the ball. This ball, you can see the ball landing 3/4 way towards the boundary line at long on region. The fielder was on the edge of the circle, edge of the boundary line, beg your pardon. He had to charge and he saw that ball was dipping onto him. No way he was able to get to that ball. I waited for the ball to ball, swinging it over the deep mid-wicket boundary for a maximum. Beautiful, picking the line and length to perfection and swinging it over the deep mid-wicket boundary. Beautifully struck. It was not only timed, but he was able to pick the gap as well. Superb shot in the air, in the flight, traveling at nautical miles and ending up beyond the deep mid-wicket boundary for a maximum. 13 for the loss of 2 wickets. Swings it again, straight down the throat. Straight down the throat of the fielder, a short wideish mid-on region on the edge of 20th circle. Santosh the fielder. It was traveling, but he managed to take that catch, grab that catch. It was on offer. 13 for the loss of 3 wickets. Just after hitting the six, going for another big hit across the line, wasn't able to keep the ball down, and finding the fielder and shot wideish mid-on region on the edge of the circle. Even though the ball was traveling, Santosh was the fielder out there, managed to take that catch quite comfortably and made it look easy. When the ball travels, it's not so easy, even if it comes straight down your throat to take that catch. It was traveling in the air, parallel to the ground, and managed to take that catch somewhere around his chest level, right in front of his chest to be precise. 13 for the loss of 3 wickets. Atif, the new batsman, playing for NM. Usually he plays for Young Friends, Urva. The 30-over side match. We had seen him play for Young Friends, Urva. Swifts it down. Van square on the onside, down to the back of square leg region. They go fun. They come for single. 2 fielders in pursuit. Fielder from right defense square as well as fielder from back of square leg. We had to run back from short back of square leg region, and we have to wait and see. Whether it had crossed the boundary line or not. Umpire just asking the fielder out there. I get the feeling that the ball might have rolled over. One of the fielders was trying to pull the ball back into the playing area, and now you can see the umpire making a rectangle box in the air to the third umpire just to give the decision whether it was a boundary or not, whether the ball was picked inside the boundary or whether it was just picked beyond the boundary line. This is what the third umpire has to decide. So I request young friends, only young friends players to sit there in the dugout. The rest of anyone who is sitting out there to move out of that dugout. The umpires out there, the on-field umpires have that 3D vision out there, but when it comes to the TV umpire, he has only 2D vision. 2D vision in the sense 2-dimension. Umpires on the field have that 3D vision, whereas umpires, the third umpire out there has a 2D vision of the proceedings. So it is 4 after the third umpire having a long look at that particular in slow motion incident, decided that
It is a boundary. 17 for the loss of 3 wickets. On-field umpires. If the third umpire doesn't come to a conclusion, he has to go by the decision of the on-field umpire. 17 for the loss of 3 wickets. Right arm, left arm over the wicket, delivers. Swifts it, down to the backward point range, fielder for short third man, runs across. A good piece of work by the fielder. He had to run around. That's not so easy. Managed to close in on the ball so quickly. Kiran was the one running across to his right. Pratap is not Kiran, who is fielding behind the wicket-keeper's right shoulder, diagonally outwards. Left arm over the wicket, delivers. Drives it along the ground, down the field and a short extra cover. Is out there. In comes the throw. At the non-strikers and the batsman managed to cross over. 19 for the loss of 3 wickets. 2 overs have been bowled. 4 more overs to be bowled. We have to wait and see what sort of target they're going to set for the opponents. Young friends Urva. Young cricketers, they have a very good bowling unit. NM cricketers. So even a score of 35 to 40, they are able to defend. Everything depends upon how young friends are going to fare. The batsmen of young friends are going to fare. Everything depends upon how they are going to bat in the first 2 overs. It's not so easy for both the sides out there. That's why I was saying that describing this encounter as a clash of the titans. 19 for the loss of 3 wickets. NM cricketers, they are the favourites. Young friends Urva, they are the favourites. So it's very difficult to say which team is going to emerge victorious in this tournament. Still early days here at UCG Ura Cricket Ground as far as the third match of the day is concerned. Drives it, but straight to the fielder at long off region for a single. Waits for the ball. That was a slow delivery, beg your pardon. And batsman waits for the ball at the last moment. Drives it down to the long off region for a single. There's no fielder out there, mid off region. And batsman at ample time managed to jog over for the single. 20 for the loss of 3 wickets. Right arm out the wicket. Why does beautifully bowled? Doesn't appeal, no appeal. Just straight away, you can say good piece of sportsman spirit shown there by Latif. Atif, beg your pardon. Didn't even wait for the umpire's decision. Umpire was just it wasn't so easy for the umpire. The vision of the umpire was blocked there by the bowler on his follow through. And moment the ball was caught there by the wicket keeper. You could see Atif. He was walking towards the pavilion. That was really very good sporting gesture there by Atif. Didn't even wait for the umpire's decision. Went for the drive. Ball just after pitching. Slightly deviating. There was deviation out there after the ball pitched. It shaped away slightly. Went for the shot. Went through the shot. Ball catching the outside of the bat and into the hands of the wicketkeeper. It goes. And wicketkeeper immediately raising his hand, holding the ball. But Atif was the one who didn't even wait for the umpire decision and he walked back towards the pavilion. 20 for the loss of 4 wickets. Shamir. 20 for the loss of 4 wickets. Shamir is the new batsman. Taking his own time to settle into his stance. Leaning over his bat. Zubir, the bowler, running away from us. First umpire, bowls. Beautifully bowled. That was the faster one. Managed to play it on the onside, closing the face of the bat. With a roll of his wrist. Down to the short wideish mid on Kiran the fielder. And they managed to cross over. Kiran had to move across to his right. That really enabled the batsman to cross over. 21 for the loss of 4 wickets. Drives it again straight to the fielder. Chance of run out. And the ball just stops into it. Oh, that was Kiran, instead of aiming at the non-striker's end, throwing the ball at the striker's end. I get the feeling that he should have gone for that stumps at the non-striker's end. 22 for the loss of 4 wickets. Drives it down. Again, one more run close. The score moves on to 23 for the loss of 4 wickets. They lost 4 wickets. They need a partnership here
of sorts. Resurrect the innings for the side. These two batsmen have to resurrect the innings for their side, revive the situation for the side, put the ship on the right track. Beautifully driven down to the deep extra cover region. They go for one. They come back with a second. And before the fielder from covers had to run around to pick that ball, the batsman had ample time to cross over for a couple of runs. 25 for the loss of 4 wickets. 3 overs have been bowled. 25 runs on the board. And over to Gopi to take it through to the end of the innings of NM cricketers. धन्यवाद लीनस। तो यहाँ पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ तक सवाल है टॉस का, तो यंग फ्रेंड्स उरुवा ने पहले टॉस जीता था और फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था। फलस्वरूप एनएम मंगलूर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर के समाप्ति के बाद एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आती हुई। और तो वहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त बन चुके हैं 25 से 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर शुरू होता हुआ और चौथा ओवर लेकर शरण ने इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए समीर सामना करने के लिए तैयार। मंसूर नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो शरण की ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट हमसे दूर वाले छोर से। मैच एक बेहतर मैच मंगलूर की 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच ये मैच यहां पर शुरू हो चुका है। आज सोमवार वर्किंग डे होने के बावजूद काफी दर्शक इस मैदान पर मौजूद इस मैच का मुआयना करने के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट ये गेंद मंसूर के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए तेजी के साथ दौड़ पड़े 1 रन पूर्ण करते हुए। इस बीच इससे पहले कि स्वयं शरण अपने गेंदबाजी पर आकर अपनी बाईं ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 27 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह कांटे का टक्कर यहां पर होता हुआ मंगलूर की 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच में। शरण की गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए और वहां पर फील्डर मौजूद और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। प्रताप फील्डर थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। यह गेंद ड्राइव किया मंसूर ने विकेट से हटते हुए मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ एनएम मैंगलोर। शरण की गेंद रिवर्स शॉट, इस बार गेंद को खेला अजमल, काफी स्क्वायर निकल आए थे लेकिन जब तक वो जाने कि गेंद उनके दाईं ओर से निकल रही है, गेंद निकल चुकी थी इस वक्त और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है। 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं और तीसरा रन चुराने के प्रयास में मंसूर का विकेट यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था बल्लेबाज समीर ने और जैसे ही रिवर्स शॉट खेलने के लिए समीर ने बल्ला घुमाया था, अजमल ने बाईं ओर दौड़े और आखिरकार देखा कि गेंद उनके दाईं ओर से निकल रही है। अपने आप को संभालते हुए जब तक वो गेंद पर पहुंचे गेंद उनको पार कर चुकी थी और जब तक लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के बाद मौका था 2 रन प्राप्त करने का। हालांकि विकेट गिरा तीसरा रन चुराने की कोशिश में और 31 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका। मंसूर की एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। 7 रन मंसूर ने बनाए और आखिरकार उनका स्थान ग्रहण करते हुए एनएम मंगलूर की ओर से प्रमुख बल्लेबाज सादिक का आगमन यहां पर होता हुआ। सादिक इस वक्त क्रीज पर मौजूद और जहां तक एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का सवाल है एनएम क्रिकेटर्स का, तो इस वक्त सादिक की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शरण की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद तक पहुंचना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 31 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स
NM cricketers looking in a good situation now after being losing the toss and putting to bat by young friends Urva in this high voltage match. They batted first. They managed to score 31 runs on the board for losing 5 wickets after their completion of first 4 overs. तो अरशद बाएं हाथ के गेंदबाज, उनको इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज समीर यानी अब्बू के लिए। और जहां तक समीर का सवाल है, इस वक्त एक बेहतर पारी वो अपनी टीम के लिए खेलते हुए 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अरशद की गेंदों का। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट। 31 पर ओवर की पहली गेंद, यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता समीर ने, लेकिन चूंकि थोड़े से सफल हो चुके थे आखिरी मौके पर और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। रन्स इस बीच रुक चुका है 31 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज समीर के लिए यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहता, चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी, 2 लगातार डॉट गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं बल्लेबाज समीर को और एक बेहतर शुरुआत एक गेंदबाजी के जरिए वो यहां पर कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट फाइन लेग, गली, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट इस वक्त मौजूद और इस वक्त अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज समीर के लिए यह गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन 1 रन मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड जब तक गेंद को बकअप किया जाता, डीप एक्स्ट्रा कवर पर बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर और अब सादिक स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक के लिए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फील्ड। ओह, मैं समझता हूं गेंद शमशों पर टकराई थी लेकिन बेल्स ऑफ नहीं हुए यहां पर। आखिरी मौके पर बाई का इशारा अंपायर द्वारा और देखना यह है कि यहां पर बेल्स क्यों नहीं ऑफ हुए, शायद गेंद स्टंप्स पर टकराई होगी इस वक्त और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए सादिक और आखिरकार स्कोर रुक चुका है, स्कोर बढ़ चुका है 33 रनों पर इस 22 के रन के साथ। और एक बार फिर से अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए समीर के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद समीर के लिए ऑन साइड पर स्विंग किया है, गेंद को खूब जोड़ते के साथ डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड, अजहर फील्डर थे और जब तक दोबारा वो गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थोड़े से सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया था इस वक्त इनटू द गैप, वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच और थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद अपने दूसरे प्रयत्न में अजहर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 35 रन बन चुके, 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अरशद एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है और इस बार चूक चुके हैं फील्डर और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। राजेश फील्डर थे वहां पर और आखिरी मौके पर तेजी के साथ उन्होंने गेंद पर लपकना चाहा और मिस जजमेंट की बदौलत गेंद उनके हाथों से छूटी और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जहां पर सिर्फ 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर राजेश की गलती की वजह से 4 रन यहां पर प्राप्त होते हुए एनएम मैंगलोर को और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 overs completed and NM cricketers are now looking in a good situation. 39 runs they scored for losing 5 wickets with average of exactly 7.80 runs per over and this is an absolutely good going on here for them. शरण अपना दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से यहां पर आरंभ करते हुए और सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दोपहर का वक्त 2:10 यहां पर बच चुके हैं और सूरज
ठीक आसमान की बुलंदी को यहाँ पर छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और धूप की तीव्रता काफी हद तक बढ़ चुकी है। लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान कल दाखिल हो चुका है, और यहाँ पर गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस वक्त करते हुए जो इस मैदान में काफी मात्रा में मौजूद हैं। और शरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी शरण ने, और आखिरकार ऑन साइड पर गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दो बेहतर गेंदें इस ओवर में सादिक को फेंक चुके हैं, और निस्संदेह इन दो गेंदों में कोई भी रन बनाने में असफल सादिक का बेहतरीन गेंदबाजी। और जहां तक स्कोर का सवाल है, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और इस वक्त गेंदबाज शरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रनअप में कुछ हद तक बाधा, और एक बार फिर से तैयार सादिक के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है शरण का, जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने पहले 3 गेंदों में प्रदान किए हैं, और निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन ओवर की प्रगति यहां पर करते हुए शरण। और इस बीच सादिक का कुछ उन्होंने समझाया स्ट्राइकर के बल्लेबाज समीर को कि बचे हुए गेंदों में उन्हें किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त करनी चाहिए, और दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर वापस लौट चुके हैं। समीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, शरण की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में क्रीज से बाहर जैसे ही निकले, विकेट कीपर ने मंसूर ने अपना करिश्मा विकेटों के पीछे दिखाया, विकेटों को चटका दिए तेजी के साथ, इससे पहले कि समीर अपना बल्ला बैट वापस क्रीज पर रख सके, और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यह ओवर गिर चुका है एनएम मैंगलोर का 40 रनों के योग पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। रिलवान का आगमन यहां पर होता हुआ, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, बेहतरीन गेंदबाजी, लगभग बल्ले के अति करीब, अति निकट गेंद टिप्पा खाते हुए, और बेहतर गेंदबाजी इस गेंद पर की शरण ने। 1 रन उन्हें मिलेगा, फॉलो थ्रू में खुद उनके द्वारा मिसफील्ड, बैकअप हुआ जब तक मिड ऑफ पर संतोष द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 41-41 एंड नाउ द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज शरण तैयार, सादिक का सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस अंतिम गेंद को फेंकने से पहले करते हुए गेंदबाज शरण, और अब तैयार सामना करते हुए सादिक का। उनकी पारी की अंतिम गेंद का तो जो शरण के जरिए इस वक्त फेंका जा रहा है। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। यह गेंद चिप गया एंड दिस कुड बी, इन फैक्ट इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री and he finished their innings in a style with a boundary.
इस बार गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया था, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, लेकिन दौड़ लगाने के बावजूद इस गेंद तक पहुंचने में सफल और चौके के साथ बेहतरीन तरीके से उनकी पारी की समाप्ति कर चुके हैं, उनकी टीम की पारी की समाप्ति कर चुके हैं सादिक। और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर एनएम बैंगलोर। दे फिनिश्ड विद 45 for the loss of 6 wickets in their stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 46 for young friends Urva. 46 they have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 runs per over the required run rate for them at this situation. With the help of 10 wickets they have to score for victory, and let's see can they reach the target or not. 46 they have to score in 6 overs. That means in their stipulated 30-60 leverage, with the help of 10 wicket they have to score, and their inning starts within just short while. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर चंद लम्हों बाद होगी, तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे सीनियर लिनस के साथ अंग्रेजी में, जब यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद, थैंक यू। Mana sana? Ijatji. Ai isi da puye. Dale pananda. Storage tank ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸಾರಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ Thank you, Gopi. 46 is the run they have to score. 46 they have to score in allotted 6 overs. It's not so easy for them against NM cricketers. Young friends of batsmen have to really bat well, especially for the first 2 overs when the fade restrictions are on. Ten runs more than the number of balls at their disposal. 36 balls at their disposal. 46 runs to be scored. NM cricketers have scored 45 runs in the allotted 6 overs. Hello. 46 is the target. The 2 openers out there in the middle are Santosh. He's at the striker's end. And at the non-striker's end, we'll let you know. Arshad. Catch in the end. 1 for the loss of 1 wicket. What a breakthrough. Therefore, NM cricketers. Arshad, the batsman, back in the pavilion. He had to just use all his power to hit the ball high up in the air rather than to clear the boundary. 1 for the loss of 1 wicket. 46 is the target. Young friends, wide of the crease, delivers. That ball staying down the leg side. We have to wait and see. Wide signal by umpire, 1+1. Mujib the bowler. 3 for the loss of 1 wicket. What a start there for NM cricketers, as it was in the first match against drives it down to the long on region. They go 1.
They managed to get a single. The ball was travelling at a very good pace to the fielder at long on. That really enabled the batsman to cross over for a single. 4 for the loss of 1 wicket. Santosh on strike. NM Cricketers alongside even Young Friends are one of the favourites to win this trophy. Young Friends Urva. When it comes to longer version of the match, they have got a better team. And when it comes to shorter version of the match, I personally feel that NM Cricketers have slight edge over Young Friends. 6 for the loss of 1 wicket. Young Friends are known for their batting skills when it comes to longer version of the match. 46 is the target. Six for the loss of 1 wicket. 40 runs required for victory. This being the first over. Unfinished first over is going on. Basid is the batsman. Wide of the crease, delivers, goes for a drive. Ball ricocheted off his leg. We have it and see. The throw was wide by the wicket keeper. Misfielding and resulting into no extra runs. Wicket keeper out there scrambling to his left hand side, turning around and blindly throwing it at the non-striker's end, wide of the stumps at the non-striker's end. But lucky there was no extra run out there. 7 for the loss of 1 wicket. Right arm of the wicket. Mujib, the bowler, from the pavilion end, wide of the crease, delivers, goes for that sweep shot. That was a perfect delivery for the sweep shot, which was bowled outside the off stump. Wide signal by umpire. If he was able to just get his bat onto it, ball would have easily gone down to the deep third man boundary for 4 runs. When the ball is bowled outside the off stump, it's easy for the batsman to go for the reverse sweep, to free his arms and go for the reverse sweep. When it's bowled in line with the stumps, it's not so easy. The batsman easily gets cramped for room and down the leg side, but that really doesn't help the batsman. He has to drag the ball when he plays the reverse sweep. He has to drag the ball from outside the leg stump onto the offside. 8 for the loss of 1 wicket. 46 is the target. 38 runs required for victory, to be precise, from here on. Santosh, the batsman. Mujib, the bowler. Down the leg side. That should be a wide. Sail, it was going down the leg side. We had the clear view of the ball going down the leg side, ending up somewhere on the 5th or 6th stump outside the leg stump. 9 for the loss of 1 wicket. And a word of advice there by one of the players there for Mujib. After bowling that wide, he has to be very careful. He can't bowl wide. They are defending a total of 45 runs for victory in 6 overs. 46, beg your pardon. Defending a total of 45 runs. So 46 is the target. For an outright victory, they have to defend a total of 45 runs. To be precise. Defending a target of 45 runs. First one. Target of 45 target. Just plays it down to short extra cover. A field of covers region and to run around to his right. Managed to off stump that ball. In the meanwhile, the batsman was able to cross over to a delivery outside the off stump. Just managed to dab it down to the vacant short extra cover region. The fielder for covers on the edge of circle had to move around to his right. And before that, the batsman had ample time. Santosh was the batsman. He managed to cross over. 10 for the loss of 1 wicket. 36 runs required for victory. Going for a try to a delivery outside the off stump. Ball billowing up in the air. So end of the over. 10 runs on the board. 1 over has been bowled. 46 runs on the board. Ten for the loss of 1 wicket. 1 over has been bowled. 5 more overs to be bowled. 30 possible deliveries, and they require 36 runs for victory. From here on, Young Friends Urva, hailing from Urva, NM Cricketers hailing from Jaipur. Santosh the batsman. And now, a lot of time is wasted between the overs. We have to finish so all the matches before the darkness fall.
So I request the players of Vietnam cricketers to go through their overs as quick as possible. 10 for the loss of 1 wicket. 46 is the target. This being the third match of the day. The winners of this particular pool are going to clash against friends Murshid in the finals. That will be the ultimate match of the day. The finale. Santosh the batsman. Atif the bowler. Atif making his way towards the far end. He's going to bowl. Atif usually plays there for young friends. And today he's playing for Vietnam cricketers. Atif, one of the all-rounders there in underarm cricket. He opens the innings as well as the bowls, opens the bowling. He's one of the few bowlers where one of the few cricketers, you can say, as far as underarm cricket is concerned, who opens the bowling as well as batting. 10 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. From the Matatagani end. To bowl to Santosh. Trying to play that cross-batted shot. Was beaten. To a delivery outside the off-stump. That was bowled at a very good pace. It's not so easy for the batsman when the ball is bowled at a very good pace. Pitching outside the off-stump. Trying to hit it across the line. It's not so easy for any batsman out there. The bowler is bowling at a very good pace. And look at him. All on the surface. Going for a reverse sweep. White signal by umpire. 1+1. The score moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Going for the reverse sweep. Before he was able to hit that ball had already passed his bat. The wicketkeeper was unable to correct that ball. It was far down the offside. And the fielder just behind the wicketkeeper's right shoulder, diagonally outwards, was able to field that ball. And that really enabled the batsman to cross over. Webster obviously wicketkeeper safe down to the deep. Oh my goodness, fumble there, but no extra runs. Straight to the fielder. That was travelling in the air. 3/4 away. Down to the long on boundary. The fielder on the hedge boundary had to charge in. But he was able to field it not before the ball had bounced before him. Across the line, that will be a 6. Really well stuck. It's a 6. Picking the line and length to perfection and swinging it over the deep mid-wicket boundary for a maximum. Superb shot. Ball catching the low meat of the bat. And then you can say, once you pick the line and length of the ball early, it's easy for the batsman to execute that shot to nicety. 19 for the loss of 1 wicket. Superb shot by Santosh. The score jumps on to 19. Santosh is the batsman. 46 is the target. Right arm over the wicket. Atif the bowler. Atif, right arm over the wicket, delivers. Going for a sweep shot, behind the square on the offside. The fielder right in front of square at cover point there to run around to his left. And the batsman crossover. 20 for the loss of 1 wicket. 26 runs required for victory. And this happens to be the second over and the last over before the fielding sixes are lifted. Draws it through that vacant mid-on region, down to the deep mid-on region. The crossover for a single. 25 runs required for victory. 25 deliveries, 25 runs. It should be an easy proposition as far as chasing that run, chasing 25 runs at 25 balls. But cricket is a game of draws it beautifully. That will be 4 runs. Down to the long on boundary. Beautiful slap. Big fielder from deep mid-on region was just a mere spectator. It was driven at the ball was travelling at a very good pace. No way the fielder from deep mid-on was able to get to that ball. 15 runs were scored of that over. 25 for the loss of 1 wicket. 2 overs have been bowled. And what a start it has been for young friends. It has been a dream start. Rollicking start there for young friends.
15 runs by score of that over. And I get the feeling that it is Santosh who is firing here at UCG Ura cricket grounds. In 2 overs, they managed to score 25 runs. They're scoring at the rate of 12.5 runs per over. Can you believe it? Against number 1 bowling side in underarm cricket, NM cricketers. Bowlers have been made to look like mere pedestrians here at UCG Ura cricket grounds. Making mincemeat of the bowlers, especially Santosh. 25 for the loss of 1 wicket. Tanveer. Basit the batsman. Bulk of the runs have been scored there for Santosh. Left arm round the wicket. Wide down the next side. Chance of run out. The ball was thrown at the striker's end. It should have been thrown at the non-striker's end. And look at the fielder out there as he was managed to throw the ball, but he was down on the ground, lost his balance, and he was down on the ground. He was fielding there behind the left shoulder of the wicket keeper. 27 for the loss of 1 wicket. "19 down the leg side." This is not good bowling. Absolutely a crime to bowl wides at this juncture. Bowler bowling round the wicket to the right-hander, angling the ball down the leg side, bowling it diagonally across the pitch. Down the leg side it goes. This is something rusty bowling. It can be described as rusty bowling. 29 for the loss of 1 wicket. They are cruising along here at UCG Ura cricket ground. Young friends, Urva, against one of the top teams in underarm cricket, NM cricketers. Left arm round the wicket, delivers. Again to a delivery just there inside that guideline. The guideline belongs to the umpire. Trying to play that ball, square the wicket on the offside. He was comprehensively beaten. Basit. Space it beautifully, reverse sweeping it, ball running out the boundary. They go for 1, they come back in the second, and the ball racing down to the boundary for 4 runs. Down to the square deep third man boundary. Superb shot. Managed to just give the ball the direction. The ball was travelling at a very good pace. The bowler had bowled that ball outside the off stump, giving the batsman enough room to just free his arms and go for the reverse sweep. And all he had to do was to give the ball the direction. 33 for the loss of 1 wicket. Drives it down to the fielder. 3/4 away down to the deep cover region, beg your pardon. And in comes the throw at the striker's end, not before the batsman crossover. 34 for the loss of 1 wicket. 46 is the target. Left arm round the wicket, delivers. Works it beautifully. This is how we have to bat. Whips it off his toes, closing the face of the bat. With a roll of his face to a delivery which was just in line with the off stump. Managed to play. That was a risky shot by Santosh. Using his wrist, especially his bottom man, as he tried to play that ball on the onside. He managed to play that ball on the onside. Down the leg side, reverse sweeping it, ball racing down to the boundary. Deep fine third man. They go for 1. That's all they indicate. Good piece of work by the fielder. Was fielding there, square the wicket on the offside. On the edge of the circle, he had to run back. It wasn't so easy for him, but he was able to close in on the ball and restrict the batsman for a single. 36 for the loss of 1 wicket. They're trying to finish this match in double quick time. Straight down the fielder at deep mid wicket. Ball was travelling in the air. And there was no power behind the shot. It was really a blessing in disguise. If there was power behind the shot, ball would have gone straight down the throat of the fielder. Atif, the fielder, was fielding there at deep mid-wicket region. 37 for the loss of 1 wicket. And these two batsmen have decided to finish this match in double quick time. 3 overs have been bowled, 37 runs on the board for the loss of 1 wicket. And over to Gopi for further description of the match and take it through to the end of this match.
धन्यवाद Linus. So young friends Urva are now looking in a commanding situation. 37 for the loss of one wicket, and what a terrific batting performance coming here from Santosh and Basit. और इन दोनों की मदद से यहाँ पर कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा यहाँ पर दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप. 36 रन स्कोर्ड फॉर द सेकंड विकेट so far. पहला विकेट गिरा था 1 रनों पर अरशद का, गोल्डन डक के रूप में आउट हुए थे 0 पर. उसके बाद संतोष और बासित पारी की भागदौड़ को संभालते हुए एक बेहतर साझेदारी निभाते हुए अपने टीम को विजय के द्वार पर लाकर खड़ा कर चुके हैं. अब 9 रन चाहिए 18 गेंदों पर. लक्ष्य काफी आसान न दिखाई देता. वह चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर समीर फुल टॉस पुल किया इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और 2 रन यहां पर मिलेगा जरूर. और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. He just played that one with a twisted bat just over the gully fielder's head and got that one for a couple run. 39 7 रन चाहिए 17 गेंदें बाकी. समीर इस वक्त तैयार. ये गेंद स्टीयर किया, फाइन नहीं, गेंद को फील्ड कर लिया गया शॉर्ट थर्ड मैन पर. 20 गज के दायरे के अंदर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 40-40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. व्हाट अ ट्रेमेंडस पार्टनरशिप इज नाउ गोइंग ऑन हियर फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा. 6 रन चाहिए सिर्फ विजय के लिए, और समीर बासित के लिए यह गेंद उछालना चाहा. बेहतर गेंद थी इस वक्त. सीधे गेंद शफल होते हुए गेंद कॉन्सर्ट पर उछालना चाहा, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए चूके, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. सिर्फ एक छक्के की जरूरत इस वक्त विजय के लिए यंग फ्रेंड्स उर्वा को, और गेंदबाज समीर इस वक्त तैयार. ये गेंद स्वीप किया शफल होते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद हैं. एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका. आज वर्किंग डे सोमवार होने के बावजूद ये गेंद हल्के से स्टीयर किया, गेंद को बैकफुट पर जाने के बाद सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए संतोष, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर. 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड दिस इज द 4th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. What a fantastic progressing year for young friends Urva now. Just 4 to get 4 victory. और ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद बासित ने डीप कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के इजाफे के साथ 4th ओवर has been completed. 3 to get now from 2 overs with the average of exactly 1.5 runs per over, and at this situation the target seems to be much easier for them. तो सादिक का खुद इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, और 3 रन चाहिए, और अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा बासित ने, चूके जरूर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 11 गेंदें बाकी, रन से चाहिए सिर्फ 3. 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और अगली गेंद, ये गेंद इस बार बासित ने गेंद को स्विंग किया सीधे सरफराज के हाथों में वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, और बासित की बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है. 11 रन बासित ने बनाए एक चौके की मदद से, लेकिन एक बेहतरीन साथी के रूप में उन्होंने निभाया संतोष का, और अपना किरदार बाखूबी अदा करने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए. 10 गेंदें बाकी हैं, सिर्फ 3 रन चाहिए विजय के लिए. राजेश का आगमन यहां पर होता हुआ, और सादिक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट राजेश के लिए. निस्संदेह बिल्कुल एक तरफा मैच होता हुआ यह मैच, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए सादिक के वाइड का इशारा. 44 नाउ, जस्ट 2 to get 4 victory in 10 balls, और सादिक एक बार फिर से तैयार.
एक बार फिर से वाइड का इशारा और इस एक रन के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. Just a single run they have to score for victory in remaining 10 balls. Off stump se bahar, that's it. He finished the match with a hat-trick wide. So comprehensive victory for young friends Urva by 8 wickets with the 10 balls to spare in their innings. Defeated NM Mangalore, and with that victory they are through to the next round of this competition. तो इस मैच को बासित और संतोष ने जिताया है. तो बासित और संतोष के लिए यहां पर एक नगद पुरस्कार घोषित किया गया है. 1,000 रुपए दोनों बल्लेबाजों को 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है यंग फ्रेंड्स उर्वा के मंसूर द्वारा. और निस्संदेह एक बेहतरीन बल्लेबाज है और मैं दरख्वास्त करता हूं संतोष और बासित से कि वो यहां पर कमेंटेटर बॉक्स पर आए और 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार दोनों प्राप्त करें. They will rewarded 1,000 rupees each for winning the match for Santosh and Basit, declared it by Mansoor of Young Friends Urwa. And I request Basit and Santosh, please come on to the commentator box and receive the cash prize of 1,000 rupees each. So congratulations for them. And also the man of the match award goes to the man who hit a brilliant knock of 18 runs. He scored 18 runs unbeaten into his credit, including 1 6 and a boundary. And because of that, he adjudged man of the match. He is adjudged the man of the match. और यहाँ पर 1,000 रुपए का और नगद पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया गया है. तिलक गुरु यंग फ्रेंड्स उर्वा के जो कि ओनर है, मालिक है, उनके द्वारा 1,000 रुपए का और नगद पुरस्कार घोषित किया गया है संतोष और बासित के लिए. कुल मिलाकर दोनों बल्लेबाजों के लिए 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर घोषित किया गया है. बेहतरीन बल्लेबाजी. मैं दरख्वास्त करता हूं कि संतोष और बासित कमेंटेटर बॉक्स पर आए और जो 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है तिलक गुरु और मंसूर द्वारा, कृपया यहां आकर अपने इनाम को स्वीकार करें. So thank you very much. ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯಿಬಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ತಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್.
fourth, Clear win the toss. The next match will be played between Star Samrat Kunjasbel and Blue Boys Ulabeto. I request both the teams to be in readiness. So Star Samrat winning the toss and opting to field first. Hello. Mic testing 1 2 3. Hello. The Star Samrat have won the toss and they have elected to field first. Blue Boys Ulabetu are going to bat first. They are in a huddle right in front of the pavilion. So we want both the captains to enable the organizers to start the match as soon as possible. Captains of both the teams, Star Samrat and Blue Boys Ulabetu. So this being the fourth match of the day. So far 3 matches have been played. And you're waiting for the 2 openers of Blue Boys cricketers. 5 overs a match. This is going to be a 5 overs match. First 5 overs match, due to time constraint, it has been reduced by 1 over. One bowler can bowl 2 overs and rest of the bowlers can bowl 1 over each. Minimum of 4 bowls have to be used. As far as the playing conditions are concerned, only 2 fielders are allowed to field outside the 2 fielders are allowed to field outside a 20-yard circle for the first 2 overs. 2 overs. There will be a power play of 2 overs. Is it power play of 2 overs? I request the batsman of Blue Boys to make their way towards the middle. We are already late out here. We are running out of time. We are beyond schedule time. So I request both the teams to cooperate with the organizers. Bowler Harris the bowler. Left-hand bowler Harris is bowling to. Now we have to wait and see 2 openers out there. Deepak at the striker's end. He's the left-hander. And at the non-striker's end. Naufal is at the non-striker's end. All is set for the 4th match of the day to commence. Organized by Team Om Shakthi. Both the teams are playing for the trophy, Om Shakthi Trophy 2021. Five-over-side match. The first 5-over-side match. Previous 3 matches were of 6 over the side. And now this being the first 5 overs match. Harris the bowler. To bowl to the left-hander. Left-hander to the left-hander. Over the wicket. The very first ball of the match. Right arm over the left arm over the wicket. Dash powerfully down to the long off region. They go for 1. And straight to the fielder. There's a fielder out there. And the batsman cross off for a single. 1 run across. The very first run on the board. 1 for the loss of no wicket.
Right arm, left arm over the wicket. Delivers. How far outside the offside batsman managed to drop it down to the point region, cover point region, beg a pardon. Almost very close to covers and set off for the single. Very good running between the wickets. Umpire, warning thereby the umpire for the bowler running on the pitch. He has to be very careful as far as the rules are concerned. He can just walk down the pitch from the popping crease, 5 feet down the pitch from the popping crease. Anything beyond that on his follow through will be the protected area. He will be penalized for that. That is the bowler bowling over the wicket. It's better for him to bowl after bowling to move down the right side rather than to his left side. Plays it beautifully, whips off his leg down to the square leg region, right in front of square. They go for one, they come for the second. The throw wasn't good enough. They was looking for the relay throw, and that's the reason why the batsmen were able to cross over the single quite comfortably. 4 for the loss of no wicket. Superb running between the wickets. It was played right in front of square on the onside. Beautifully played, waiting for the ball to come onto his bat, closing the face of the bat, down the leg side, far down the leg side, and they set off for a single. Wide signal by umpire, far down the leg side. No way the batsman was able to get that ball, despite of the fact he had swung his bat. No way he was able to get that ball because the ball was far down the leg side. 6 for the loss of no wicket. Left arm over the wicket. Bowls. Swings. Oh, that was a strong sweep down to the boundary. It goes right in front of square. Very close to the mid wicket region. They go for one. They come back the second. And that was in the end they managed to get 2 runs. It was a really good combination out there. Combined effort there by the 2 fielders who were in pursuit of the ball. One of the fielders just picking the ball, just underarming the fielder who was very right behind him, and he managed to throw the ball. Beautifully played down to the boundary. She goes 4 runs, reverse sweeping it just past the field, right at the 20-yard circle behind square at short third man agent. There was no protection whatsoever once the ball had gone past him. 12 for the loss of 1 over. What a over it has been. 12 runs have been scored of that over. Very, very productive over as far as batting is concerned. 12 runs of that over. It's a 5-over side match. One more over before the field restrictions will be lifted for a play of 2 overs. Even though the match has been reduced to 5 overs from 6 overs, the power play of 2 overs stays. But only 1 bowler can bowl 2 overs. If it was 6-over side match, 2 bowlers could bowl 2 overs each. But since it is a 5-over match, only 1 bowler can bowl 2 overs each. 1 bowler can bowl, beg your pardon, 1 bowler can bowl 2 overs. 12 for the loss of no wicket. 1 over has been bowled. 12 runs on the board. Very good start as far as batting is concerned. The left and right hand combination is working here for Blue Boys. And Samrat cricketers, after winning the toss, opting to field first so far. They haven't been able to justify the decision after the end of the first over. Far down the leg side. That's a wide. That's a wide. Wide signal by umpire. No way the batsman was able to get to that ball. 13 for the loss of no wicket. He was very lucky. The ball was travelling towards the fielder behind the wicketkeeper at a very good pace. If the wicketkeeper out there wasn't able to just move quickly to his right hand side to stop that ball. He should get his body right behind the ball and move, and when the ball is halfway down towards the batsman accordingly. This is what the wicketkeeper has to do. Wide signal by umpire. Second consecutive wide. 14 for the loss of no wicket, and batsmen have been scoring without any effort. No effort whatsoever by the batsman, especially in this over. Drives it, edging it in line with the popping crease on the offside. Ball catching the toe end of the bat. 15 for the loss of no wicket. Only 1 fair delivery has been bowled so far in this over. 15 for the loss of 1 over. To be precise, 15 for the loss of 15 for the loss of 7 deliveries.
15 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Asim the bowler. Almost beautifully played down to the deeper. Mid wicket and to go for one. Wanting a good piece of work. Good piece of work by the fielder. Running quickly to his left hand side. He was fielding somewhere between deep square leg and deep mid wicket. Very close to the deep square leg region. But managed to close in onto the ball so quickly that he was able to restrict the batsman for a single. 16 for the loss of no wicket. Just that I plays it behind square on the onside. And trying to play. And the batsman has been judged leg before wicket. Is back into the pavilion. 1 wicket down. 16 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Goes for a drive. That was a very good delivery. Lucky for the batsman. He wasn't able to make contact. Ball missing the stumps by Whisker. Beautifully bowled. Asim to bowl to Karna. Right arm over the wicket. Delivers. Karna just trying to work it on the offside. Ball edging it. Almost behind square. There's a ball was. For a moment it looked like the bat was in the air. It wasn't so. And that umpire just making a rectangle in the air, box in the air, and gesturing to the third umpire to give the decision. Third umpire. Not out, says the umpire. Third umpire. Just there was for a moment it looked like the bat was in the air, but it was grounded when the stumps were broken. 17 for the loss of 1 wicket. 1 over has been bowled. Second over is going on. Now for the batsman. Asim the bowler. Right arm over the wicket. Bowls to Naufal. Draws it rubbishly, was saved down to the boundary. It goes down to the long off, just past the mid off fielder. They go for one, misfielding, resulting into an easy double. Just past the fielder at mid off region. The fielder at long off region had to almost long on region had to run across to his left. But as he was throwing the ball slipped off his hand, and that's the reason why the second run was possible. 19 for the loss of 1 wicket. 2 overs have been bowled. 19 runs have been scored. 9 wickets in hand. 3 more overs to be bowled. The field restrictions have been lifted here at UC Jura Cricket Grounds. Now the skipper of the fielding side has the liberty of spreading out the field. He can have 5 fielders outside the 20-yard circle.
So 19 for the loss of 1 wicket. The third over to be bowled. And the bowler. And third bowler has been introduced. Shahrukh the bowler. Is going to bowl to Karna. Now Fall is at the non-striker's end. This being the fourth match of the day. The two teams out there clashing against each other are Star Samrat and Blue Boys Ulapeto. The Blue Boys Ulapeto are batting first. Samrat winning the toss. They had opted to field first. (19) for the loss of 1 wicket. Shahrukh bowls. Plays it just past the bowler. The bowler starting at a very slow pace. There was no fielder at mid-off region. And the fielder at short extra cover had to move across to his right. And that enabled the batsman to cross over easily. Jog over easily for a single. There was no power behind that shot. The ball was trailing, almost rolling across towards the short mid-off region. Beautifully played. Just you can see the ball. Batsman, which was delivered outside off stump, managed to just dab it behind square on the offside. And you could see the toe of the bat pointing towards the direction the ball was played. 21 for the loss of 1 wicket. Shahrukh bowls to Karna. Right arm out the wicket, running away from us. Bowls. Switch the ball, obviously safe down to the square leg region. Just past the square leg umpire. There's a fielder right in front of square. In the deep, had to run across to his right. And the batsman had ample time to cross over. 22 for the loss of 1 wicket. Very good start there by Blue Boys. Shahrukh bowls. Drives it, obviously but safe. Down to the fielder. A deep mid-off region. 1 run cruise. The score moves on to 23 for the loss of 1 wicket. The third match was won quite convincingly there by young friends. Urva beating one of the top contenders, NM cricketers, fairly and squarely. NM cricketers were done and dusted there in that match. Never looked like winning that match. Young friends Urva winning that match in double quick time. 24 for the loss of 1 wicket. Right arm out the wicket delivers. Beautifully bowled. Beautifully bowled. Look at the batsman. Wasn't able to get his front foot to the pitch of the ball. He tried to push that ball and wasn't able to get it. Ball just shaping away from his bat, beating the outside edge of the bat into the hands of the wicket keeper. 24 for the loss of 1 wicket. 3 overs have been bowled. And over to Gopi for further description of the match. धन्यवाद लिनस। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ ब्लू बॉयज उलाइबट 24 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और 2 ओवर का खेल यहां पर बाकी और एरिस इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए करना और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। कुल मिलाकर आज का चौथा मैच, 4th मैच ऑफ द डे यहां पर खेला जाता हुआ इस टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021 के अंतर्गत। और बाएं हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, स्वीप किया, गेंद इस वक्त हवे में, लेकिन फील्डर थोड़े से सीधे मौजूद। जब तक डीप स्क्वायर लेग पर, डीप फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा
और 22 का इशारा सिर्फ, और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू और एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ करना। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं एरिस, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा, अपने एक हाथ से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर और इससे पहले कि गेंद को यहां पर फील्ड किया जाता, स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। रन से आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू के लिए। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, एरिस गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार फाइन निकल चुकी है गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है इस वक्त। मेरे ख्याल से लेग बाय के रूप में यह चौका यहां पर जुड़ चुका है, हालांकि कोई इशारा अंपायर द्वारा नहीं आया था, लेकिन चौका गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद निकली थी इस वक्त विकेट कीपर को बीट करने के बाद फाइन डीप थर्ड मैन फील्डर जो शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर जो शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए थे उनकी दाईं ओर से गेंद निकली फाइन 4 रनों के लिए। ये गेंद हल्के से रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया आखिरी मौके पर, और इससे पहले कि गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 1 बॉल टू गो, 34 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू। और जहां तक स्टार सम्राट कुंजत बैल का सवाल है, इस वक्त उन्हें जरूरत है एक बेहतर गेंदबाजी की, और गेंदबाज बाएं हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs with the run rate of exactly 8.5 runs per over scored by Blue Boys Ulai Bettu. And now in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021-2021 और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट अभिमता चैनल द्वारा यूट्यूब पर इस वक्त किया जा रहा है। और कुल मिलाकर कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए सलाम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू की पारी में 6 गेंदें बाकी, करना सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसी के साथ 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 35 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। इस बार it's gone for a maximum into the wall of deep back on a third man for 6. नौफल के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। फुल टॉस गेंद and he's hammered that one with a twisted bat over deep back on a third man for 6, and that is an absolutely perfect struck came from the bat of Naufal. बेहतरीन स्ट्रोक तिरछे बल्ले के सहारे फुल टॉस गेंद को कनेक्ट करते हुए एक्सक्विजिट फुटवर्क के साथ गेंद को उछाल दिया डीप बैक और थर्ड मैन के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर से डीप थर्ड मैन पर 4 रनों के लिए। इस बार स्क्वायर गेंद को उछाला था और थर्ड मैन पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को रोक नहीं पाया और गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ उनको बीट करती हुई निकल गई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 45 रन बन चुके हैं। 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ब्लू बॉयज Ulai Bettu looking in a commanding situation now. और गेंदबाज काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। सलाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद। कुल मिलाकर
दो गेंदें अब बाकी हैं उनकी पारी में. जस्ट 2 balls now left in their innings. और सलाम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौफल के लिए इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा. थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली. वाइड का इशारा. 1+1 2 runs now added to the total. सब कुछ इस वक्त ब्लू बॉयज उलाई बिट्टू के पक्ष में चलता हुआ और निस्संदेह एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ ब्लू बॉयज उलाई बिट्टू. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. सलाम करना के लिए ड्राइव किया विकेट से हटते हुए. सिली मिड ऑफ पर एक रन मिलेगा. 48 नाउ. लास्ट बॉल ऑफ द रिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज सलाम तैयार. नौफल ऑन स्ट्राइक. नौफल स्ट्राइक लेते हुए और सलाम ओवर और ब्लू बॉयज उलाई बिट्टू की पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार. इस बार lofted into the long off fence and he finished the innings in a style with a 6. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one over long off fence. And with that 6, the scoreboard is now rising up to 50 past mark. 54 for the loss of 1 wicket after their stipulated 5 overs. And now Blue Boys Ulai Bettu set a huge target of 55 for Star Samrat Kunjat Bail. And as far as the required run rate is concerned, exactly 11 runs per over they have to score for victory. 55 रनों का लक्ष्य इस वक्त तय कर चुके हैं ब्लू बॉयज उलाई बिट्टू स्टार सम्राट क्रिकेटर्स कुंजत बैल के लिए. और देखना है कि इन 55 रनों तक पहुंचने के लिए स्टार सम्राट के बल्लेबाज कौन सी रणनीति टैक्टिक्स यहां पर अपनाते हैं. 55 द टारगेट फॉर देम in 5 overs set by Blue Boys Ulai Bettu for Star Samrat cricketers Kunjat Bail. And their innings now going to start. और उनकी पारी की शुरुआत चंद लम्हों बाद यहाँ पर होगी. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे सीनियर लीनर्स के साथ जब स्टार सम्राट क्रिकेटर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. The Star Samrat, thank you Gopi, Star Samrat have to score 55 runs for victory in 5 overs. It's not an easy target, very uphill task, enormous mountain to climb from here on. 55 runs in 30 possible deliveries is not so easy. Exactly 11. And for 11 runs per over, it's not an easy task, very uphill task therefore. Star Samrat cricketers. 55 runs in 5 overs means it's a very good score. Blue Boys, it was really a blessing in disguise for Blue Boys to lose the toss and they were asked to bat first. The bowling, especially of Star Star Samrat, was rusty. Just because of their rusty bowling, Blue Boys were able to score 54 runs in 30 possible deliveries in 5 overs, 5 allotted overs. 5 overs they had at their disposal and they made maximum use of those 5 overs, scoring 54 runs. 55 runs is the target. The very first ball, umpire signaled the start of the innings of Star Samrat cricketers. And Blue Boys are going to bowl. Right arm over the wicket.
Nasir, the batsman, to a delivery outside the off stump. He was trying to swing his bat, beaten on that occasion. It was within the reach of the batsman. Just trying to swing his bat without moving his feet whatsoever. Trying to play with that horizontal bat of his, was comprehensively beaten. Fayaz, the bowler, from the pavilion end. Again, the delivery bowled at a very good pace outside the off stump. It was again within the reach of the batsman. The batsman, had he had shuffled across, he would have been able to get to that ball. He tried to play from close to his body instead of just swinging his bat like a baseball batter. Right arm over the wicket, delivers. Nazir drives it, doesn't get hold of it properly. The try and he managed to cross over for a single. Going for that shot, powerful shot, wasn't able to get to that, wasn't able to hit that ball powerfully. And the ball just ending up down there, had the short mid-on region, vacant short mid-on region. And before the fielder out there, a short wideish mid-on region could scramble across to his left to field that ball. The batsman had ample time. The left-hander on strike, Harris. Fayaz, the bowler, bowling now round the wicket, trying to angle the ball into the left-hander. Harris, the bowler. The fielder out there behind the wicket keeper as the bowler was trying to bowl. He can't move sideways. He can move forward, but he's not allowed to move sideways. He was moving towards his left-hand side as the bowler was running into bowl. This is totally uncalled for. The swift at top wicket, reverse swing it. Oh, the catch has been taken. It's not an easy catch. Oh, just look at him. He was running back almost sideways and managed to take that one-handed catch to a delivery which was chipped over by the batsman. Almost, there was a fielder out there, short cover region, almost, I beg your pardon, square leg region. He had to run back almost sideways to take that catch, 3 or 4 steps, and managed to take that catch quite easily. It wasn't so easy. And I get the feeling the ball might have stuck into the palm of his hand. 1 for the loss of 1 wicket. Trying to sweep that reverse. Going for the reverse sweeper and paying the penalty. That was at point region, beg your pardon. The left-hander was on strike. That's the reason why the left-hander goes for the reverse sweep and plays it on the offside. So I was totally confused on that occasion. It was to the fielder out there at right in front of point on the offside. 1 for the loss of 1 wicket. Right arm out the wicket, delivers. Drives it down to the deep extra cover. Ball travelling down in the air, 3/4 away. Then the fielder at deep extra cover. This is not the way to run. This is not the way to run. He was struggling as he was running towards the striker's end. Easy couple of runs. And look at the batsman out there as he was running towards the striker's end. He was really struggling out there. 2 for the loss of 2 wickets. He could have easily made it. It was driven in the air, ball landing 3/4 away down the deep extra cover boundary. There was a fielder out there, managed to field the ball off the second bounce, and both the batsmen had enough time to cross over for a couple of runs. Nasir was the batsman who was really struggling as he was running towards the striker's end. The throw wasn't good enough. It wasn't over the stumps, and he would have been easily able to get there if he was really quick. A couple of yards quick. 2 for the loss of 2 wickets. What a start there for Blue Boys. After scoring 54 runs, batting first. 55 is the target. Now it's getting tougher and tougher as every ball passes by. Does it, doesn't get hold of it properly. Ball ending up square, the wicket on the offside. There's a fielder out there behind square. And end of the over. 3 for the loss of 2 wickets, and what a over it has been there by Fayaz. 2 wickets down, 3 runs on the board, chasing a score of 55 runs is not going to do any good there for the team that is chasing a score of 55 runs for victory. That's his juncture after losing 2 wickets in the very first over with only 3 runs on the board.
Three for the loss of 2 wickets. 1 over has been bowled. 55 runs is a target. It's not an easy target to chase even against mid-order bowling. Answer bowler. If the bowlers are going to bowl to their field, things are going to be really difficult for the batsman. It's not going to be easy for the batsman. Right arm over the wicket. Answer the bowler. Plays it behind square, behind just past the wicket keeper. Leg by. That was off the leg of the batsman. Just past the wicket keeper. 2 fielders out there behind the wicket keeper. One behind the left shoulder. Another fielder behind the right shoulder of the wicket keeper. Both of them standing out there. And you can see 2 fielders behind square on the onside. You can't have more than 2 fielders behind square on the onside. You have to be very careful. Anything across the line, trying to play across the line to a delivery which was going down the leg side. That was a delivery, it was going slightly down the leg side. Batsman trying to play across the line. A ball just catching the part of the bat. 5 for the loss of 2 wickets. And ending up right in front of square leg umpire. Right arm over the wicket, delivers. Try again, the delivery outside the outside. Batsman trying to drag it onto the onside. Well, that was the way it was trying to play. You can see him. Front foot wasn't to the pitch of the ball, or very close behind the line of the ball, and he tried to play that sweep shot. No way you're able to make contact if you're not to get your front foot very close behind the line of the ball. Again, down the leg side, it would have been a wide. It would have been wide. Unfortunately, altering the stance on that occasion, the batsman to play the reverse sweep. 5 for the loss of 2 wickets, and that's the reason why it is a fair delivery. Right arm over the wicket, delivers. Going for a drive to a delivery outside the off stump. Booming swing of his bat. Blind swing of his bat. Nowhere near the line of the ball. Ball beating the outside bottom edge of the bat into the hands of the wicket keeper. 5 for the loss of 2 wickets. 55 is the target. Every ball that passes by, it's not going to be easy. Therefore, the batting side swings it down to the deep right mid-on. The fielder from deep mid-on and turn around to his right, managed to field that ball, and meanwhile the batsmen were able to cross over for a couple of runs. End of the over. 7 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. 3 more overs to be bowled. We have to wait and see what sort of target they're going to set to their opponents. I beg your pardon. It's not time. 7 for the loss of 2 wickets. That means it's not a target. They are batting second. They have to chase the score of 55 runs. 2 overs have been bowled. 3 overs to be bowled. 18 deliveries, and they have to get 48 runs for victory. It's not an easy task. It is an uphill task. It is an enormous mountain to climb, and it looks like star Samrat cricketers are in a commanding position here at UCG Ura Cricket Grounds. 7 for the loss of 2 wickets. 48 runs required for victory. Bowler. Fired the bowler who bowled the first over to bowl to Shahrukh. Shahrukh just switched the ball behind square on the onside, down to the back square leg region. Fielder from deep square leg region and turning close to his right. Meanwhile, the batsmen were able to cross over all over the ground. You could see him sweeping the ball, which was just outside the off stump, and managed to play it behind the square on the onside. 8 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket, delivers. Fayad to bowl to. They're trying to play that ball to a delivery outside the off stump. Was beaten. Collected by wicket keeper Wasim. 8 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Fayaz bowls to Wasim. Draws it down to covers. The fielder from short extra cover had to move across to his left. He's Abhilash the fielder. Moving quickly to his left hand side, to his strong side. It would be really easy for him.
He doesn't have to go round the ball to pick it with his right hand since he's a left-hander. 9 for the loss of 2 wickets. Right arm out the wicket, delivers. Reverse sweeping the ball, which was in line with the stumps. Camping from home, really wasn't able to pick that ball easily. When the ball is in line with the stumps, it's not so easy for the batsman to play that reverse sweep, but managed to play it in line with the perfect place on the offside and managed to cross over for a single. 10 for the loss of 2 wickets. Right arm out the wicket. Fayaz bowls. Again going for a reverse sweep to a delivery. And bowler he has been given leg before wicket. That was in line with the stumps. Going for a reverse sweep. And he wasn't able to make contact. Ball hitting him in line with the stumps. And umpire Roland had no hesitation whatsoever to raise his index finger. 10 for the loss of 3 wickets. Chasing a target of 55 runs for victory. And it's getting tougher and tougher. And it looks like it turns out to be a one-sided match. So Samrat, after winning the toss, elected to field first. Blue boys, they lost the toss, and now at this juncture it looks like it was a very good toss to lose. It was really a blessing in disguise to lose the toss. 10 for the loss of 3 wickets. Fayaz bowls, drives it, square the wicket on the behind square of the wicket on the offside, doesn't get hold of it properly. Might have hit the bottom outside edge of the bat. As he went for the drive to a delivery which was outside the off stump. End of the over. 3 overs have been bowled. 11 runs on the board for the loss of 3 wickets. .55 is the target. 55 is the target. As the ball overs grow by, it is getting tougher and tougher. And now it looks like it's not so easy. Not so easy for them to get to the target of 55 runs with only 12 deliveries at their disposal, excluding wides and no balls. And they have to get 44 runs for victory. It's not so easy. It's going to be a uphill task. 55 is the target. 3 overs have been bowled, 11 runs on the board. And they weren't able to make use of that power play of first 2 overs. And when they're chasing a score of 55 runs, should at least score 20 runs, at least 20 runs in the first 2 overs when the power play is on. But unfortunately, they have not been able to. They have been really struggling out there in the middle, both the batsmen. 12 for the loss of 3 wickets. The singles and 2s are not going to help them to get the score of 55. So 4s and 6s are order of the day here at Eastwood Ura Cricket Grounds, especially as far as this match is concerned. Swings it, doesn't get hold of it properly. Ball goes down. Good piece of work by the fielder here to run back. Managed to drop his hand by his feet. Managed to field that ball with his left hand, transferring the ball onto his right hand and turning around and throwing it at the striker's end. The fielder was fielding behind the wicketkeeper's left shoulder. He was the one who had to run diagonally back to his left. 13 for the loss of 3 wickets. So he's trying to shift that ball which was coming in from outside the leg stump. Leg by signal umpire. No way, he was a leg before wicket. There was an appeal for leg before wicket. As far as leg before rules are concerned, anything pitching outside the leg stump, hitting the batsman in line with the stump, cannot be given out. Even if the ball goes and hits the stumps, if not for his leg. Going for a drive, charging down the pitch and going for a drive to a delivery which was outside the house. The wicketkeeper was beaten. If he was able to collect the ball, he would have been able to break the stumps in time before the batsman was able to get back to his crease. And he was really fortunate on that occasion. The batsman. 15 for the loss of 3 wickets. Right arm round the wicket, delivers. Lifts it off his legs, up his slipper, safe down to the boundary. There's the fielder out there, fumbling with the ball. They go for one, they come back the second. 2 fielders were converging on the ball. And the fielder from deep mid-on region as well as the fielder very close to the deep mid-wicket region, right in the front of mid-wicket. Even one of the fielder was able to get to that ball, shuffles across, tries to hit that ball high up in the air, and unfortunately the ball landing into the palm of the hands of the fielder at deep mid-off region. Another batsman bites the dust. 17 for the loss of 4 wickets, and
It looks like they are dead and buried here at UCG Ura Cricket Grounds against their opponents, Star Samrat cricketers. Last over to be bowled. Penultimate over has been bowled. Ultimate over to be bowled. The fifth over. And the Blue Boys are winning here at UCG Ura Cricket Grounds. Unless and until something dramatic happens in this over, I don't think so. Even so, it's not so easy for them in this last over. They have to score 38 runs for victory from here on. Even 6 sixes are not going to get them to that total of. Stuck it down to the deep. Ball landing 3/4 away down the deep mid wicket region, and the fielder at deep mid wicket just waiting for the ball to just land before him. He knows that this is all over in favour of the fielding side. Rajan officially straight on the ground, and catch has been taken there. You can't get straighter than that. Straight on the ground, all the head of the ball. And the fielder out there in the deep managed to take that catch quite easily. 5th wicket down, 18 for the loss of 5 wickets. And I feel very sorry for the batting side. They had given too many runs. The bowlers have been really, the bowlers were really rusty. It was a lackluster bowling performance there by Star Samrat cricketers, and that's the reason why they are in this dire strait here at UCG Ura Cricket Grounds. And they are losing here at UCG against their opponents, Blue Boys. Bowled him, trying to play a reverse safety delivery, almost a full toss, and he has been cleaned up. 18 for the loss of 6 wickets. Wickets are tumbling here at UCG Ura Cricket Grounds like 9 pins. 2 more deliveries to go. 18 for the loss of 6 wickets. Star Samrat, after winning the toss, they just without a second thought, they decided to field first, and it really proved to be wrong for them. The bowlers really let them down, and that's the reason why they are in a very, very difficult situation here at UCG Ura Cricket Grounds. And charging down the pitch, going for a drive. He has been stumped. Another wicket falls. 18 for the loss of 7 wickets. And the last ball, the ultimate ball of the match to be bowled. And Blue Boys are on the verge of victory here at UCG Ura Cricket Grounds against the opponents, Star Samrat cricketers. It was really a one-sided match. They had given too many runs, 55 runs in 5 overs, beg your pardon. 30 balls they had at the disposal, Blue Boys, but the managed to score 55 runs. That really shows how badly the bowlers had bowled of Star Samrat cricketers. It's all over. It's all over in favour of Blue Boys cricketers. They have won this match. Congratulations to the winners, Blue Boys. Commiseration to the losers, Star Samrat cricketers. So now Naufal is the man of the match for his batting. So he was the one who had scored 30 runs in the innings of Blue Boys. Out of the 54 runs scored, 30 runs, bulk of the runs were scored by Naufal, and he is easily, arguably, the man of the match of this particular encounter played between Blue Boys and Star Samrat cricketers. And so I request Naufal to come over here and collect the man of the match award from none other than my co-commentator Gopi.
And now fall. I request now fall to come over here and collect rupees. Beg your pardon. I collect that man of match of award from none other than Gopi, my co-commentator. Congratulations to you, no fall, for your brilliant innings of 30 runs. He had scored bulk of the runs of in the innings of Blue Boys cricketers. Thank you. Thank you, Gopi, as well as Naufal. शाहरुख खान शाहरुख बंडे यार शाहरुख बंडे का दादा शाहरुख का पूरा फिर इतने वरिया जीते ऐसे की तो आते नौफल हाँ पता बाकी बारे कष्ट चलो दूर पड़
ಅಲ್ಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಿಂಗಳ 18ರಂದು ಈ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಜರುಗಲಿದೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಮುಕ್ತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉರುವ ಅಶೋಕನಗರ, ಉರುವ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ 60ನೇ ವರ್ಷದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಈ ತಿಂಗಳ 18/4/2021 ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 50,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ 10 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಕ್ತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದರೆ 18/4/2021 ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. So young friends Gandhinagar, after won the toss, they elected to field first against Blue Boys Ulaibetu. And last quarterfinal match of this competition is now coming up between Blue Boys Ulaibetu versus Young Friends Gandhinagar. And I request all the players of both teams to please start the matches as soon as possible. Thank you.
So the match starts now between Young Friends Gandhinagar versus Blue Boys Ulaibetu, the last quarter-final match of this competition. So in this match, Young Friends Gandhinagar, after won the toss, they elected to field first against Blue Boys Ulaibetu, and their innings now going to start. Their openers Deepak and Naufal are the crease, and the ball is taken by Mubir. Will be operating the first over of the match. 5 overs per side to be played, and the first over of their innings is now coming up. और इस तरह से अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021 के अंतर्गत यहां पर शुरू होता हुआ, और यंग फ्रेंड्स गांधीनगर और ब्लू बॉयज उलाईबिट्टू के बीच में। और इस वक्त ब्लू बॉयज उलाईबिट्टू पहले बल्लेबाजी करता हुआ, आरंभिक बल्लेबाज मौजूद दीपक और नौफल गेंदबाजी मुबीर इस वक्त शुरू करते हुए, और मैच की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और एक गेंद डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है। निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त जरूरत यंग फ्रेंड्स, माफ कीजिए, ब्लू बॉयज को। ये गेंद चिप किया, क्लियर द इनफील्ड एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर 6। दिस इज एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over long on fence for 6 runs. और इस छक्के के साथ बेहतर शुरुआत दीपक कर चुके हैं, और स्कोर रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है ब्लू बॉयज उलाईबिट्टू के लिए। 6 रन बिना किसी नुकसान के बेहतरीन स्ट्रोक दीपक के बल्ले से लगता हुआ, और एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, पावर प्ले इस वक्त जारी। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार चिप किया, एंड दिस कुड बी द, आई थिंक इट्स crossed over the fence, whether it's a 4 or a 6. It's a 6 declared by umpire. Consecutive sixes for Deepak and a consecutive sixes for Blue Boys Ulaibetu, and with that couple 6 they made a terrific start now. 2 sixes in a row, and now they are 12 without loss in the first over. So what a fantastic start made by Deepak. Two consecutive sixes in the very first over hit by him, and this is an absolutely positive start from them. 12 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है, और खेल कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। और इस बीच गेंद अपने हाथों में लिए हुए गेंदबाज मुबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दीपक के लिए 2 लगातार छक्के यहां पर वो लगा चुके हैं, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार चिप किया, एंड दिस टाइम दिस कुड बी द 6 नंबर 3 hat-trick 6 came from the bat of Deepak. So this is an absolutely outstanding start. 3 छक्के लगातार दीपक झड़ चुके हैं पहले ओवर में, और इन 3 छक्कों की बदौलत अपने इरादों को और बुलंद यहां पर कर चुके हैं। तो क्या शुरुआत इस वक्त मिल चुकी है इस टीम ओम ट्रॉफी 2021 के अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच के लिए। और यहां पर इस वक्त स्ट्रेट अवे दबाव गेंदबाज के ऊपर 3 लगातार छक्के प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज मुबीर। अपनी अगली गेंद को इस वक्त लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद चिप किया, इस बार मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर आते हुए, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, एक टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस बार लगातार चौथा छक्का लगाना चाहा था, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद उनके टॉप एज पर टकराई, और भाग्यशाली रहे कि गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के दरमियान। 19 विदाउट लॉस, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस।
और अब पहली बार नौफल सामना करेंगे मुबीर की गेंदों का। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट पंच दैट वन इन स्टाइल बिटवीन द मिड ऑफ एन एक्स्ट्रा कवर एंड ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट। सो व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट फॉर Blue Boys Ulaibetu. 23 runs scored in the first over, and this is an absolutely terrific start made by the batsmen of openers of Blue Boys Ulaibetu. 23 without loss after first over. Now the bowler Dhanush is now brought into the attack from that side, and Dhanush इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू की पारी में। और इस वक्त धनुष गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, एक बेहतरीन शुरुआत ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू इस वक्त कर चुका है। 23 रन पहले ओवर में उनके बल्लेबाज जोड़ने में सफल। और अब गेंदबाज धनुष इस वक्त तैयार, गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक सामना करने के लिए तैयार। 19 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्कों की मदद से। पहली गेंद, यह गेंद चिप किया, गेंद को स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड इनटू द गैप, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर। और इससे पहले कि गेंद को लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर फील्ड करे, फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली पॉजिटिव प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर देम। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस, इस बार गेंद को मोड़ा, मिड विकेट पर रन नहीं मिलेगा और खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल। और स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 25 रन बिना किसी नुकसान के। धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई आखिरी मौके पर गेंद को फ्लिक करना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और धनुष एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद चिप किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए इस वक्त दीपक इस बार ऑफ द बैक फुट गेंद को स्कूप किया था खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से इनफील्ड क्लियर करते हुए, और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर जा टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, और इस चौके के साथ 25 इज अप फॉर दीपक नाउ। 25 रन स्कोर्ड इन जस्ट 9 बॉल्स। यह गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, ओवर थ्रो लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर, और इस 1 रन के साथ लेग बाय का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 30 विदाउट लॉस इन द सेकंड ओवर, and this is an outstanding progress here for them. नौफल गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार गेंद तक पहुंचे, गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन इस ओवर में बने, 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, एंड आफ्टर 2 overs ब्लू बॉयज Ulaibetu still looking in a commanding situation. It's 30 without loss after completion of 2 overs. अभिमता चैनल द्वारा इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट आप अपने मोबाइल सेट पर देख सकते हैं, YouTube पर जो इस वक्त की जा रही है, और देश विदेशों में हजारों दर्शक इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट इस वक्त देखते हुए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन श्रृंखला टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021
का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ और ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए शाम का वक्त लगभग 5 बजते हुए 4:55 यहां पर बच चुके हैं और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ। धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद मैदान पर, लेकिन धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व को इस वक्त दिखाता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती नजर आती हुई। इस मैच के बाद 2 मैचेस खेले जाने हैं, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों टीमों से कि कृपया जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएं। और ये गेंद इस बार क्लीन इट, दिस इज एंड आई थिंक it could be crossed over the fence for a boundary. It went over the fence for a 4 after 1 bounce. Perfect struck and he hit that one into the gap and gets an boundary for that. 34 without loss. 34 रन बन चुके हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त दीपक एक बार फिर से यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, तेज तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन आखिरकार वाइड का इशारा और बल्लेबाज दीपक अपना विकेट बचाने में सफल। 35 विदाउट लॉस और निस्संदेह इस वक्त ये चिंता का विषय जरूर बन चुका है यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के कप्तान के लिए कि इस वक्त कैसे ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू के रनों के बहाव को यहां पर रोका जाए, द फ्लोनेस ऑफ रन्स जिस अंग्रेजी में कहते हैं, और किस तरह इस आरंभिक जोड़ी को तोड़ा जाए। खासकर दीपक का विकेट उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। अगर ब्लू बॉयज के रनों के बहाव पर अगर उन्हें अंकुश लगाना है तो दीपक का विकेट यहां पर उखाड़ना होगा। गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, 36 विदाउट लॉस। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस, फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 फील्डर कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। डीप कवर पॉइंट के फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। मिड ऑफ कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद। 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 37 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रन्स आसानी के साथ यहां पर बनते हुए ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू के लिए और एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू। दीपक के लिए सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ दीपक की बेहतरीन पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। 30 रन दीपक ने बनाए। निस्संदेह आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस केम फ्रॉम दीपक। तेरह गेंदों में 30 रन उन्होंने बनाई। स्कोर 30 रन in just 13 deliveries with the strike rate of 240 plus. This is an outstanding batting performance. 240 प्लस स्ट्राइक रेट की औसत से 30 रन वो बना चुके हैं सिर्फ 13 गेंदों में, 3 छक्के और 2 चौके की मदद से, और आखिरकार उनके बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। नए बल्लेबाज करना का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। प्रणीत फील्डिंग में अभी भी जमावट यहां पर करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। जमावट जारी है। गली फील्डर को इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर पीछे तैनात किया गया है और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को थोड़ा सा सीधे तैनात करते हुए गेंदबाज प्रणीत, और एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार करने के लिए टॉप एज और गेंद सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में।
गेंद नीचे रहते हुए टिप्पा खाने के बाद लेग कटर गेंद थी, झुकते हुए थोड़े से झुकते हुए गेंद को उछाला था, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और वाइड लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया। तो करला का विकेट गोल्डन डक के रूप में गिर चुका है। विकेट नंबर 2 शून्य पर करना आउट होकर पेविलियन वापस अपनी पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में, और ये दूसरा विकेट गिर चुका है यहां पर 37 रनों के योग पर। इट्स 37 for 2 नाउ। तो अभिलाष का आगमन यहां पर होता हुआ 2 गेंदों पर 2 लगातार विकेट प्राप्त करने के बाद प्रणीत के लिए इस वक्त हैट्रिक का मौका है। हैट्रिक गेंद वो लेकर इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए इस वक्त नौफल और इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स एंड ही गॉट द हैट्रिक। He's got the hat-trick, 3 successive deliveries and 3 breakthroughs. दीपक, करना और नौफल 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट प्राप्त करने के बाद इस मैच में अपना हैट्रिक प्राप्त कर चुके हैं प्रणीत, और तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है 37 रनों के ऊपर। 37 विदाउट लॉस, 37 for 1, 37 for 2 and now it's 37 for 3। और 3 विकेटों को प्राप्त जरूर कर चुके बल्लेबाज प्रणीत, लेकिन यहां पर 3 विकेटों को खोने के बावजूद ब्लू बॉयज उलाई बट्टू का तख्ता यहां पर भारी लगता हुआ। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में बचे हुए 7 विकेटों की मदद से ब्लू बॉयज उलाई बट्टू के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज राजिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ ब्लू बॉयज उलाई बट्टू की पारी में। पहली गेंद राजिक अभिलाष के लिए, तो अंतिम 2 ओवर में कहना पड़ेगा कि अच्छा कमबैक कर चुके हैं गेंदबाज यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के, सिर्फ 14 रन प्रदान करते हुए 3 बहुमूल्य विकेटों को प्राप्त कर चुके हैं अंतिम 2 ओवर में। पहले ओवर में 23 रन बने थे, दूसरे ओवर में 7 रन बना, और तीसरे ओवर में भी रन बना 7। तो 3 ओवर के बाद 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप से बाहर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एक्सक्विजिट लाइव कवरेज अभिमता चैनल द्वारा यूट्यूब पर इस वक्त की जा रही है इस मेगा श्रृंखला का, और यहां पर गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए, ऑफ स्टंप से आती हुई रिवर्स शॉट खेलना चाहा, वाइड का इशारा, एक और वाइड, 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। Still the bowlers of young friends Gandhinagar searching for the right rhythm, right line in fact, और एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, absolutely good one, that's the line he has to bowl at this situation, much straighter line, and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. So first warning now given to the bowler to entering into the danger zone. danger zone पर प्रवेश करने के लिए पहली चेतावनी इस वक्त अंपायर रोलैंड पिंटो ने दी है गेंदबाज राजिक को। और इस बीच राजिक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, क्रीज के कोने से गेंद, इस बार गेंद को चिप किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, इनटू द गैप गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ द टॉस गेंद को स्कूप किया था खूबसूरती के साथ सम्राज ने,
और गेंद काफी ऊंची उछली जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में जो लंबा गैप अंतर है, उस अंतर पर गेंद टिप्पा खाकर सीधे निकल गए सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इनफैक्ट दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन नाउ। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सम्राज के लिए चिप किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड वन मोर बाउंड्री। Consecutive boundaries for Samraz, and with that boundary the scoreboard is now jumping up to 48 now for the loss of 3 wicket. This is an absolutely outstanding progressing year for them. पहले दीपक गरजे थे, अब समराज बरस रहे हैं, तो यहां पर रनों का बहाव जारी है ब्लू बॉयज उलाई बट्टू के बल्लेबाजों द्वारा। और गेंदबाज राजिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। लास्ट बॉल टू गो, लास्ट 2 balls टू गो इनफैक्ट। और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राजिक अभिलाष इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए अपने अर्धशतक से एकमात्र रन दूर ब्लू बॉयज। इस बार गेंद को ड्राइव किया अभिलाष ने लॉन्ग ऑन पर, और इसी के साथ द 50 कम्स अप फॉर ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू। व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर देम। 50 came in 3.5 overs for losing 3 wickets। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हुए इस बार दिस इज अ ह्यूज वन, इट्स अ बिगर वन एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैक्सिमम 6 runs into the account of Samraz and 6 runs into the account of Blue Boys Ulai Bettu, and with that 6 the scoreboard is now rising up to 56 now। 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं 4 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर, और एक बहुत ही बड़ी स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू। सो द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम ओवर बाकी, और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में बल्लेबाज उलाई बिट्टू के अपने टीम के रन के बहाव को अपने टीम के रन के बहाव को किस शिखर पर ले जा पाते हैं। प्रणीत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पहले ओवर में प्रणीत ने 7 रन प्रदान किए थे और 3 विकेटें हैट्रिक के तौर पर उन्होंने प्राप्त किया था। अब अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार अभिलाष के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा। 57 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 5 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। समराज स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 2 चौका और 1 छक्का इस वक्त झड़ चुके हैं 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रणीत की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रणीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ द टॉस खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए थोड़ी सी सफल हो चुके थे बल्लेबाज, और इस बीच लेग बाय के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है। थोड़ी सी लेग ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कहना पड़ेगा, गेंद टिप्पा खाने के बाद 58 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और कुल मिलाकर अब 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी। अभिलाष बैक ऑन स्ट्राइक फेसिंग प्रणीत। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, गेंद को डीप मिड विकेट पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद। 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। डीप मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा दौड़ लगाना पड़ा गेंद तक पहुंचने के लिए, और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन पूर्ण कर लिया। 60 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जस्ट 3 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सिर्फ 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। प्रणीत
अभिलाष के लिए इस बार ऑन साइड पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 61 for 3 नाउ. जस्ट 2 balls now left in their innings. 2 गेंदें सिर्फ बाकी उनकी पारी में और सम्राज इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. प्रणीत तैयार अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट. सम्राज के लिए ये गेंद चिप किया with a twisted bat but straight to fielder at cover point. Can't face the gap as well and because of that he paid the penalty. With a twisted bat गेंद को उछाला था रिवर्स शॉट के जरिए लेकिन अगेंस्ट द विंड हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला और गेंद अपने वेग को अपने रफ्तार को खोती हुई सीधे पहुंची डीप कवर पॉइंट फील्डर के हाथ में और सम्राज की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है. 15 रन उन्होंने बनाए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं. 61 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है. 61 for 4 एंड नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन द रिंग्स. अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में. प्रदीप का आगमन हो चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज के रूप में. अभिलाष अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार. प्रणीत गेंदबाजी करते हुए यह गेंद जब किया अभिलाष ने लॉन्ग ऑफ पर और एक और विकेट अंतिम गेंद पर गिर चुका है. सो द इनिंग्स इज अप एंड ब्लू बॉयज will able to scored a huge total of 61 runs for losing 5 wickets in their stipulated 5 overs. Now they set a victory target and now they set a huge victory target of 62 now for young friends Gandhinagar. And as far as the required run rate is concerned, 12.40 runs per over the present required run rate for them. 62 they have to score. They have to score in their stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. 62 रनों का लक्ष्य 62 the target in 5 overs and the inning starts with a just shot. While तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर लीनस के साथ अंग्रेजी में. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, Gopi. 62 is the target in 36 delivery. It's not so easy. It's going to be a very uphill task there for young friends, Gandhinagar cricketers. It's not so easy for them. Blue boys surpassing their previous total score of 54 runs, managed to score 61 runs. The first match they had scored 54 runs and they won that match quite comfortably against star Samrat cricketers. I request the players of young friends to report here at the pavilion to get our official chart signed. This is the earnest request from their captain. .62 is the target. It's not so easy. They have enormous mountain to climb. 36, beg your pardon, 30 possible deliveries. It's not 36 possible deliveries. It's a 5-over-side match. And score 62 runs is something. It's not beyond anyone's imagination as far as cricket is concerned. Anything can happen as far as cricket is concerned. It's a glorious game of uncertainty. But as far as logic is concerned, I don't think so. It's an easy target by any means. 62 in 30 possible deliveries, more than 12 runs per over. So Gandhinagar cricketers are winning the toss and unfortunately they decided to field first. The bowlers were resty. It was really a lackluster bowling performance there by young friends Gandhinagar and that's the reason why they are in this situation. Dire straight here at UC Jivra Cricket Grounds against the opponents. Blue Boys. Blue Boys are playing a back-to-back. This is the second match they are playing without any rest. No respite whatsoever. 62 is the target. The very first ball to be bowled of the innings of young friends Gandhinagar. Going for a drive to a delivery which was outside. The outside was comprehensively beaten.
Beautifully bowled. That was bowled at a very good pace. There by Fayad. Fayad is the bowler. Suleiman is the batsman. Both the batsmen. Sajid is at the non-striker's end. Drives it. Whips it off his toes down to the fielder at long on. Mid-on range, deep mid-on range, and for a single, that brings Sajid on strike. They have to score 12 runs, more than 12 runs per over. It's not so easy. 62 runs is the target in 30 possible deliveries, excluding wides and no balls. Fayad from the pavilion end to bowl to Sajid. Drives it. Sajid, not Sajid, Sajid, and a crossover for a single. Singles and doubles are not going to take them to a total of 62 runs. They need fours and sixes. Couple of big hits can really put the pressure on the fielding side. And Sajid has the capacity to hit the ball really out of the ground. He's a sort of a batsman who has the ability to just go after the bowling. 3 for the loss of no wicket. It's not so easy at the juncture. Tremendous pressure out there. The batsmen have to just try to swing the bat of each and every delivery. Swings it down to the deep mid-on region. There's a fielder out there at long on. He was at long on, charging and picking the ball. And the batsman cross off for a single. 4 for the loss of no wicket. This is not going to help them to get to the total of 62. They need to hit at least a couple of boundaries in this over. Again plays that ball, chips it over down to the deep mid-off region. They go for one. There's a fielder out there. Despite the fact with 2 fielders outside the 20-yard circle, the ball going straight to the fielder. One of the fielders out there at deep mid-off region. 5 for the loss of no wicket. Fayad to bowl to Suleiman. Goes for the reverse sweep. Doesn't get almost that was played right in front of square on the offside. There's a fielder at a cover point. End of the over. End again. So 6 for the loss of no wicket. 62 is the target, and now they have to score 56 runs in 24 possible deliveries. It's really enormous, beyond the enormous mountain to climb. It's not so easy. It's an Herculean task here for young friends Gandhinagar. 6 for the loss of no wicket. 62 is the target. Every over that passes by, the target is getting tougher and tougher, no doubt about it. When they're chasing a total of 62 runs in 30 possible deliveries now, they have only 24 deliveries at their disposal, and they have to score 56 runs to be precise. It's not so easy. You need to hit the ball. Almost every ball, every alternative ball out of the ground. Especially when it comes to again drives it over the fielder, and you managed to take the catch. I thought that it would have gone over the head of the fielder at mid-off region. It was just there on the edge of the mid-off region. He just managed to run back sideways to his left hand side and took that catch. It wasn't an easy catch, but managed to take it quite easily. First wicket down, 6 for the loss of 1 wicket. Chipping it. And the fielder, once the ball had gone past him in flight, he managed to run back sideways and take that catch, outstretching both his hands. It wasn't so easy, but he made it look easy. 6 for the loss of 1 wicket. First wicket down. And now the new batsman making his way towards the middle, at the far end, at the striker's end. Imran. He's walking towards the far end. That's the non-strikers, and they're crossed over. Right arm over the wicket. Answer the bowler. Far outside the off stump. Wide signal by umpire. One more running cruise. The score moves on to 7 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Delivers. Goes for a drive. He was beaten. Ball ricocheting off his leg. We have to wait and see. By signal by umpire. By ricocheting off the hands of wicketkeeper. Wicketkeeper wasn't able to collect that ball. The batsman was out of his crease. If he was able to collect that ball and break the stumps, he would have been back into the pavilion. 8 for the loss of 1 wicket. 62 runs is the target in the second over.
Right arm out the wicket, delivers. Draws it, doesn't get hold of it properly. You can see the ball rotating in the air as it comes down. Ball catching the toe end of the bat, the cue end of the bat, and ending up halfway down towards the fielder at covers. And we lost the fielder from the bat. The fielder on the edge of the 20-yard circle. Draws it, doesn't get hold of it. Ball taken outside of the bat. The fielder from the edge of the 20-yard circle from behind the wicket-keeper's right shoulder. He charges in, but the batsman nevertheless were able to cross over. 10 for the loss of 1 wicket. Right arm out the wicket, delivers. Drives it, back down the pitch, bowler face, dropping his hand by his feet. Right hand by his feet, managed to field that ball quite cleanly. And he walks slowly to the top of his bowling mark. 10 for the loss of 1 wicket. This being the second over, still the power play is on. Drives it straight down the throat of the fielder as short covers. He didn't even have to move his muscles. He managed to take that catch with his fingers pointing upwards, beg your pardon, in the reverse cup. 10 for the loss of 2 wickets. And it's getting tougher and tougher here for the batting side. They won the toss. They elected to field first. And it looked again, once again, young boys, it was a blessing in disguise for them to lose the toss. The previous match, they won it, losing the toss, scored 54 runs, and they were able to beat their opponents quite easily and convincingly in their previous match. That was their first match of this tournament. 10 for the loss of 2 wickets. For the loss of 2 wickets. 62 is the target. 52 runs required for victory in 18 possible deliveries, which means it's really not an uphill task, but beyond an enormous mountain to climb. Crosser trying to play across the line to a delivery, putting his front foot straight down the pitch, trying to play across the wheel beaten. It's not the way to bat. Every ball from here on, they have to try to find the boundary. Otherwise, blue boys are going to run away with this match. Far outside the off stump. That's a wide delivery. That was too far outside the off stump. Wide signal by umpire. 11 for the loss of 2 wickets. Fayaz the bowler. Right arm over the wicket. Sadiq the batsman. Down the leg side. Another wide. This time down the leg side. Wide signal by umpire. 1 more run and he has to reload that particular delivery. 12 for the loss of 2 wickets. Sajid leaning over his bat, settling into his stance under his red cap. Fire the bowler. Slightly bowls wide of the crease. Again the delivery outside the off stump. Batsman swinging his bat, but no way he was able to collect that ball. And you can see the stumps were broken. And umpire making a rectangle in the air to gesture the umpire to make the decision as far as the stumping is concerned. Immediately after the batsman was beaten, the wicketkeeper breaking the stumps. Now the third umpire to see if the back foot of the batsman was in the air when the stumps were broken or not. 12 for the loss of 2 wickets. The third umpire has to make the decision with the best angles available at his disposal. He had broken the stumps there, but all they have to see it when the stumps were broken, whether his back foot was in the air or grounded. That's what the third umpire has to look at. 12 for the loss of 2 wickets. Blue boys are in a commanding position here at UCG Ura Cricket Grounds. The line belongs to the umpire. If the foot is on the line, the batsman can be given out. Whether the ball was in his hand or when the stumps were broken, that is also should be taken into consideration.
Whether the ball was in his hand when the stumps were broken, even that should be taken into consideration. 12 for the loss of 2 wickets. So this is what all the third umpire has to look at. So he has been given out. So he has been given out. He wasn't able to drag his back foot, plant his back foot behind the crease. And it was really a good piece of work there by the wicket keeper behind the stumps. 12 for the loss of 3 wickets. 62 is the target. And now it looks like Blue Boys cricketers are on the verge of victory here at UC Jura Cricket Grounds against the opponents, Young Friends. Deepak was the one who scored bulk of the runs. He has scored 30 runs of the 60 to 61 runs scored there by Blue Boys. What a batting performance it was by Blue Boys. And he was the one who was able to propel their team to the score of 61 runs. Drives it rapidly but safe. Ball landing 3 quarters away down to that fielder at mid-off region, deep mid-off region. And the batsman cross off for a single. 13 for the loss of 3 wickets. This is not going to help them. They need to hit every ball out of the ground from here on if they have to get to a target of 62 runs for victory. Right arm over the wicket, delivers. Going for a try, doesn't get hold of it properly. Again, chance to run out, and you can see the bowler, instead of breaking the stumps with the ball in his hand, trying to break the stumps with his hand, and he might have hurt himself. Immediately, he might have hurt himself. The thumb finger might have just jabbed into one of the stumps. 15 for the loss of 3 wickets. And chewing the thumb finger. 15 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. Lofted shot. Doesn't get hold of it properly. Maybe the fielder is out there. Yes, the catch has been taken. And the batsman has to walk back towards the pavilion. Got the elevation, but unfortunately wasn't able to get the distance to clear that long on boundary. That's the problem with Young Friends. They are given too many runs. The bowlers have to be, their bowlers have to be blamed for their lackluster bowling performance as far as Gandhinagar cricketers are concerned. Young Friends Gandhinagar cricketers are concerned. 15 for the loss of 4 wickets. Third over in 3 overs have been bowled. One more ball to go. So one more ball to go. 15 for the loss of 4 wickets. One more ball to go. 62 runs. They have to score 15 for the loss of 4 wickets. They are reeling here at UC Jura Cricket Grounds. Young Friends Gandhinagar against the opponents, Blue Boys. Blue Boys playing the second match back to back. This is the back-to-back second match for them. They had no respite whatsoever. The first match they won it convincingly, winning against Star Samrat cricketers, scoring 54 runs batting first. They had lost the toss. It had really worked in favor of them, losing the toss. And this time around it looks like it is working in favor of them. And they have been losing toss, and it has been really a blessing in disguise for Blue Boys as far as losing the toss is concerned. 15 for the loss of 5 wickets. 3 overs have been bowled. 62 is the target. And over to Gopi for further description of the match to take it through to the end of this match. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ರೈ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕುಳ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಸಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್. It's 15 for the loss of 6 wickets now, and now it's going to be at the start of the 4th over. In fact, they are looking deep in trouble. Young friends, Gandhinagar. So 15 for the loss of 6 wickets now, and still they have a long way to go. And now the new batsman, number 8 batsman, is now coming out to the middle. और नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे. गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया था शॉर्ट फाइन लेग पर. और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद चिप करना चाहा, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद सीधे शॉर्ट कवर पर, जहां पर फील्डर विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया. आगे की ओर आकर 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रोक चुका है 6 विकेट के नुकसान पर. दाहिने हाथ राउंड द विकेट चिप किया, लॉन्ग ऑन पर 1 बाउंस कलेक्टेड जस्ट इनसाइड डिफेंस. It's 16 for the loss of 6 wicket, and this is going to be 4th over in progress in their innings. Still they have a long way to go. Again better, absolutely good one, and with this delivery 4th over has been came to, and now 46 required in last over. That is an absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wides in the last over. लगभग असंभव सा लक्ष्य इस वक्त. अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो 46 रन बनाने हैं अंतिम ओवर में. और अभिलाष, पहली गेंद बेहतरीन गेंद थी. डॉट गेंद, रन नहीं मिलेंगे. 5 गेंदें बाकी, 46 रन चाहिए. 46 स्कोर फ्रॉम 5 बॉल्स. अभिलाष इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. डीप मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. अभिलाष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पैरों पर टकराई, रन से नहीं मिलेगा. 3 balls left and 45 to get. लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा. 18 now for the loss of 6 wickets. The last quarter final of this tournament is now going on here. Winners of this match will meet Young Friends Urva in the next match in the second semi-final of this competition. Sweep करना चाहा, चूंकि wide again. 19 for the loss of 6 wickets. Again a bowled wide. 20. This time gone for off, not succeeded. और विकेट कीपर जब तक गेंद को फील करे, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 21 now, 41 to get from last 2 deliveries. Exactly 20 and a half runs per ball. चूंकि इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने में और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. 41 रन चाहिए अंतिम गेंद पर. 41 to get from last ball. Abhilash bowls the last ball of the match. Beaten, that's it. Comprehensive victory for Blue Boys Ulaibetu by 40 runs, defeating Young Friends Gandhinagar, and with that victory they are through to the semi-final of this competition. So in the semi-final match,
they will meet Young Friends Irwan. The second semi-final of Team Om Shakti Trophy 2020 and 2021 is now going to begin between Blue Boys Ulaibettu versus Young Friends Irua. And I request the two teams captains to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ರೈ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ರೈ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
Hello. Thank you, Gopi. The penultimate match of the tournament is to be played between Blue Boys and Young Friends Urva. Here it was winning. Blue boys. Blue Boys winning the toss and opting to field first. They won both their matches, first two matches, by batting first, and now they lost the toss and they batted first. But now this is the first time around they won the toss and they had opted to field first. After winning two matches batting first, they have decided to field first after winning the toss. This is the first toss. This is the first time they have won the toss, and immediately they decided to field first. And friends are going to bat. They have no other option, no other alternative. This is going to be a 5-over side match for the first 2 overs. As far as the playing conditions are concerned, only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle. Not more than 5 fielders on the onside throughout the 5 overs. Not more than 2 fielders behind the popping crease on the onside throughout the 5 overs. Swifts it beautifully. Reverse it. Look at the fielder. Commitment by the fielder out there at coverage and just throwing himself to his left-hand side, but in vain. Abhilash was the one throwing himself to his left-hand side, to his strong side, but unfortunately it was in vain. One for the loss of no wicket. Our scoreboard operator Mahesh is doing a wonderful job here. What his scoreboard operator has been for not only for this tournament, almost all the tournaments which are held here at usage Euro cricket grounds. The right arm round the wicket delivers. Trying to sweep that ball. Has been cleaned up. Has been cleaned up. Neck and crop. Back into the pavilion he goes. The first batsman walking back towards the pavilion. Cleaned up by the bowler. None other than Fayad. Ushered the batsman back into the pavilion. Trying to play the slog sweep. Playing all over it. And paying the penalty. 1 for the loss of 1 wicket. One bowler can bowl 2 overs and rest of the bowlers can bowl 1 over each. Minimum of 4 bowlers have to be used as far as this particular tournament is concerned. The playing conditions of this particular tournament is concerned. Only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle for the first 2 overs. Not more than 2 fielders on the onside throughout the 5 overs. Not more than 5 fielders on the onside throughout the 5 overs. And when it comes to one-day cricket or limited over cricket, the same rule applies. As far as number of players on the onside are concerned. 2 for the loss of 1 wicket. So new batsman in is Basit. Basit is at the non-strikers end, and Santosh, he was the one who was responsible for the victory against NM cricketers. It was really a very good performance with the bat that really won him the man of the match. 2 for the loss of 1 wicket. Fayad the bowler, right arm out the wicket, delivers. Going for a drive to a delivery which is staying down the leg side. Ball might have ricocheted off his leg. By signal umpire, it was off the hands of the wicketkeeper. From here, it looked like it might have ricocheted off the legs or the leg of the batsman, but unfortunately, it was the wicketkeeper who wasn't able to collect that ball cleanly. 3 for the loss of 1 wicket. Fayad once again to bowl to Basit. Fayad, right arm over the wicket, moving away from us, wide of the crease. Drives, it doesn't get hold up in the ball, catching the toe end of the bat, going just past the wicketkeeper. There's a fielder behind the wicketkeeper, to the right shoulder of behind the right shoulder of the wicketkeeper. He managed to field that ball, but nevertheless the batsmen were able to cross over. 4 for the loss of 1 wicket. Blue Boys, I feel very sorry for them. They're playing their 3rd consecutive match. No rest whatsoever, no respite whatsoever, no breather whatsoever. I feel very sorry for them. 4 for the loss of 1 wicket. Fayad the bowler. Delivers, going for a switch shot. He has been cleaned up. Going for a switch shot.
Look at the way the wicket changed the grip of the bat from right hand to left hand and tried to play it. However, the backward point boundary for a maximum was comprehensively beaten, and he's back into the pavilion. He has been cleaned up, neck and crop. Get rid of him. Four for the loss of 2 wickets, 2 wickets down. So young friends, after they were asked to bat first, they lost the toss. Blue boys, after winning the 2 matches, losing the toss, and they were asked to bat first, have decided to field first. We have to wait and see whether it's going to work in favor of them or not. The time will tell. It's a matter of time. We have to wait for another 9 overs. 4 for the loss of 2 wickets. 1 over has been bowled. 4 more overs to be bowled. The bowler from the far end. Answer the bowler. Basit is a batsman. Ajmal is a non-striker. The captain of the side, is out there wearing the red cap. Answer bowls. Sweeps it from outside the off stump, but out to the fielder at the deep, the fielder from a deeper mid-wicket region to run across to his right. But that was very good piece of fielding. Very good piece of fielding. It's not so easy. He had to run almost 15 yards diagonally forward to his right hand side. Managed to field that ball and managed to throw it in one action and restrict the batsman for a single. 5 for the loss of 2 wickets. Five for the loss of 2 wickets. Answer bowls to Ajmal. Drives it beautifully. There's a feeder out there. This is out. It looks a delight to watch when the batsman plays the ball with a straight bat. Slightly opening the face of the bat and drives it. And look at the face of the bat pointing towards the direction the ball was played. It was played to the left of the fielder out there at rightish mid-off region. And the fielder out there was able to quickly move across to his left to field that ball. But the batsman were able to cross over. Lofted shot, straight down the throat of the fielder. Good catch taken there by the fielder in the deep, long on region. He had to charge in, took the catch, and unfortunately, the batsman, Basit, has to walk back to the pavilion. 6 for the loss of 3 wickets, and what a start it has been for Blue Boys, despite of the fact they are playing the 3rd match in a row. I request the finalists, friends of Murshid, to report here immediately and provide us the list of playing 11 and get our official chart signed. This is the first call for friends Murshid. They are already made it to the finals. They are waiting for their opponents. The winners of this encounter are going to clash against friends Murshid in the finals. Answer to Ajmal. Answer bowls. Drives it up his knee, chips it over the fielder, a cow find. 2 fielders continue with the ball. Abhimathatv is the one, managed to get that ball. And before that, the batsmen were able to cross over for a single. He had to run back, managed to field that ball. After the ball had covered 3/4 of the way towards the boundary line. And before he could turn around and throw the ball, the batsman had ample time to cross over. Good running between the wickets. Ajmal was the one, played it, chipped it over the head of the fielder. Abhilash was the fielder at cover point, square, right in front of square on the offside. 8 for the loss of 3 wickets. Answer balls, trying to whip it off his legs. He wanted to play on the onside. Ball might have caught the front edge of the bat. And before one of the fielders out there was able to field that ball, the batsman was able to cross over. Ajmal going for the quick single and managed to make it. 9 for the loss of 3 wickets. So Ajmal
The skipper of Young Friends, after losing 3 wickets with only now they have 9 runs on the board. Still a single-digit score on the board. This being the second over. And these two batsmen have to really revive the situation for their side. Rebuild the innings, repair the innings. Right arm over the wicket, Answer balls. Obviously, just wide of the fielder. Again, he's in action. Abhilash is the fielder in action. And the batsman crossover single wide to the left of the fielder. Abhilash. And Abhilash had to run back, and the batsman had ample time to cross over. He was fielding there at cover point, right in front of square, on the offside, right in front of point, short point region, in line with the public crease on the offside, is the short point region, and he was out there at cover point region. 10 for the loss of 3 wickets. 2 overs done. 10 for the loss of 3 wickets. 3 overs to be bowled. 18 possible deliveries. 18 legal deliveries. 18 fair deliveries at their disposal from here on. Ajmal having a look around the field, surveying the field before settling into his stance. He's a cool customer. I've seen him batting. And he knows the situation very well. 10 for the loss of 3 wickets. It's not a good score as far as Young Friends are concerned, but Blue Boys are going to be really delighted. 10 for the loss of 3 wickets. Fahad is the bowler, bowling his second over. Going for the reverse sweep and wasn't able to connect it. We have to wait and see. Wide signal by umpire. 1+1. Trying to go for the reverse sweep to a delivery which was outside the off stump. Whenever the ball bowled outside the off stump, easy for the batsman to go for the reverse sweep. He can free his arms and try to give the ball the direction towards the deep third man region. But fortunately on that occasion, even though it was far outside off stump, it didn't connect it. And that's the reason why he was able to get that extra run as well as an extra delivery. 12 for the loss of 3 wickets. Sweeps it. That was an orthodox sweep. Behind square on the onside by Ajmal. Non-striker. 13 for the loss of 3 wickets. Mansoor is the batsman now. Right arm over the wicket. Sweeps it, top edging it. A catch has been taken. Good catch taken there by the fielder. He had to run in from backward point region and just run across to his right hand side and managed to take that catch quite easily. It was played in line with the public crease on the offside at point, on the edge of the 20-yard circle. And the fielder who was at the backward point region, or just at the short third man region, bit squarer, to run across to his right hand side to take that catch, and managed to take that catch quite easily after covering his ground. He had to cover about 7 or 8 yards to his right hand side and managed to take that catch in the end easily. 13 for the loss of 4 wickets. Wickets are falling here for Young Friends. They have been losing wickets here. It has been so far a sorry position of sorts there by the batsman of Young Friends to and from the crease. Kinda. 13 for the loss of 4 wickets. Fayaz the bowler. Ajmal the batsman, wearing the red cap. And you can see Mansoor is wearing the green cap. Running it, and this chance of run out, get the ball hit the stumps. It would have been curtains there for Mansoor. Lucky on that occasion. I think that was off the bounce, Biggie. First he tried to take that catch. After taking that catch, he wasn't sure, and he tried to throw that ball onto the stumps. That was played behind square on the offside with the horizontal bat. Slightly, you can see the toe of the bat was almost pointing towards the direction the ball was played. Now we have to make sure whether the ball had hit the ground before it had ballooned up in the air to the fielder out there behind square on the offside, just inside the 20-yard circle at short third man region. I personally feel that it should be a bump ball. We have to wait and see. It is up to the umpires. They are in a very good position out there.
They are in a very good position out there. They are going to decide. कैच कैच खेला बड़ा है तो कैचिंग So it has been given to the third umpire. So Suraj making a rectangle box in the air, gesturing the third umpire to make the decision, and umpire to go through all those angles available, best angles available to him to make the decision. If it's not conclusive, if it's not is not able to make the decision, then it is up to the on-field umpire. It's not out. (13) for the loss of 4 wickets. It's not a wide. That ball had passed just underneath the bat. That's the reason why the wide hasn't been given. The ball had passed it just underneath the bat. Now it's not government. Was the first semi-finals was won by Fence Murshid. They are already in the finals. That was a couple of weeks back. That was played on Bondel grounds. 16 for the loss of 5 wickets. Fayaz, the new batsman in is Hazar, is at the non-striker's end. Ajmal was run out at the non-striker's end, and that's the reason why he's out there at the non-striker's end. 16 for the loss of 5 wickets. Right arm round the wicket, trying to angle the ball into the left-hander, Rajesh. He swifts the ball to a delivery outside the off-stump. Trying to sweep the ball outside the off-stump. Was comprehensively beaten. He has to be very careful. He had the width, he had the latitude to play the reverse sweep, but unfortunately he wasn't able to make contact. 3 overs have been bowled, 16 runs on the board, 5 wickets down. It's not so easy from here on. They have to try to squeeze as many runs as possible to propel the score to at least 35 to 40 runs. Over to Gopi for further description of the match to take you through to the end of the innings of young friends Urva. गेंदबाज ब्लू बॉयज उलाई बिट्टू के दर्शक मैदान पर लगभग भर चुके हैं। आज सोमवार वर्किंग डे होने के बावजूद शाम का वक्त और यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार टिप किया इस वक्त लॉन्ग आउट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 17 रनों पर। अजहर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और राजेश इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। What a fantastic second semi-final match is now going on here for Team Om Shakti Trophy 2021 2021। इस मैच की विजेता टीम अगले मैच में फ्रेंड्स मुर्शिद का मुकाबला करेगी इस श्रृंखला के मेगा फाइनल मैच में, और वो मेगा फाइनल मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा। रोशनी मैदान पर ढलते हुए वक्त के साथ साथ कम होती हुई लगभग धूप मैदान से गायब हो चुकी है और गेंदबाज इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। सूरज मैदान की दाईं ओर इस वक्त नजर आता हुआ अपने रौनक को इस वक्त लगभग हो चुका है, लगभग आग का गोला यहां पर बनता हुआ और समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो 18 रन यहां पर बन चुके हैं और 18 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई निस्संदेह एक बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर और दोनों संतुलित टीमें यहां पर भिड़ रही है इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल मैच में। और गेंदबाज नौफल, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ
5 wickets in the over number 4 in progress. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, नौफल दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद उछाला, इस वक्त गेंद हमें में फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अभिलाष गेंद को लपकने में सफल, बेहतरीन जजमेंट के साथ। और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है अजहर का। गेंद को उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा आखिरी मौके पर नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, नॉट क्वाइट होल्ड इट ऑल्सो, और गेंद हवा में उछली और अभिलाष ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच को यहां पर लपका विद अ परफेक्ट जजमेंट। और निस्संदेह ये बेहतरीन कैच, जब कभी भी आप पीछे की ओर दौड़ते हैं कैच को लपकने के लिए तो आपको कैच को लपकना काफी मुश्किल होता है, और यहां पर गेंद की गति को ध्यान में रखते हुए पीछे की ओर दौड़े और आखिरकार जैसे ही गेंद नीचे आई घूमकर इस गेंद को उन्होंने अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। बेहतरीन कैच, और इस विकेट के साथ छठा विकेट यहां पर गिर चुका है बेहतरीन कैच की बदौलत। और अब नए बल्लेबाज प्रताप का आगमन होता हुआ और यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी इस वक्त कुछ हद तक संकट की स्थिति में यहां पर नजर आती हुई। प्रताप नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, राजेश इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, रनों की सख्त दरकार यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस मैच में अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं 30 रनों का आंकड़ा कम से कम पार करना होगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों को अगर उन्हें दबाव डालना है उलाई बेट्टी के बल्लेबाजों के ऊपर। यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा आखिरी मौके पर चूके और वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर, इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और नौफल एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट राजेश के लिए, इस बार उछलना चाहा गेंद स्टंप से टकराए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। राजेश की पारी समाप्त, उछालना चाहता बल्ले और पैर के बीच में लंबा अंतर और उस अंतर को चीरती हुई सीधे गेंद जा टकराई मिडल लेग स्टंप पर, गिल्लियां बेल्स ऑफ होते हुए और 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा का काफी संकट की स्थिति में इस वक्त नजर आते हुए। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ, 24/7 इन द 4th ओवर इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर 7 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और जुबैर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए। अभिमता चैनल के द्वारा बेहतरीन लाइव कवरेज यहां पर दिया जा रहा है यूट्यूब पर और देश विदेशों में हजारों दर्शक इस श्रृंखला का इस वक्त मुआयना करते हुए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021 यहां पर एक शानदार प्रगति करती हुई द्वितीय सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ और एक कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। इस ओवर में अंतिम बार नौफल इस वक्त तैयार, जुबैर सामना करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में, जुबैर को मालूम नहीं पड़ा कि गेंद किस तरफ गई है, ऊपर की ओर उन्होंने देखा लेकिन आखिरी मौके पर गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर नीचे के तौर पर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 21 रनों पर। 21 for 7 and 4 overs had been bowled and a tidy bowling performance continuing here from the bowlers of Blue Boys Uraibeta. Now last over remaining और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज अपने बचे हुए 3 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। शाम के 6:10 यहां पर बच चुके हैं, रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, मैदान के बाहर स्ट्रीट लाइट, रास्ते की बत्तियां, बिजली के खंभे के बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर रोशनी कम होती नजर आती हुई। एजाज का इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुबैर के लिए। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में दर्शकों से लगभग ये मैदान लगभग कहना पड़ेगा भर चुका है और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार एजाज, यह गेंद चप किया जुबैर ने लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर काफी सीधे तैनात और जब तक दौड़कर गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच गेंद को उछाला था जुबैर ने और 2 रन यहां पर प्राप्त करते हुए बेहतर स्ट्रोक और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स।
fifth and a final over starts in their innings. और एजाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट जुबैर के लिए पैरों पर टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची, फील्डर को बीट करते हुए एक रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा इस वक्त, और लेग बाय का इशारा अंपायर का। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को बीट करते हुए गेंद निकल गई थी और बड़ी मुश्किल के साथ जब तक सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका जाता, सीमा रेखा की दीवार के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। रन्स किस तरह से बनते हैं ये इस वक्त जरूरी नहीं है यंग फ्रेंड्स उरुआ के लिए, जरूरी है कि रन्स बनने चाहिए, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए यंग फ्रेंड्स उरुआ के क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज रन्स बनाने की हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए लेग बाय का इशारा, अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर ने नकार दिया सही तरीके से कि गेंद, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी। 26 रन 26 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 3 balls now remaining in their innings. देखते हैं इन 3 गेंदों में और कितने रन यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाज बटोर पाते हैं। और एजाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, प्रताप सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट एजाज की ओर की अगली गेंद प्रताप के लिए। यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई स्वीप करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और वाइड का इशारा इस बीच, तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 7 रन अब तक बन चुके हैं पहले 3 गेंदों में, और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर ओवर यंग फ्रेंड्स उरुआ के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि साबित होता हुआ ये अंतिम ओवर। एजाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद हमें में, फील्डर पीछे मौजूद और अभिलाष फील्डर थे, और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करके एक टिप्पे के बाद थ्रो करे, गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 2 balls now remaining in their innings. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, प्रताप के लिए खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया, इस वक्त गेंद जाती हुई डीप विकेट सीमा रेखा पर, बेहतरीन स्टॉप, वहां पर 2 रन मिलेंगे, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त, और इस बीच प्रताप 3 रन पूरा कर चुके हैं। बेहतरीन तरीके से गेंद के इस वक्त मोड़ दिया था प्रताप ने, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ फील्डिंग, और गेंद को जैसे ही 8 से 10 कदम दौड़ते हुए करना थे फील्डर, उन्होंने अपने जूतों के जरिए गेंद को रोका, आखिरी मौके पर अपने पैर के जरिए गेंद को रोका, और आखिरी मौके पर 1 रन वो अपनी टीम को बचाने में सफल। 32 11 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और इस बार अंपायर मांग कर रहे हैं कि तीसरे अंपायर की ओर की क्या करना, सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में सफल हुए थे या नहीं, या फिर गेंद को रोकते समय उनका पैर सीमा रेखा को टकरा चुका था या नहीं, और इस बीच अंपायर यहां पर उसकी जांच करते हुए। तो नहीं, 3 रन सिर्फ घोषित किए जाएंगे, गेंद को रोकने में सफल रहे थे सीमा रेखा के अंदर, और 3 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका। 32 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर तैयार एजाज जुबैर के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। जुबैर तैयार एजाज की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। यह गेंद इस बार पैरों पर टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर यंग फ्रेंड्स उरुआ एंड दे फिनिश्ड वेल विथ 33 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड अ फाइन ओवर इन यंग फ्रेंड्स उरुआ's point of view came to an end. That last over which young friends Urua brought, they got 12 runs in the last over, and because of that they finished well with 33 for the loss of 7 wicket after being a slower start. And now the 34 the target for
Blue boys Ulaibetu 34. They have to score in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 6.80 runs per over. And let's see can they reach the target or not. और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के 34 रन बनाने 34 द टारगेट फॉर देम इन 5 ओवर्स और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर चंद लम्हों बाद होगी और एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं और एक छोटे से अंतराल के बाद ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में लीनस के साथ जब ब्लू बॉयज उलाईबेट्टू की पारी की शुरुआत यहां पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. The umpires are signaling the start of the innings of Blue Boys. The target of 34 runs for victory in 30 possible deliveries. Zubair the bowler, the left-hander, the batsman. Oh, beautifully bowled, trying to work the ball on the onside, and he has been cleaned up, neck and crop. Trying to play, angled it into the right-hander. Left-hander, beg a partner, bowling round the wicket, Zubair, and that was a beauty of a delivery. The first wicket down of the very first ball. What a breakthrough, therefore, Zubair. Young friends drawing the first blood here at UC Jura Cricket Grounds. Still early days as far as this innings is concerned. 34 runs is the target, and the left-hander back in the pavilion of the very first ball for a golden duck. Not a single run has been scored, and one run on one wicket down. So Blue Boys, after winning 2 matches quite convincingly, their batting will be tested, especially in this innings. It's not so easy for them against a top-class bowling attack of young friends. 34 is the target. It's not so easy target against
A formidable bowling attack of young friends. One of the best teams when it comes to shorter version of the match as well as the longer version of the match. They won the longer version of the match, the 44th year of the trophy, beating Vishal Cricketers. 30-over side match. Right arm over the wicket, delivers. Just dabs it down to the fielder, a cover point. Right in front of square on the offside. Santosh the fielder, and the batsman cross off a single. First run on the board. One for the loss of 1 wicket. Blue boys, they won the first 2 matches losing the toss, but this is the first time they won the toss, and you have to wait and see. They fielded first. Now they're chasing. This is the first time around they're chasing. Across the line. Lucky for him, he slipped, but managed to plant his back foot behind the popping crease. The front foot slipped forward, and lucky for him, he was down on his back knee, but fortunately for him, his back foot, the part of his back foot was behind the popping crease. 1 for the loss of 1 wicket. Zubair the bowler is bowling at a very good pace. Right arm over the wicket. Again he tries to deliver it. That was bowled outside the off stump. Trying to sweep that ball, reverse sweep the ball. By signal by umpire. 2 for the loss of 1 wicket. 34 is the target. Zubair the bowler. What a convincing victory it was for both the sides. The first match and second match for Blue Boys and Young Friends. They won the first match against NM Cricketers. They were one of the favourites, NM Cricketers, to win this trophy. But it was Young Friends who were able to eliminate them from this tournament. 3 for the loss of 1 wicket. Zubair once again. Again tried to play across the line to a delivery outside the off stump. Trying to play that slog sweep. Was comprehensively beaten. It's getting darker and darker here at UCT Uro Cricket Grounds. One more match to go, if the light permits. And we have to finish that last match, the ultimate match, the finale, before the darkness falls. But now it looks like it's not so easy. 3 for the loss of 1 wicket. So 3 for the loss of 1 wicket. So Blue Boys are playing their third match in a row. 3 for the loss of 1 wicket. Blue Boys, what a match, what a tournament they had. The first 2 matches they won so convincingly. The first match they won batting first, scoring 54 runs. And second match they won scoring 61 runs batting first. But this time around, after winning the toss, both the matches they won losing the toss. And this is the first time they have won the toss, and they had decided to field first. They bowled really well. They managed to defend the biggest part, and they managed to restrict the opponents to 33 runs. But it is up to the batsmen to steer them through to victory. Young Friends, on the other hand, they have to defend 33 runs for victory if they have to win this match. Right arm over the wicket, delivers. Going for the reverse sweep. No way. He's able to make it. The ball is bowling at a very good pace. Before the ball was, batsman had got into position to reverse sweep the ball. The ball was in the hands of the wicket keeper. Yatin the batsman. Sharan the bowler. Right arm over the wicket, delivers. Going for a sweep shot. And he has been out. Top edging it. Ball billowing up in the air. Just over the head of the wicket keeper. And into the hands of the fielder exactly behind the wicket keeper. The second wicket down. 3 for the loss of 2 wickets. And it looks like they are making every weather of the target. A modest target of 34 runs for victory. This is what happens. Your batting will be tested against top quality bowling. It's not so easy when you are pitted against a quality bowler. 3 for the loss of 2 wickets. The second over in progress. Blue Boys playing the third match. Now they won the toss, elected to field first. The first 2 matches they won the toss. They lost both the
in both the matches they lost the toss. They were asked to bat first. It had really worked in favor of them. But this time around, they're winning the toss. They decided to field first. Now we have to wait and see whether this is going to work in favor of them or not. The time will tell. It is just a matter of time. 3 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Charging towards us. Passes umpire. Going for a drive. Doesn't get hold of it properly. Good piece of work. For the fielder scrambling across to his right hand side. Off on it from his follow through. And the batsmen were able to cross over. 4 for the loss of 2 wickets. Runs are hard to come by against the top quality bowling. They offer young friends Urva. 34 is the target. Second over in progress. 4 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Sharan the bowler. Bowling from the Matatagani end. It is already dark here at UC Jura cricket grounds. Right arm over the wicket. Goes for the sweep shot, down to fine leg. It is a fielder that shot fine leg. Every ball that has been played has gone to the fielder. That really shows how well the bowlers are bowling. 5 for the loss of 2 wickets. The score of 34 runs they have to chase. It's not so easy for them. Looks like it's not so easy for them. Right arm over the wicket, delivers. Drives it, just past the stumps at the non-strikers and on the onside. 1 run a close. The score moves on to 6 for the loss of 2 wickets. Runs are hard to come by from the bat of Blue Boys. They're playing the third match in a row. Back-to-back 3 matches. It's not so easy. You need You need that indefatigable stamina. Wide signal by umpire. It's not so easy out there. You have to be really physically fit to play 3 matches in a row. There are few cricketers who are really physically fit, 100% fit. As far as underarm cricket is concerned. Right arm over the wicket. Swings it. One-handed shot. One ball into the fetch. Down to behind square leg. Beautiful struck. Going down the leg side and batsman taking advantage of it. And managed to hit it. And ball travelling like a tracer bullet. Down to back of square leg boundary for 4 runs. 11 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. 34 runs to be scored. And 2 overs have been bowled. 11 runs on the board. 2 wickets down. And they require 23 runs for victory in 18 possible deliveries. We have to wait and see which team is going to emerge victorious. Over to Gopi to take it through to the end of this match, the second semi-finals. धन्यवाद लीला सर. So the equal battle is now continuing here. 23 to get from 3 overs for blue boys उलाइबेट्टू. और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो चौका लगातार नौफल का, वो चौका कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन भर चुका है ब्लू बॉयज उलाइबेट्टू की पारी में. और यहां पर तीसरा ओवर लेकर तैयार जुबैर, जो कि अपना पहला ओवर बेहतर फेंक चुके. सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे अपने पहले ओवर में. एक विकेट भी प्रसाद का बेशकीमती विकेट उन्होंने प्राप्त किया था. इस वक्त गेंदबाजी करेगा रशीद बाबा के लिए, सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रशीद बाबा के लिए नीचे रहती हुई गेंद, उछालना चाहा लेकिन ठीक तरह से गेंद को उछाल नहीं पाए, खेल नहीं पाए और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं कहना पड़ेगा. और इस बीच गेंद लगभग जमीन के सहारे होती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो 6 का फासला इस वक्त बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच. 23 रन चाहिए 17 गेंदों पर. 23 टू गेट नाउ फ्रॉम 17 बॉल्स. ये गेंद रशीद बाबा के लिए उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. द्वितीय सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. बेहतरीन लाइव कवरेज इस वक्त कर रहे हैं अभिमता चैनल के सदस्य यूट्यूब पर. और
हजारों दर्शक इस श्रृंखला का इस वक्त सीधा प्रसारण देखते हुए ये गेंद हल्के से पैडल स्वीप किया, गेंद पहुंचती हुई इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिडफील्ड, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ एक रन प्राप्त करने का। 13 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका है। मैच एक दिलचस्पी मोड़ की और इस वक्त बढ़ता हुआ जुबैर की गेंद, ये गेंद रशीद बाबा के लिए ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला, मिड विकेट पर गेंद पहुंचती हुई, वहां पर फील्डर मौजूद शरण तेजी के साथ गेंद पर लपके उन्होंने थ्रो किया गेंद को स्टंप एंड पर, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल a tidy contest is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. Zubair bowls दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप करना चाहा नौफल ने, कि चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई, एक रन उन्हें जरूर मिलेगा और एक रन के साथ इट्स ऑफ द बैट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, 6:30 बज चुके। इट्स ऑलरेडी 6:33 इन द इवनिंग और निस्संदेह यहाँ पर एक कड़ा संघर्ष जारी है इस ढलते हुए शाम में भी। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, जुबैर की गेंद बाबा के लिए उछालना चाहा, चूंकि नीचे रहते हुए बेहतरीन गेंदबाजी और अब 19 रन चाहिए, सिर्फ 4 रन इस ओवर में जुबैर ने प्रदान किए। 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 34 रनों का लक्ष्य, 34 द टारगेट, 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs, 19 टू गेट फ्रॉम 2 overs नाउ एंड द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 9.5 runs per over। अंतिम ओवर में यंग फ्रेंड्स रुआ के बल्लेबाज ने जो 12 रन बटोरे थे, वो 12 रन इस वक्त उनके लिए बेशकीमती साबित होते हुए और यहां पर 19 रन अंतिम ओवर में बनाने हैं ब्लू बॉयज उलाई बेट्टो को। मैं समझता हूं इस वक्त 1 या 2 करारा स्ट्रोक्स चौके और छक्के के रूप में उनके बल्लेबाज को लगाना होगा, बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन्स के बीच के फासले को घटाने के लिए। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से अरशद, बाएं हाथ के गेंदबाज नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 19 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान यंग फ्रेंड्स उर्वा के अजमल और जहां तक सवाल है 20 गज के दायरे के अंदर के फील्डिंग के नजरिए का, मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, गली, माफ कीजिए शॉर्ट थर्ड मैन और गली इस वक्त मौजूद। प्रताप पॉइंट पर, पॉइंट और गली के दरमियान इस वक्त तैनात। शॉर्ट फाइन लेग फीडर किरण को इस वक्त हटा दिया गया है, भेजा गया है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर। और जहां तक सवाल है मिड ऑफ इस वक्त बिल्कुल सीधा तैनात। मिड विकेट संतोष मिड विकेट पर, अजमल शॉर्ट फाइन लेग पर, किरण पॉइंट पर और जुबैर मिड ऑफ पर। ये 4 फील्डर जो कि 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। और अरशद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 19 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। नौफल सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद नौफल के लिए लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को उछालना चाहा लेकिन उछाल नहीं पाए, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, डॉट गेंद। और इस बीच रन से चाहिए अब 19 गेंदें बाकी है 11। 19 टू गेट नाउ फ्रॉम 11 balls. With every dot ball, the pressure is now building up on the batsmen of blue boys Ulai Bettu. Again इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। And now 18 to get from 11 balls now. कम से कम एक चौका या छक्का इस वक्त ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू के ऊपर बने हुए दबाव को कम कर सकता है और उसकी तलाश में इस वक्त बल्लेबाज ब्लू बॉयज उलाई बेट्टू के। गेंदबाज इस वक्त तैयार, यह गेंद स्वीप किया, नौफल ने मिड विकेट पर नहीं, गेंद तक फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और वहां पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। बासी तो फील्डर थे डीप मिड विकेट पर, पहले सोचा कि गेंद पर वो पहुंचे हैं लेकिन आखिरी मौके पर अपने निर्धार को बदला, देखा कि गेंद उनके आगे टिप्पा खाने वाली, अपने आप को संभाला, अपने दौड़ को रोक लिया और गेंद का इंतजार किया। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद को उन्होंने फील्ड करते हुए थ्रो किया। नॉन स्ट्राइक रन पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 17 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी। What a fantastic match is now going on here. The pressure is now building up on both sides. विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए रशीद बाबा के लिए उछाला, स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई जुबैर पीछे मौजूद, लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए, मिड ऑफ क्षेत्र पर गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर।
18 for the loss of 2 wicket. 16 to get now. And 9 balls remaining in their innings. गेंदबाज अरशद की गेंद नौफल के लिए उछालना चाहा, बेहतरीन गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस, लोवर डिलीवरी, और इस धीमी गेंद पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची बल्ले के निचले हिस्से पर टकराने के बाद 1 या 2 टिप्पे के बाद विकेट कीपर मंसूर के हाथों में, 1 या 2 टिप्पे के बाद और डॉट गेंद। 8 गेंदे 16 रन चाहिए। 16 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स और गेंदबाज इस वक्त तैयार, नौफल के लिए उछाला इस वक्त मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाती हुई बासित गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा और इस बार थ्रो पहुंचा और अजमल ने डाइविंग लगाते हुए बाई और इस थ्रो को लपक लिया और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 15 टू गेट नाउ फ्रॉम 7 बॉल्स। 7 balls and 15 runs. What a magnificent match is now going on here. Absolutely बेहतरीन मैच कहना पड़ेगा यहां पर और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। रशीद बाबा इस वक्त लंबे स्ट्रोक्स की तलाश में, सामना करने के लिए तैयार अरशद की गेंदों का, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रशीद बाबा के लिए उछालना चाहा, ठीक तरह से कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड नाउ 14 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. 14 to get from last over and the bowler is Kiran is now brought into the attack, who will be starting a match deciding over. And the batsman Rashid Baba is now going to strike. So 14 to get. चौके और छक्कों के सख्त दरकार इस वक्त ब्लू बॉयज उलाई बेट्टो को इस मैच में विजय की ओर बढ़ने के लिए, और यंग फ्रेंड्स उर्वा को जरूरत है डॉट गेंदों की या फिर विकेटों की। और गेंदबाज किरण इस वक्त तैयार। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, इस वक्त लगभग अंधेरा सा छाता हुआ और मैच निर्धारित ओवर इस दूसरे सेमीफाइनल मैच का यहां पर शुरू होता हुआ टीम ओम शक्ति ट्रॉफी 2021 के अंतर्गत। और पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद रशीद बाबा के लिए ड्राइव किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाते हुए 1 रन मिलेगा, वहां पर फील्डर मौजूद और 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। 21 नाउ, 34 द टारगेट, 13 to get, 5 balls now remaining, 13 runs to score and Naufal is now back on strike. Ali Friends Moodshedde ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. I request the captain of Friends Moodshedde please to be reported here. और 13 रन चाहिए 5 गेंदों पर। किरण इस बार नौफल के लिए चौके और छक्कों की सख्त दरकार उलाई बेट्टू को इस मैच में वापस आने के लिए। बाएं हाथ ओवर द विकेट, किरण गेंदबाजी करते हुए गेंद नौफल के लिए उछाला, इस वक्त गेंद जाती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर, जुबैर के हाथों में गेंद और इस बार रन दौड़ नहीं पाए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो आखिरकार नौफल की पारी यहां पर समाप्त और कुल मिलाकर 21 रनों पर यहां पर तीसरा विकेट गिर चुका है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अब समीकरण कुछ हद तक कठिन, 4 गेंदे बाकी, 13 रन चाहिए, 12 फॉर टाई, 13 फॉर विन एंड जस्ट 4 बॉल्स नाउ रिमेनिंग। करना इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, तो अंतिम 4 गेंदे बाकी और रन चाहिए 13। रशीद बाबा करारे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, यहां पर सामना करने के लिए तैयार। किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद लेकर तैयार रशीद बाबा के लिए, इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक बार रन मिलेगा। अब गेंदे बाकी हैं 3, रन चाहिए 12, 12 required in 3 balls. Karna is on strike. 11 for tie, 12 for win, 3 balls remaining. किरण बेहतरीन 3 गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं, अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट करना के लिए
or Isbar again. Isbar quicker, absolutely brilliant. And now the last chance wide. In fact, it's a wide, and now 11 to get from 3 balls. So 11 रन चाहिए 3 गेंदों पर. 10 for tie, 11 for win, and Kiran comes to करना तैयार. तो जहां तक सवाल है इस वक्त करना के लिए उछलना चाहा, गेंद पहुंचे इस वक्त मंसूर के हाथ में. अब अंतिम अवकाश. 10 required, 6 and a boundary required in the last 2 deliveries. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಋತುರೂಪವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. So 2 balls and 10 runs, 6 and a boundary required. Kiran bowls to Rashid Baba. बाएं हाथ ओवर द विकेट. अगेन रशीद बाबा के लिए उछाला इस वक्त लंबा ऊपर 1 रन मिलेगा. 25 now, and now 9 runs to score from last ball. 8 for tie, 9 for win. और मैं कहूंगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के विजय निश्चित है अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो इस अंतिम गेंद में. किरण बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस ओवर में कर चुके हैं. पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद करना के लिए चूके. दैट्स इट. 8 runs thrilling victory for young friends Urva defeating Blue Boys Ulaibettu, and with that victory they are through to the mega final of this competition. And now the grand finale is now coming up between young friends Urva versus friends Moorshedde, and that match starts within just a short while. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवादಗಳು. A warm welcome to you sir. और जहां तक सवाल है 8 runs thrilling victory for young friends Urva in the now grand finale of team Om Shakti Trophy 2021 is now going to begin between young friends Urva versus friends Moorshedde, and we'll be back right after the short break for the last time with my senior Mr. Linus in English when the mega final match of this tournament will going to begin right after the short break. Thank you. धन्यवाद. I request the captains of both teams, Young Friends Urva and Friends Moorshedde, to please report to the stage immediately for toss. Please. The finals of Om Shakti Trophy 2021 to be played between Young Friends Urva and Friends Moorshedde. The two teams are out there right in front of the pavilion in hurdle, and we'll let you know the playing conditions as far as this particular match is concerned. It's already dark out here at UCD Urva Cricket Grounds. Blue Boys had to chase the score of 34 runs. And they failed to chase the first 2 matches. Blue Boys had won the failed to win the toss. They lost the toss in the first 2 matches, but they went on to win both the matches. But in third match, they won the toss and elected to field first, and that's the reason why they were able to chase a modest total of 34 runs for victory.
And Balls are over. Toss and toss on. Here, toss. toss Irwin. Young Prince. Young friends, I won the toss. They have decided to field first. So young friends, after winning the toss, have decided to field first. We are seeing one of the players out there making a box in the air to gesture that they have decided to field first. So it is going to be a 2 overs match. 2 overs match in the sense each over of five balls. Each over of 5 balls. Captains, please note, 2 overs match, each over of 5 balls, 5 fair deliveries. So in all 10 deliveries for both the sides to face. So the umpire is out there. Both umpires out there walking towards the middle. The fielders, the players of Young Friends are out there on the ground. This is the second match for them without any respite. They played the semi-finals and now they have to play the finals against Friends Murshedde. This is a warm and heart on behalf of the organizers. I extend my warm and hearty welcome to Sudhakar Keti, and I request Nishan to present the memento to Sudhakar Keti. The ball is set for the finals. The first ball of the finals to be bowled. Thank you. Thank you, sir. Sudhakar Keti. So already it is dark. Street lights are on here at UC Jura Cricket Grounds. And it's not so easy to sight the ball. One thing for sure. You need night vision glasses. Night vision glasses. Night vision glasses you need. Team entrance cash prize individual prize cash prize Nazir Keti. So Nazir Kunjat Bel has been organizing those cricket tournaments without entry fees. That's really a good thing, and he has been doing it for the past. Individual prize for doing for the past 2 years. He has been doing it for the past 2 years, and this ball, very first ball has been played down to short coverage for a single. Nowadays, it's not so easy to organize matches without entry fees, and Nazir has been doing it for the past 2 years. He is hailing from Kunjat Bale. Running it down to third man region. The very next ball, it's not so easy to sight the ball. Zubair is the bowler. He's bowling at a very good pace. The 2 batsmen. Taufik, the batsman. Drives it, upper slipper safe, down to the deep extra cover region. They go for one. They come back to the second. And you can see the ball might have hit. It bumped into the dog out there, unfortunately. Otherwise, there was only a single in it. 4 for the loss of 1 wicket. 4 and 3. 3 is run out. 3 for the loss of 1 wicket. 4 for the loss of 1 wicket. So 4 for the loss of 1 wicket. That was a run out. So they had ran 2 runs when they were running for 3rd run. They weren't able to make it, and that's the reason why one of the batsmen is back into the pavilion. 4 for the loss of 1 wicket. 2 overs match, each over of 5 balls. Going for a dive. We have to wait and see whether it was off the bat
or leg. It was of the leg by signal by umpire. Even it is not easy for the umpire to side the ball. 5 for the loss of 1 wicket. This is the finals, the finale of Om Shakti Trophy. Going for the reverse sweep, but there's an appeal for leg before. Negative by the umpire. Wrapping him on his legs. There was an appeal for leg before, negative by the umpire. 6 for the loss of 1 wicket. 5 balls have been bowled. This is 5 ball over. So now 1 more over to go of 5 balls, and over to Gopi. Over to Gopi for further description of the match to take it through to the end of this innings. धन्यवाद लीनस। तो 6 रन जोड़ चुका है पहले 5 गेंदों में फ्रेंड्स मूडशेड है, और जहां तक सवाल है बचे हुए 5 गेंदों का, तो 5 गेंदों में और कितने रन बटोरने वो बटोरते हैं देखना पड़ेगा। और गेंदबाज शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 5 गेंदों का 2 ओवर इस मेगा फाइनल मैच में इस वक्त खेला जा रहा है, और पहला ओवर 5 गेंदों का समाप्त हो चुका है, दूसरा ओवर 5 गेंदों का शुरू होता हुआ, और शरण इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर उछाला था और आखिरकार 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 15 रनों तक पहुंचना होगा निर्धारित 2 ओवर में। मूडशेड के बल्लेबाजों को अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है यंग फ्रेंड्स के सशक्त बल्लेबाजी के खिलाफ। एक बार फिर से तैयार, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूके पैरों पर टकराई, मंजूर का थ्रो, लेकिन थ्रो निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का बाई का इशारा अंपायर द्वारा। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह लगभग अंधेरा इस वक्त छाता हुआ, लेकिन दर्शकों से मैदान इस वक्त भर चुका है और यहां पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, एक बार स्कोर ऑफ द विकेट, गेंद को निकाला, एक्स्ट्रा कवर पर अजमल फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, जस्ट 2 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, शरण इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। शरण की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी और रन आउट यहां पर होता हुआ, तो विकेट यहां पर गिर चुका है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अंतिम गेंद बाकी और देखना यह है कि अंतिम गेंद पर बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं। रियाज स्ट्राइक लेते हुए अंतिम गेंद का और शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, नॉन स्ट्राइक रन पर इस वक्त वो मौजूद समीर स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए रियाज। शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, द लास्ट डिलीवरी ऑफ फ्रेंड्स मूडशेड इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। शरण द बॉलर एंड रियाज द बैट्समैन, हियर ही कम्स। राइट आर्म ओवर द विकेट बाउल्स, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची, वहां पर फील्डर मौजूद, अर्शद एकमात्र रन मिलेगा, बाई का इशारा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, लेकिन यहां पर विकेट गिर चुका है। सो द इनिंग्स इज अप फॉर friends Moodshed. They finished with 11 for the loss of 3 wickets in the stipulated 2 overs, and now the target for young friends Urwais 12 in 2 overs to clinch the prestigious Team Om Shakti Trophy 2021, and they have to score 12 runs in 2 overs with 12 runs in 2 overs of 5 balls, that means in 10 balls to clinch the prestigious trophy Om Shakti, Team Om Shakti Trophy 2021, and let's see can they reach the target or not, and their inning starts with just short while. Till then, for the last time in this tournament, we are taking a short break and we'll be back for the last time in this tournament with my senior Mr. Linus in English. Thank you. Dhanyavad. Hello. Thank you, Gopi. 12 runs is the target of 10 deliveries. And it's not so easy out there in the middle.
It's already dark. The street lights are on. Lights in the pavilion are on. And only on the TV screen it looks very bright. It's 11 for the loss of 3 wickets for the score by Friends Burshedde. And young friends have to score 12 runs for victory. We have to wait and see which team are going to be crowned here at UCG Euro Cricket Grounds. The two openers making their way towards the middle. Santosh and Rajesh, the left and right hand combination. Therefore, young friends. Now, the players of Murshid cricketers were in a huddle and now they have dispersed to their fielding positions. Gopi. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಜಾಜ್ ವಾಹನದ ಬೀಗದ ಕೈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Gopi. So 12 runs is the target in 10 possible deliveries, excluding wides and no balls. It's going 2 overs, 1 over each over of 5 deliveries. So it's not so easy out there. Even for the commentators out here, it's not so easy for to sight the ball, even though we are there right in behind, exactly behind the non-strikers end. Straight down the ground. It's getting darker and darker. Darkness has already descended upon UCG. Thus playing the ultimate match, the finale of Om Shakthi Trophy 2021. The last innings. We are at the fag end of the tournament. Right arm over the wicket, delivers. Goes for the drive. Down to the feeder. 3 goes away down to the deep extra cover region. And the crossover for the single. 1 run close. You need night visions out there to sight the ball. It's not so easy. 1 for the loss of no wicket. Bowler Rajesh, the left-hander, is the one on strike. Riaz, the bowler. 12 runs required for victory. Bowler bowling round the wicket, trying to angle the ball into the left-hander. Santosh is at the non-striker's end. Right arm over the wicket, going for the reverse sweep. Almost down to the fielder behind square on the onside, down to the deep square on the offside. Beg your pardon, that was a reverse sweep by the left-hander behind square, down to that deep backward point boundary. 1 run close. 2 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Riaz, the bowler, from the pavilion end to bowl to Santosh. Running away from us, delivers. That was a slow delivery, but that was played just pushing it down to the short cover region and stealing a single under the nose of the fielder who was feeling that short extra cover region. He had to move around to his left, and before he could just get round the ball, the batsman had enough time to cross over. That was the delivery which came at a very slow pace to the batsman, but batsman was able to just push the ball with the soft hands down to that vacant short cover region. 3 for the loss of no wicket. Round the wicket to the left-hander. Trying to sweep that ball, managed to sweep that ball. They're dealing in singles. Sensible batting by both the batsmen, openers. By signal by umpire. Roland Pinto has been in his 37th year as an umpire. What umpire he has been. He started his career at the age of 16 and a half, almost all back in 1984, and since then he has never looked back. He has been a man of 3 Ds: determination, dedication and discipline. 37 years of experience as far as umpire is concerned. I didn't think, and 99% of the players who are playing this tournament have never been born
when he officiated the first match. And over to Gopi for further description on the match. धन्यवाद लीलास. सो द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर और मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है. 7 to get now from 5 deliveries. It's getting more darkness now. अंधेरा इस वक्त छा चुका है मैदान पर और संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दिलीप और इस श्रृंखला का अंतिम ओवर शुरू होता हुआ. लास्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट इज नाउ बिगिन. और इस वक्त दिलीप गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई 7 रन बनाने यंग फ्रेंड्स को इस श्रृंखला का चैंपियन कहलाने के लिए. और यहां पर डॉट गेंदों की दरकार फ्रेंड्स मूड से. देखो पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट ऑफ स्टंप पर आते हुए चूंकि इस वक्त वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. 6 to get now from 5 deliveries. So what a match, what a fantastic match is now going on here. The pressure is now building up on both sides. हालांकि गेंद ठीक तरह से साइट नहीं हो रहा है इस वक्त, लेकिन यहां पर मैच आगे बढ़ता हुआ. सिर्फ 5 गेंदें अब बचे हुए इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में. और गेंदबाज दिलीप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए संतोष के लिए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए और संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद दिलीप की इस वक्त संतोष के लिए ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची, सीधे थ्रो पहुंचा, वहां पर निशाना इस वक्त विकेट चटका चुके हैं. और इस बार जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर. सो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखते हैं यहां पर क्या होता है. सो सिंगल रन एडेड और वहां पर नॉट आउट घोषित किया गया है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. So 5 to get now from 4 balls. Here we go. Next one. इस बार फाइनल की दिशा में फील्डिंग वहां पर कर चुके हैं और इस बीच रन मिल चुका है एक वाइड एंड नाउ इट्स गोइंग टू 9. 3 to get now from 4 balls remaining and 3 runs to score. It's getting more darkness now. अंधेरा लगभग छा चुका है. अब इक्वेशन सीम्स टू बी मच ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ 3 runs to score from 4 balls. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 3 to get from 4 balls. Here we go. So dot balls badly required for friends Moodshedde to get back into this match.
Santosh now faces Dilip the bowler. Here he comes. Next ball. Right arm over the wicket. This time. Single run added. And leg bar declared by umpire. 10. 2 to get now from 3 balls. दो रन चाहिए 3 गेंदों में. 3 गेंदों में 2 रन चाहिए. और इस बीच राजेश स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. और इस बीच गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिलीप राजेश के लिए यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया. गेंद जाती है स्क्वायर की दिशा में. 1 रन मिलेगा. एक ही मात्र रन यहां पर मिलेगा. एंड विद दिस सिंगल द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. Just 1 run to score from 2 deliveries to become the champion of prestigious Team Om Shakti Trophy 2021 for young friends Urva. And now Dilip comes to Santosh. Right arm over the wicket. Again, Isbar, that's it. Young friends Urva are the champions of Team Om Shakti Trophy 2021, defeating Friends Mudshede in the grand finale, and with that victory they clinch the prestigious title of a Team Om Shakti Trophy 2021. So all cricketing actions are over, and now we are taking a short break, and we'll be back right after the short break, not with cricketing action but in the prize distribution ceremony. So spectators, don't go away, stay with us, and we'll be back right after the short break. Dhanyawad. Thank you.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೋನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ತಂಡವು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು ಟೀಮ್ ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಇವರು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರೀಶ್ ಬಜಾಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಕೇಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ. ಈ ಐವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಬೋಂದೆಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಬೋಂದೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಮಾ ಫಿಶ್ಪಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸಿ, ನಜೀರ್ ಭಾಯ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡ್ಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಜು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರವೂರ್, ಕಿರಣ್ ಪೈ, ಕಿರಣ್ ಶಾಯಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಹಾಗೂ ಗೀತರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೈಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ the next step it's going to be a distribution ceremony which will start within just a while and we'll be back right after the little break.
ಹಲೋ ಹಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು अभिनंदनेಗಳನ್ನು सलिस्ता इದ್ದೇವೆ. राइट फ्रॉम द हार्ट. और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सर में जो कि शुरू होने जा रहा है. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಮೂವರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೂವರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, 37 ವರ್ಷಗಳ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಯಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಇವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಗೀತರಾಜ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಭರತ್ ಸ್ನೇಹ ಬ್ರದರ್ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಭರತ್ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರತೀಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಖಿತ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿಭಾಗ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ,
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ಕೋರ್ಪನಿ ಫಯಾಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಬಂದು ಆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ತೌಫೀಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶೆಡ್ಡೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತೌಫೀಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. And now the big prize in individual prizes department, man of the series. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ದಿಲೀಪ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಗೀತರಾಜ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ದಿಲೀಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ. And now the two big prizes are remaining. So first of all, and the two big prizes, the runners of this tournament, the runners of Team Om Shakti Trophy 2021, Friends Murshede, become the runners of this tournament. I request captain and all the players, please come on to the dais and receive the runners up award, runners up trophy with all our chief guests. Runners of Team Om Shakti Trophy 2021 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಅವೇ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ನನ್ನ So the runners up Friends Motorshedde will receiving trophy along with cash. And now I once again announce our main pillar of this tournament, Mr. Abdul Aziz Mysore, Mr. Gaurish Bajal, Mr. Deepak Top End Derlagatte, Sudhakar KT and Nagaraj Shetty of Mani. So thankful to all the pillar
of this tournament. And now straight away we coming to a big prize after the runners up, which trophy goes to Friends Mudabidre. And now the big one in this tournament, the winners, the champions of Team Om Shakti 2021, Young Friends Urva are the champions. I request captain and all the players, please come on to the dais and receive the big trophy from our honorable chief guests. Young Friends Urva, the champion of